If it is, I will see. I will see my diary. Wait, sir. Good morning, everyone. Kindly be seated. We welcome you all to this Golden Loop. Today's MOC, Chartered Accountant Divya and Advocate Shweta will be taking up the session of the inaugural. Gentlemen, a very warm and respectful welcome to our honorable chief guest, respected delegates. I am CA Divya Gupta, and it is my privilege to be joined by Advocate Shweta. It gives us immense pleasure to welcome you all to the National Tax Conference 2026 and centenary year of the Bihar Chamber of Commerce and Industries. Two remarkable milestones that symbolizes legacy, temporary challenges, and explore practical solutions that will strengthen our professional capabilities and serve the larger interest of taxpayers and the nation. Equally significant is the spirit of unity this conference represents, strengthening the bond between the bar and the profession of chartered accountancy. Together, we interpret the law, ensure compliance, and uphold the principles of fairness, justice, and integrity in taxation. We sincerely thank each one of you for taking part of your demanding schedules to grace this conference with your presence. Your participation adds immense value to the deliberations and to the success of this event. With great enthusiasm, let us embark on the enriching journey of learning, interactions, and collaborations. May today's discussion inspire new perspectives, meaningful connections, and lasting professional growth. With this, we formally declare the National Tax Conference 2026 open. Company CAS Beckham sir, National President of AIFTP to the dais. Judge of the Patna High Court to the dais. Ladies and gentlemen, to commence this auspicious occasion, we shall now proceed with the lightning of the ceremonial lamp, invoking the divine blessings of Lord Ganesha, the remover of obstacles for the successful and enlightened conduct of our national conference.
हरि ओम स्वस्ति शांतिरोधयः शांति शांति विश्वे देवाः शांति धर्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि भवतु शांति शांति शांति। Now I request Advocate Dave sir to please come on stage to present bouquet and memento to CAS Venkatramani sir, National President of All India Federation of Tax Practitioners. I request Advocate Ashish Prasadji to please come on stage and present bouquet and memento to Senior Advocate Mr. Vivekanand Mohanty sir, National Vice President of All India Federation of Tax Practitioners. May I request Advocate Manish Kumar Banetia to please come on stage and present bouquet and memento to Senior Advocate Ajay Kumar Rastogi sir, President of Bihar Income Tax Bar Association. I again request Advocate Ashish Prasad sir to come on stage and present bouquet and memento to Advocate Govind Swami Bhaskar sir, Secretary General of AFTP. I request Advocate Manish Kumar Banetia sir to come on the stage again and present bouquet and memento to Advocate P.K. Mishra sir, President of Bihar Commercial Tax Bar Association. I request Advocate Shiv Shankar Mathurji to come on the stage for presentation of bouquet and memento to Advocate Smith Saurav, Zone Chairman of All India Federation of Tax Practitioners. Ladies and gentlemen, esteemed chief guest for today's national conference. His lordship was elevated to the bench of the Patna High Court as an additional judge on 15th from Patna College, Patna University. He later earned his Bachelor of Laws degree from Patna Law College, Patna University, and was enrolled as an advocate in the year 1990. An eminent lineage of legal humanities. His great-grandfather
Late Nand Kishore Prasad Singh was a respected, distinguished member of the Patna High Court Bar and served as the president of the Barristers Association for a considerable period. His father, late Justice N.P. Singh, was a former judge of the Honorable Supreme Court of India and also served with great distinction as the chairman of the Kaveri Water Dispute Tribunal. We are deeply honored by His Lordship's gracious presence as the chief guest at this National Tax Conference, and we warmly welcome His Lordship to the August gathering. Commemorating the Golden Jubilee year of the All India Federation of Tax Practitioners and the centenary year of the Bihar Chamber of Commerce and now I request the Honorable dignitaries to kindly release. I request the past President Srinivas Rao sir also to be present, the man behind the AIFTP calendar. Request our Honorable Chief Guest, Mr. Justice Sudhir Singh, Judge of the Patna High Court, to share his words of wisdom. Mr. P.K. Agarwal, Conference Chairman and President, Bihar Chamber of Commerce and Industries. Mr. S. Venkat Ramani, National President, All India Federation of Tax Practitioners. Mr. Vivekanand Mohanty, National Vice President, All India Federation of Tax Practitioners. Mr. Ajay Kumar Rastogi, President, Bihar Income Tax Bar Association. Mr. Govinda Swami Bhaskar, Secretary General, All India Federation of Tax Practitioners. Mr. P.K. Mishra, President, Bihar Commercial Tax Bar Association. Srimati Subra, Zonal Chairman, All India Federation of Tax Practitioners. Distinguished members of the All India Federation of Tax Practitioners, Bihar Chamber of Commerce and Industries, Bihar Income Tax Bar Association, and Commercial Tax Bar Association, learned members of the bar, chartered accountants, and delegates across the country. Ladies and gentlemen, a very good morning. At the outset itself, I may confess, I had never been a practitioner in the tax side. I don't know whether Mr. Ajay Rastogi did the right thing or the wrong thing by choosing me for this occasion. Because whenever I had a tax issues during my practice tenure, so there were few lawyers, among that one was Mr. Ajay Rastogi, other was, I don't know, Mr. Pati, I couldn't see him here. So, hello Pati, how are you? Then later on Mr. Shailendra Sinha, one of his associates of Mr. Pati was there. So they were the ones who used to really help me out of this tax difficulty. And it has been a great occasion. But I don't know, Mr. Rastogi did a wrong thing or a right thing, but it's my privilege to be addressing such a nice gathering.
It is a privilege to present here today inaugural the National Tax Conference organized by the All India Federation of Tax Practitioners in association with the Bihar Chamber of Commerce and Industries, Bihar Income Tax Bar Association, and Bihar Commercial Tax Bar Association. I thank the organizers for this gracious invitation and bringing together such a distinguished gathering of professionals from across the country. With my little understanding, if I go somewhere wrong, then please correct me. Taxation forms the backbone of the constitutional democracy. It enables the state to fulfill the obligations towards social welfare, development, and governance. At the same time, tax laws must ensure a careful balance between revenue collection and taxpayers' right, and between the statutory compliance and fairness. The balance lies at the heart of the rule of law. In this regard, tax professionals play a crucial role. You act as an important link between the taxpayers and the administration, helping in ensuring voluntary compliance, reducing unnecessary litigation, and strengthening the faith in the legal system. Your role is not merely technical but also ethical and institutional. The field of taxation is constantly evolving with frequent legislation changes, growing digitization, and expanding jurisprudence. Platforms such as this conference are therefore essential for informed discussion, exchange of ideas, and continuous professional development. The All India Federation of Tax Practitioners has for decades made the valuable contribution to tax education and professional excellence. I commend the organization for their efforts in continuing the tradition. I am confident that the deliberations over the next 2 days will be meaningful and beneficial to all practitioners. With these words, I have great pleasure in formally inaugurating the National Tax Conference, and I wish the conference every success. Thank you, Jay. President of All India Federation of Tax Practitioners, I thought that I will deliver a very small message to this August gathering. Your Lordships, India is moving towards Viksit Bharat 2047. Your Lordships, we are just about 20, 22, 23 years away to move towards Viksit Bharat. And the Prime Minister and his entire team have been talking about ease of doing business. Your Lordships, and all of them who are practicing here, either as advocates, tax practitioners, chartered accountants, company secretaries, cost accountants will know. At the threshold, my lord, we have 10 to 12 laws which we have to comply. At the threshold, you open a small trading concern, your lordships, we will have to comply with 10 to 12 laws. And without a minimum of 2 consultants, your lordships, he will not be able to commence business. This is a reality. This is the reality. And this is the truth. Your lordships, if I have to run a steel mill, I am on the board of one of these companies. Your lordships, when the managing director signs the compliance report, we have 79 laws, your lordships. 79 laws for a steel mill. And this is ease of doing business. And this is Viksit Bharat. And this is Atmanirbhar Bharat. Where are we moving? If we will have to have ease of doing business, then we will have to move fast and we will have to settle disputes fast. Your lordships,
the minimum time taken for settling disputes relating to contracts is 1 decade, and it still doesn't settle. It moves from stage A to stage B to stage C, and ultimately it reaches the courts, my lords. Ultimately it reaches the courts. We are unable to get foreign direct investment, your lordship, simply because our arbitration process takes away that much of time before it reaches the courts. Courts do their job pretty fast, your lordship. But to reach the court, those steps of the court, it takes us this much of time. Which foreign entity would want to invest in a company like India, where we have disputes regarding contracts? Unless the law relating to contracts is settled, unless the law relating to contracts is amended, I don't think we are moving towards Viksit Bharat. And we have very little time. We need to move very fast. Your lordship's point number 2. No doubt GST came in. GST 1.0, GST 2.0. Now we have Income Tax Bill 2025. And I don't know, we have Companies Act 2013, we have NAFRA, we have all of it which is coming in, your lordships. But my cost of compliance today is 2.5 to 3.5%, your lordships. 2.5 to 3.5% is the cost of compliance. That means if a person is carrying on business and his turnover happens to be 10 crores, without 20 lakhs towards cost of compliance, he will not be able to comply. He will have a minimum of 15 laws to comply, and they take 1 lakh per law as the fee. It will cost him 15 to 20 lakhs. And therefore 2 to 2.5%. And in the case of larger companies, 3.5 to 5% is my cost of compliance. We can't do business with this kind of cost of compliance, my lord. The government promised us that with the coming of goods and service tax law, where 17 laws were merged into one law, we will reduce the cost of compliance, but it's actually been the reverse. Now, why has it become the reverse from 2.5 to 3.5%? Why has it gone up? My lord, goods and service tax collections have now settled at 1.75 lakhs crore per month average. It's there, it's settled there. My lord, with GST 2.0, where we had these amendments coming in October 2025, we believe that there will be much more done to the law. Other than tinkering with the rate of taxes, my lord, even simple procedural issues have not been amended in the goods and service taxes. It has not been amended. Wherever we ask for some kind of a relief, a new form is brought in, a new deadline is stated, a new timeline is stated. Where is compliance going? If this is the compliance that government wants, I'm afraid cost of doing business is not going to come down at all, my lords. 2. Exactly 1 week back, I think my East Zone, my Vice President, National Vice President and Chairman East Zone Representative, Lord, the Honorable Retired Chief Justice of Jharkhand High Court, Bontiji, am I correct? Sanjay Kumar Mishra ji was there on stage, who is now the President of the Goods and Service Tax Appellate Tribunal, sitting in Delhi. I estimated that when the Goods and Service Tax Appellate Tribunal kicks in, and whenever we start filing these appeals, which is any time now, my belief was that we will have 75,000 to 1 lakh cases which will go to the tribunal. This is the estimate across India. My lordship, I should correct it. I was corrected by the President of the Goods and Service Tax Appellate Tribunal. The retired justice told me, your figures are fundamentally wrong. I was shocked. He told me, there is an estimated amount of 6 lakh cases that is likely to be filed. Bontiji, am I right? If 30 tribunals across India, my lordships, are going to take the load of 6 lakh appeals across India, when are we settling disputes? My prayers to the Almighty is that the President is wrong and my estimates come right, so that it will be at least 100,000 cases where 30 tribunals will handle. Where are we taking Viksit Bharat? Where are we taking Viksit Bharat? I don't think we are going anywhere. My lord,
Exactly from this stage 1 week back at Balangir, I had made a point. 95% of the revenue comes out of compliance. 2 to 3% of the revenue comes out of disputes. 2 to 3% of the revenue comes out of evasion. If you look at the statistics that came up before the parliament 1 week back, we have only 35,000 cases of evasion, your lordship. For 35,000 cases of evasion where we pay 1.75 lakh crores a month, do we need this kind of a setup? Now, let me roll reverse, my lord. 95% of the law in India is framed for defaulters. 95% of the law, my lord, is framed for defaulters. There is not a single provision in any statute book. It is my challenge. I will challenge from here. Where a single statute book does not carry a provision for accountability of the government machinery. My lord, I understand. My lord, I understand that the officers of the government are immune from civil suit, but that does not mean that they get away scot-free. That does not mean, my lord, that they do a high-pitch order. That does not mean, my lord, that they spoil my brand image by putting in my names that there is evasion, avoidance in all kinds of newspapers, dailies and social media and get away with it without taking any kind of accountability, my lord. 3 years later, when I come to the courts and I succeed, what happens to my brand image? Iconic companies in India have lost their brand images because of the irresponsible statements made by the government and the officers. Can we let this pass in a Viksit Bharat? Can we let this go? Can we let this move when we want foreign direct investments into India? Lord, this is a question that we will have to think for ourselves if we have to move towards Viksit Bharat. And I repeat, 95% of the law cannot be framed for honest taxpayers. 95% of the law must be framed for honest taxpayers, and 95% of the law cannot be for evaders. Lord, I'll give only one example, madam. In the entire provisions of goods and service tax legislation, I am repeating it in the last 1 week for a second time, but I want to push this thought through. My lord, there is one section which gives me credit. There are 11 sections which takes away this credit. It takes away this credit. There are 6 rules, my lord, which are directly contradictory to the provision which allows me credit. Which court of law can I go when the legislature passes this kind of a law? I can't go to any court. Court's hands are tied, my lord, because the legislature is empowered to pass a law. So when the legislature passes a law and my hands are tied to take away the credit, don't give me this credit. You want 28% tax, take it. You want 40%, take it. You want 50%, you take it, but leave me in peace. Don't take away this. Don't say there is a form you will have to file. Don't say that you will have to file it before 10th, 11th, 12th, 13th. Come up with one-day extensions for all of this. I don't think, my lord, this is Viksit Bharat. We don't need this. Last point, my lord, before I close. To all my professional friends, I feel sad. I feel sad to be on this stage. After 37 years of practice, your lordships, I can tell you with some amount of authority that no taxpayer here or no practitioner here will have a good word for the government department. They will not have a good word. You want your tax, you take it. Treat us well. Treat us well. Don't treat us the way you are treating my lord, but some accountability has also to be got into the statute book that taxpayers are not treated like criminals, but taxpayers are a part and parcel of the government chain in the process of collection of taxes. My lord, if you look at revenue, we have $4 trillion, my lord. If you look at revenues that we are collecting, we collect something like 25 lakh crores of income tax. We are a welfare state, my lord. I have no complaints about that. We have no problem about that. You do whatever welfare you will want to do. But what is it that you have done for the honest taxpayer? What is it that you have done? My lord, I always keep asking this question to the government, and I will continue to ask this question. With the kind of real-time data that is available with the government, my lord, real-time.
Every e-way bill that they raise today, sitting here, data is available with the government in a few seconds from now. It is available. With that kind of data, if the government says that it is not able to detect and pursue evasion, something is wrong with the government, my lord. Something is wrong with the government. It is better they privatize that. We will handle it for them. And we will handle it for them much better than what this government can do. Much better than what this government can do. Last point, my lord. If as professionals, 75 years after we have obtained independence, we are not able to frame a law for ourselves, something is wrong with the professional fraternity. Something is wrong with the professional fraternity. I think we are running to the Ministry of Finance, we are running to the Prime Minister, Home Minister, whoever we want to try and say, please do this amendment, please consider this amendment, please. I don't think we should be pleading with the government when we pay 50 lakh crores of taxes on an annual basis. I think we should be giving them the legislative law book and tell them this is the law that we want. And unless that day comes in, I think this government will not change its way it functions. Thank you so much, my lord. I have taken away too much of what I said. My profound apologies if I bordered on contempt. I never meant that. It is just years of practice which makes me speak. So, my lord, I exceeded my timeline by 2 minutes. I'm so sorry about that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Constitutional identity. The Bihar Chamber of Commerce and Industries has, over 100 years, stood as a bridge behind trade, industry, and policy, guiding businesses through colonial times when it started, post-independence restructuring, liberalization, and now the digital economy and AI. Similarly, AIFTP over the last 50 years has nurtured generations of tax professionals, shaping ethical practice, academic excellence, and constructive engagement with tax administration. Enriching the present is perhaps our most immediate and challenging responsibility. We live in an era of rapid legislative changes, evolving jurisprudence, and unprecedented technological intervention in taxation, GST, faceless regimes, data-driven assessments, artificial intelligence-assisted scrutiny and real-time compliance systems have transformed the professional landscape. While these reforms aim at efficiency and transparency, they also test the resilience of taxpayers and professionals alike. The most profound responsibility lies in shaping the future. The future of taxation will not be defined only by statutes or technology. It will be defined by people like us, the kind of professionals we mentor, the ethics we inculcate, and the institutional cultures we build. Young tax professionals today are entering a world vastly different from the one we inherited. They need guidance not just in law, but in values. They need mentorship. They must learn that success in this profession is measured not merely by briefs and billings, but by credibility, scholarship, and service. We are gathered here at a place of learning. Bihar, which was already and earlier known as a place of learning, and Patna, with its rich civilizational heritage and intellectual legacy, is a fitting venue for this dialogue. From ancient centers of learning to modern centers of commerce, Bihar has always contributed to the shaping of India's intellectual and economic thought. Hosting this national conference here and after a decade, at a time of such significant milestones, symbolizes continuity, renewal, and hope. In conclusion, let us remember that honoring the past gives us roots, enriching the present gives us strength, and shaping the future gives us a purpose.
As we celebrate 100 years of the Bihar Chamber of Commerce and Industries and 50 years of the All India Federation of Tax Practitioners, let us renew our collective resolve to uphold the rule of law, to serve the taxpayer with integrity, and to contribute meaningfully to the economic and constitutional fabric of this nation. I again welcome you to this grand conference and wish you great success and meaningful deliberations. And I extend my warmest congratulations to both these institutions on these historic milestones. Thank you. Namaskar. Good morning to all my friends on the dais. And after a fiery speech by my national president, I have only few to add. As you all know, my national president is from Bangalore. If all these problems could be sorted out, it can be sorted out in Bangalore itself. I am proud to be associated with this National Tax Conference when one of the batters have completed a century and my association is completing 50. And my national president was saying that there are too many litigations which are pending. Of course, it's a 8 years backlog which has to be cleared. Same thing happened with the Income Tax Appellate Tribunal also. Now it is less than 20,000 cases. So as the tribunal starts functioning, you will see many of the matters will be grouped together and will be disposed of at a speed, very high speed. And maybe after 4 or 5 years, you will see less of litigation and you will see the Viksit Bharat. And as an advocate, disputes are not only bread and butter, in fact the blood also for the advocates. And on behalf of AAFTP, humble request, those of you who have not been a member of AAFTP, I request you to become a member of AAFTP. There is a stall outside this hall. The application forms are available. The CEO, Mr. Ravi, is there. You can become a member. 1. 2. There is a stall available outside where all the publications of AAFTP is on display. Today we have a concessional rates. You can avail this opportunity and buy the books. Thank you very much. Our chief guest has leaving the conference. So, the Honorable our President S. Venkatramani sir, all know S. Venkatramani, but I hardly say Satyamurthy Venkatramani sir. AFTP National President Senior Advocate Vivekanand Mohanty sir, Secretary General our humorous G. Bhaskar, but all know G. Bhaskar, but I called him Govinda Swami Bhaskar. Bihar Chamber of Commerce President P. K. Agarwal sir, Bihar Income Tax Bar Association President Senior Advocate Ajay Kumar Rastogi sir, Bihar Commercial Tax Bar Association President Advocate P. K. Mishra sir, our past President Pankaj Hiya sir, our past President M.S. Rao sir, all know M.S. Rao sir, but I call him Maladi Srinivas Rao sir. Dignitaries of the dais and friends, colleagues, it is both an honor and an emotional moment to stand before you all. As we gather to inaugurate the National Tax Conference, a conference that is historic, not only in its content but also in its spirit. We meet here at a truly extraordinary intersection of time,
the Golden Jubilee year of AIFTP, marking 5 decades of dedicated services to the tax fraternity, and the centenary year of the Bihar Chamber of Commerce and Industry, celebrating 100 years of fostering enterprise, industry and growth. This confluence of two great milestones is not just symbolic, it is a reminder of how institutions, when nurtured with vision and collective effort, become pillar of trust, learning and progress. As the chairman of the East Zone, I feel immense pride in witnessing your overwhelming participation from different corners of the nation. Your presence reaffirms the strength of our fraternity and the shared commitment to continuously empower ourselves with knowledge, clarity and purpose. Dear friends and colleagues, today's conference brings together some of the most eminent minds, experts from the judiciary, senior professionals, academicians, industry leaders, each ready to enlighten us on the evolving landscape of taxation. And in this era of rapid and regulatory changes, judicial interpretation and technological transformation, these are not just academic, it is essential. They help us today ahead, stay informed and above all stay connected. The East Zone has, dear friends, the East Zone has always taken pride in its tradition of active participation. And this year, being the Golden Jubilee year, we take that responsibility most seriously and sincerely. I assure here before our beloved National President, CA S. Venkatarani sir, that our team is fully committed to making this year memorable, sir. With meaningful programs, deeper collaborations, and initiatives that enrich both present and future generation, which are the truly reflection of our theme, honoring the past, enriching the present, and shaping the future. Friends, as we embark on today's celebration, let us carry with this the spirit of learning, fellowship, and service of the nation. May this conference inspire new ideas, ignite meaningful conversations, and strengthen the bonds that make our federation a true family. With these words, I once again welcome all of you to this momentous occasion. Thank you, sir. Jai Hind, Jai AIFTP. Thank you. Your stay in Bihar, especially those who have come from out station and maybe visiting Bihar for the first time. I guess so. You must have enjoyed overnight stay so long. Dignitaries on the dais, learned colleagues and delegates. It is my proud privilege as the President of Bihar Income Tax Bar Association and a patron member of this event to welcome you all to the historic city of Patna on this pleasant winter morning. We are gathered here at the Chamber of Commerce and Industries to witness this prestigious 2 days national conference. First of all, and at the outset, we extend all of us extend our warm regards to distinguished chief guest, Honorable Justice Sudhir Singh, Judge Patna High Court, who has been kind enough to take time out from his tiresome and tight schedule to inaugurate this conference, but unfortunately he had to leave for the court. I extend my gratitude to respected National President of AIFTP, CA S. Venkatarani ji, National Vice President AIFTP, Senior Advocate Mr. Mohanty ji, Conference Chairman and President Bihar Chamber of Commerce and Industry, and our most respected guardian CA P.K. Agarwal, President Bihar Commercial Taxes Bar Association, Advocate P.K. Mishra ji, and all esteemed office bearers of AIFTP,
and Bihar Chamber of Commerce and Industries, Bihar Income Tax Bar Association and Commercial Taxes Bar Association for organizing this event at Patna. I also welcome our distinguished speakers who have traveled from across the country to share their expertise with us. I also welcome all the delegates without whom this mega event would not have been meaningful. The theme of our conference, honoring the past, enriching the present, shaping the future, is deeply significant. We stand at a historic juncture, celebrating the golden jubilee of All India Federation of Tax Practitioners. Since its inception in 1976, the Federation has spent 50 years championing the motto of ethics, education and excellence. And we are proud to continue this legacy here in Patna. This conference spans 2 days with various informative sessions to be delivered by stalwarts who are renowned luminaries in their field. We have curated a robust academic feast comprising 8 technical sessions designed to navigate the complexity of our evolving tax laws, both direct and indirect taxes, besides use of artificial intelligence in our day-to-day working. I think this is the only conference where we have put this topic of artificial intelligence. We have an expert who has come to address us on this issue. The conference concludes tomorrow with a brain trust session featuring distinguished panel including Senior Advocate Mr. D.V. Pati, Advocate D.V. Gupta, C.A. Rajesh Mehta, C.A. Lalit Kumar Kejriwal, again a very respected chartered accountant of the state of Bihar, and our senior colleague, and Advocate Vivek Agarwal, moderated by Advocate Sanjeev Kumar Anwar and C.A. Rajesh Khetan. Beyond the academic session, we wish you to experience the warmth of Bihar. We already have in our lunch menu the most favorite dish of Bihar, that is litti chokha. Beside one sweet dish, which is like a laddu. I hope those who have come from outside Bihar for the first time would relish this warmth of Bihar. We have arranged darshan of Patna Sahib Gurdwara, and I encourage those interested to explore the tours of Bodh Gaya, Rajgir and Jain circuit. I am confident that these 2 days will be a knowledgeable experience for all. I am looking forward to such event being organized more frequently at Patna. Thank you and namaskar. Now I request our President of the Bihar Commercial Taxes Bar Association, Advocate P.K. Misra, sir. Thank you. आदरणीय इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय अतिथि पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सुधीर सिंह जी महोदय, मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष वेंकट रमणी सर, जनरल सेक्रेटरी जी भास्कर साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन के विवेकानंद मोहंती सर, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पी.के. अग्रवाल सर, बिहार इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अजय रस्तोगी सर, IFT के पूर्व जोन के अध्यक्ष स्मिथ सौरभ जी और IFT के विभिन्न पदाधिकारीगण, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सम्मानित प्रतिनिधिगण, सीनियर टैक्स स्पेशलिस्ट, मेरे प्रिय साथी एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट,
टैक्स कंसल्टेंट और देश के कोने कोने से पधारे सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण को आभार, अभिनंदन और यहाँ आने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। इस राष्ट्रीय कर सम्मेलन की गर्मय मंच पर हमारे एसोसिएशन बिहार कमर्शियल टैक्स बार की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए गर्व और महान अनुभूति का विषय है। हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज हम कर व्यवस्था, व्यापार और अर्थव्यवस्था से जुड़े इतने प्रतिष्ठित अनुभवी व्यक्तियों के साथ इस मंच को साझा कर रहे हैं। ऐसे सम्मेलन न केवल ज्ञान वर्धन का माध्यम होते हैं, बल्कि यह राष्ट्र की कर नीति एवं व्यापारिक वातावरण को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथियों, कर प्रणाली किसी भी देश की आर्थिक नींव होती है। एक प्रभावी, पारदर्शी एवं न्याय संगत कर व्यवस्था तभी संभव है जब कर प्रशासन, टैक्स प्रोफेशनल और व्यापारिक समुदाय आपस में समन्वय संवाद के साथ कार्य करें। इसी संदर्भ में AIFTT और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ CA एसोसिएशन, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट एसोसिएशन के साथ साथ टैक्स बार एसोसिएशन जैसी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर देश की एक प्रतिष्ठित एवं अग्रणी संस्था है, जिनके सदस्य टैक्स प्रोफेशनल को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं। AIFTT न केवल कर कानूनों पर बौद्धिक विचार विमर्श को प्रोत्साहित करती है, बल्कि कर सुधारों, व्यवहारिक कठिनाइयों और न्याय संगत कर प्रशासन के लिए निरंतर अपनी सशक्त आवाज भी उठाती रही है। AIFTT के उद्देश्य 3 उद्देश्य पर आधारित है। AIFTT 3E जिसको कहते हैं वो है एजुकेशन, एथिक्स एंड एक्सीलेंस। तो इन्हीं के साथ हम कहेंगे कि AIFTT के जो कार्य हैं उसकी सराहना जो है हम लोग को सदैव स्मरणीय रहेगा। इसी प्रकार बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापार और उद्योग जगत की वास्तविक समस्याओं, अपेक्षाओं और चुनौतियों को सामने लाने का सशक्त माध्यम है। व्यापारिक समुदाय और कर प्रणाली के बीच सेतु के रूप में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। यहाँ यह कहना होगा कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरकार के साथ मिल करके और खासकर इसमें PK अग्रवाल साहब का बहुत योगदान है कि ये हमेशा से सरकार के साथ मिल करके सरकार के पास व्यवसायियों की बातों को रखते हैं और हर एक मंच को सरकार के साथ साझा करते हैं, ताकि कर सुधार और कर प्रणाली को सुचारू रूप से कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, इसके बारे में इनका योगदान जो है बहुत सराहनीय है और हम लोग इनके शुक्रगुजार हैं। AIFTT और चैम्बर ऑफ कॉमर्स टैक्स प्रोफेशनल एक साथ मिलकर संवाद करते हैं, तब एक संतुलित, व्यवहारिक और विकासोन्मुख कर व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सम्मेलन इसी समन्वय का एक सशक्त उदाहरण है। हमारी एसोसिएशन का निरंतर यह प्रयास रहा है कि टैक्स प्रोफेशनल और व्यावसायिक संगठनों जो टैक्स का निर्माण करने वाले लोग हैं उनके भी संवाद को प्रोत्साहित करते रहें और इसी के लिए हम लोग लगातार प्रयास में रहते हैं और बीच में वर्कशॉप और कराते हैं। लेकिन ये सौभाग्य हम लोग को 21 वर्षों के बाद मिला ऑल इंडिया फेडरेशन के सौजन्य से कि हम लोग को 2005 के बाद ये बहुत बड़ा कार्यक्रम नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस कराने की सहमति मिल गई और हम लोग ने आज इसको अंजाम दिया और आपके सामने ये साकार किया। इसके लिए AIFTT को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि समय की कमी है तो इसलिए हम आगे बात को नहीं बढ़ाते हुए अब नहीं कहेंगे कि ये बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम में ऑल इंडिया फेडरेशन जो है
वो अपनी 50वीं सालगिरह मना रही है और उसी के कंटिन्यूस में ऑल इंडिया में टैक्स कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं और उसी क्रम में यहाँ का ये टैक्स कॉन्फ्रेंस हुआ है। साथ ही बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही है और उसी के संदर्भ में ये ऑल इंडिया फेडरेशन और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनकम टैक्स बार एसोसिएशन और बिहार कमर्शियल टैक्स एसोसिएशन के संयुक्त प्रयास से ये संभव हो पाया है। इसलिए सभी को धन्यवाद के लिए हम अपना देते हुए अपनी बात को विराम करते हैं और आप सभी को यहाँ बाहर से आने के लिए अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Ashish Shankar ji, our former Vice President of Bihar Chamber of Commerce, to announce something on behalf of the Bihar Chamber of Commerce and Industries, and just to give honor to our guests and dignitaries and speakers on behalf of the Bihar Chamber of Commerce. नमस्कार। पटना में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज बहुत ही गर्व की बात है कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का 100वां साल है और AIFTP की भी 50वां साल है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से इस मौके पे मैं अपने प्रेसिडेंट श्री PK अग्रवाल से आग्रह करता हूँ कि कुछ लोगों को बुके, अनवस्त्र और मोमेंटो से उनको सम्मानित करें। सबसे पहले अब मैं एडवोकेट श्री गुरुदेव स्वामी जो सेक्रेटरी जनरल हैं AIFTP के, उनको भी पुष्पगुच्छ, शॉल और मोमेंटो से सम्मानित करेंगे। अब मैं श्री सिद्धेश्वर एलमनी जो नेशनल ट्रेजरर हैं AIFTP के, मैं उनको चाहूँगा कि उनको भी पुष्पगुच्छ ठंड का मौसम में ताली तो होनी चाहिए। अब मैं एडवोकेट अब मैं CA श्री राजेश मेहता जो इंदौर अब मैं CA मिस अंचल कपूर जो Thank you, President. Vote of thanks of inaugural session
of today's National Tax Conference. First and foremost, we express our deep sense of gratitude to our Chief Guest, Sri Sudhir Singh, Honorable Justice of Patna High Court, and esteemed dignitaries for graciously sparing their valuable time and enriching the conference with their presence. We are highly thankful all our learned speakers, Sri Girish Ahujaji, who is to come, and his speech is on tomorrow first session, and Srimati Ansel Kapoorji and other subject experts, speakers who will share their view and their knowledge and practical experience, making the technical sessions insightful, relevant, and meaningful for all the participants. We also propose our thanks to Sri S. Venkatamani, the National President, All India Federation of Tax Practitioners, due to and for their continued cooperation and valuable partnership in organizing the National Tax Conference. The collaboration between the AIFTP and Bihar Chamber has truly strengthened the academic and professional concept of this event. Our heartfelt thanks to Ajay Kumar Stogi, President Bihar Income Tax Bar Association, and Sri P.K. Mishra, President Bihar Commercial Tax Bar Association, for their cooperation in organizing this conference. We also extend our heartfelt appreciation to all the delegates and participants who traveled from different parts of the country and actively participated in the conference. Your presence, interaction and engagement have made this event a grand success. I take this opportunity to acknowledge the untiring efforts of the organizing committee, office bearers, sponsors, and all those who work tirelessly behind the scenes to ensure the smooth conduct of this conference. But last but not the least, we thank the media persons for giving wide coverage to the event and helping disseminate its objective to a larger audience. With these words, I once again thank everyone who contributed to the success of the National Tax Conference, and with all the delegates that present state and state journey back home. Thank you all. But this is our written speech given to me by Bihar Chamber of Commerce office, so I was bound to speak on this basis. But now I speak my own. Just this Bihar Chamber of Commerce is established in the year 1926, and almost all the dignitaries of the India, Prime Minister or President, have visited this place as this capacity or that capacity. And this year, 2026, it is our centenary year. And how this meeting was come in the mind of me to organize it. Actually, credit goes to the Vivek Agarwalji and Smith Sorji. Once what happened, in 1925, in the month of January, there was a conference in Taj Hotel in Patna. I am also member of AIFTP since long, but never I have participated in any conference. Once there was planning to go to Chitkut, but due to some problem of transportation, I could not go there. So at that time, I have seen the journal conference there. So I asked our Smith Sorji, why not we should just give a conference national level in the Bihar Chamber of Commerce. And at that time, Vivek Agarwalji was there. He had just given his consent, yes, we can do it. So since last 1 year, we are trying to just hold this
this conference here. But I also beg to apology from you if there is any lacuna in our preparation or giving you the comfort as you desire, so kindly excuse us. With this word, I want us must told by our very senior advocate here, we have tried to give the Bihari Bhojan on this occasion and other things like Litti Chokha, we must enjoy. Thank you, excuse us, because we have to just give it on time at 11:15, so I have taken 2 minutes extra. Thank you. भारत माता की वंदे वंदे धन्यवाद. I think you all joined for the tea time, only 10-15 minutes at industrial and infrastructure organizations. Mr. Pati has also, we are honored to have him guide this session as chairman. Please join me in welcoming Mr. D. Pati, Senior Advocate. 2,200 participants at a single platform. She is an esteemed faculty at the National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, and has also served as a trainer for CGST and Punjab SGST officers. She is an empaneled special auditor with GST and approved faculty of the Institute of Chartered Accountants of India and a contributing author to ICAI's GST publications as well as leading professional journals known for her practical, insightful and illustrative approach. CA Achal Kapoor brings clarity to complex GST issues and bridges the gap between law, practice and compliances. We are honored to have her with us today
and we warmly welcome CA Anchal Kapoor, who will be sharing her valuable insights on goods and services tax matters at this national conference. May I request Advocate Navneet Mukul to kindly present the mementos to our respected session chairman and esteemed speaker in the recognition of specializing in the field of indirect taxation. She will deliver a note and a speech that will say, I think it is a workshop on offences and prosecutions under the GST Act. She will explore the subject, she will take you to the various slides, the manner in which she wishes to take you, the judgments on the subject matter. So you feel that when you go back home after this session, you take with you something in the GST, of course. Good luck to you, Achal. You may continue with your speech. सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आशा है कि हम समझाए अपन सबके पसंद आता है। So with this energy and enthusiasm, I am so privileged to stand here on this dais today and deliberating in the presence of none other than Senior Advocate Sir D.V. Bhati sir. Thank you so much, sir, and we'll seek forward your guidance on the topic I will be deliberating. I am honored to have on stage our Commissioner Sir, Standing Counsel, Allahabad High Court, Advocate Sanjeev Anwar sir. Thank you so much. The dignitaries on the dais and off the dais, I can see the past presidents, Rao sir sitting there, Anand Mathur sir, so many dignitaries there, and to deliberate in their presence. And how can I forget Samit Saurabh sir for managing everything. Thank you so much, sir. All India Federation of Tax Practitioners, EZ, Bihar Income Tax Bar Association and Bihar Commercial Taxes Bar Association for giving me this opportunity to interact with the lovely audience today. So are you all ready? क्या बात है, अच्छा खाना खिलाया है समझ सर, सबका जोश पूरा है और ऊपर से टॉपिक भी वैसा है. I have the allotted time 1 hour. As you wish. As you wish. Oh, all right. So. होप मेरी आवाज वैसे भी पहुंच रही है और माइक से भी पहुंच रही है, बंद भी हो जाएगा तो भी पहुंच जाएगा, राइट? चलिए, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. Issues and how we have to deal with the same. Let me talk about the agenda before. Yes. Can we have now, friends, offences and penalties. हम इसमें करने क्या जा रहे हैं? अच्छा, चैप्टर कौन सा है? 19, right? You all must have read it in the flyer also, and it's a big chapter. Lots of litigations, lots of case laws. और आज कल तो किसने 250 पेजेस का नोटिस देखा है? Sir, it's not working, I guess. They are checking कि बिना माइक की आवाज पहुंच जाएगी. So now I want to say कि offences and penalties में 122 is one of the
penalty notice आ रहे हैं, that is covering 100% of the tax as penalty. I will share two case studies with you, and based upon that, I will be taking the session forward. Now, coming towards this chapter, searches तो आपके यहाँ भी होती होगी. अब searches में ऑफिसर को कुछ और with due respect और आए ना आए क्या आता है कि पेनल्टी कितनी लगनी चाहिए ये तो पता है, नहीं भी पता है तो 100% तो लगनी चाहिए. This is what happened in one of our search cases. पार्टी के यहाँ सर्च हुई and ऑफिसर को, if I actually use the words, receipts मिली कच्चे की पर्ची, means the separation of sales. सेल्स जो थी वो बिल कटा था कम अमाउंट का, जबकि एक्चुअली अमाउंट जो, क्योंकि वो था क्या, प्लाईवुड थी. अब प्लाईवुड में तो यू नो आप तो सफारी रिट्रीट का जजमेंट भी आ चुका है. सो चाहे घर बनाओ चाहे ऑफिस बनाओ, क्रेडिट नहीं मिलता है तो एवरीबॉडी थिंक्स अच्छा 18% टैक्स लगेगा, अंडर बिलिंग पे ले लेते हैं, राइट. दिस इज व्हाट द प्रैक्टिकल सिनेरियो इज एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो जब वो स्लिप्स मिली, ऑफिसर काउंटेड द लायबिलिटी, ही फिक्स्ड द लायबिलिटी. He said to the party, your liability comes out to be say 20 lakh rupees. आपको 10 लाख का टैक्स पे करना है, 10 लाख की पेनल्टी पे करनी है और कुछ इंटरेस्ट का जो भी आपका अमाउंट बनेगा. The party when asked me, I said, is your things being settled? He said, हाँ मेरे ऑफिसर से हो गई बात, so ये मेरे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर मेरी लायबिलिटी वर्कआउट होगी. Then I went to the officer. I said, when you have finalized the tax amount, so sir, आपने 10 लाख टैक्स फाइनल कर लिया जो स्लिप्स के बेसिस पे है. He said yes. So I said, sir, penalty is going to be 15%, क्योंकि अभी तक आपने मुझे शो कॉज नोटिस इशू नहीं किया. जब तक आप शो कॉज नोटिस इशू नहीं करोगे तो बिफोर दैट अगर मैं सेक्शन 74 में भी जाऊं, फर्स्ट it is a presumption. In Balagi, I delivered the session on this topic itself. एक तो मेंस रिया एज्यूम कर लिया गया है. Why? क्योंकि 74 मेंस रिया को रेफर करता है. गिल्टी माइंड मतलब जो चीज छुपाई गई है ना या रखी गई है वो जरूर विद द इंटेंट टू इवेड टैक्स ही, चाहे मेरे से एक जीरो एक्स्ट्रा ही क्यों ना लग गया हो. We have seen 74 notices coming up, and you know where the problem lies? We do not object. हमने भी उसको कैजुअल कर दिया. अच्छा ठीक है, 74 में नोटिस आया, 73 का टाइम पीरियड निकल गया, 74 में नोटिस आ गया. We object कि भाई जो पर्सन एलिगेशन लगा रहा है कि आपको 74 में नोटिस आना चाहिए, क्या उसने मुझे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड दिया? The burden of proof is on him, other than ITC 155 छोड़ दूं तो it is his prerogative. I have done the self assessment. मैंने तो 3B भर दी. Now the person who is putting the allegation, जो कह रहा है कि आपने ये गलत किया है, he is supposed to provide me the relied upon documents, RUDs. वो देते नहीं है. आजकल जितने 74 के नोटिस आते हैं, इंटेंट टू इवेड मान लिया जाता है. सर्च हुई है, ऑफिसर बोलते हैं सर्च हुई है, 73 का नोटिस कैसे दूं? We have recently got the judgment where the High Court says it is not a presumption कि सर्च हुई है तो आपका इंटेंट टू इवेड ही था if something has been found out. You must bring cogent material evidence on record. It is not a presumption. But इस केस में भी ऑफिसर ने बोला 74 में ही नोटिस दूंगा. I said okay. So sir, 74 में अगर आप नोटिस देंगे तो पेनल्टी कितने परसेंट? 15%. This is what I said. He said नहीं, पेनल्टी तो मैं कितनी लूंगा? 100%. I asked him कैसे? कहता 122. 122 में पेनल्टी कितनी है? 100% of the tax. I said sir, आप 122 में पेनल्टी कैसे लेंगे? मुझे तो टैक्स डिपॉजिट कराना है. He said ऐसे करिए, आप टैक्स डिपॉजिट करा दीजिए. I will issue you a show cause notice for the penalty. I said sir, टैक्स किस सेक्शन में जमा करा? बोलते 73 में करा. मैंने कहा fortunately, unfortunately, I am the instructor to the department. आप सोच लीजिए 73 में जमा करा दूँ, क्योंकि the moment I have deposited it in 73 and officer accepts it, the penalty becomes zero. He said तो मैंने कहा किसमें करा? बोलता 74 में. तो मैंने कहा सर मैं तो पहले ही कह रही थी 74 में ले लो. 74 में टैक्स लीजिए और 15% पेनल्टी ले लीजिए. He said नहीं. Next day he said wait for a day. And he said अगले दिन आके मैडम पेनल्टी लूंगा
fund also. तो 100% penalty लगेगी कब? When there is no tax recovery. Example, circular trading. Circular trading में क्या हो रहा है? Sorry, I have to consider the first row. 1, 2, 3, 4. The bills are exchanging hands. Underlying goods और services तो है नहीं, और GST का नाम क्या है? Goods and service में tax. जब goods ही नहीं है, जब service ही नहीं है, तो tax क्यों? So नीचे जो base element है वही exist नहीं करता. It is not a supply. Invoice is invoice a supply? Yes or no? अच्छा yes or no तो बोलना पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा किसने क्या बोला. बताइए invoice supply होता है? No, it's a document which entitles you a particular thing. It's not a supply. लेकिन 122 में issuing of invoice को एक offense count किया गया है. So इस केस में tax तो नहीं निकलेगा, लेकिन penalty levy करता है डिपार्टमेंट जब circular trading होती है, जिसको आप fake invoicing भी बोलते हैं. So what the whole gist is, अगर see how you can make the changes of party कितने % penalty पे करने को तैयार थी in our example 100%. पार्टी का टैक्स ऑलरेडी 10 लाख डिटरमाइन था, और the penalty was reduced to 1,50,000. So what I mean to say, there cannot be 2 penalties for one offence. Secondly, 73, 74 has no direct nexus with 122. It does not make reference. 122 is a separate penalty, 74 is a separate penalty. आप दो penalties इकट्ठी invoke नहीं कर सकते. Now, with this, before we proceed further, और आजकल पता है नोटिस कैसे आ रहे हैं? अब थाने वाले बैठे हैं तो जरा कवर ही कर ले थाने वालों को. थाने वाले बड़े नोटिस इशू करते हैं सर. रीजन, सेंट्रलाइज्ड जुरिस्डिक्शन में प्रिंसिपल कमिश्नर थाने आता है. अब इशू क्या हुआ, ये नोटिस आने क्यों शुरू हुए? अच्छा, आप जब नोटिस का रिप्लाई करते हैं या पेनल्टी के नोटिस का रिप्लाई करते हैं, आई आस्क यू, आई एम सिटिंग इन पंजाब, माय पार्टी इज अ पेपर मैन्युफैक्चरर यूनिट इन पंजाब फॉर एग्जाम्पल. उसको नोटिस आता है प्रिंसिपल कमिश्नर थाने से, वो वाला थाने नहीं, मुंबई वाला. सर गिरीश सर इज रेजिंग हिज हैंड, ये वाला थाना. So, थाने से नोटिस आता है, will you reply to that notice? Yes or no? तो हम तो सारे रिप्लाई करेंगे. सर, we need to see कि जो अपना रिप्लाई देने से पहले ये तो देखिए शो कॉज नोटिस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. दीजिए रिप्लाई, पर ऑब्जेक्शन तो रेज करिए. There is a principle of acquiescence, principle of waiver. Once you do not raise the objection and become part of the particular proceedings, your right to object at the later stages gets lost. This is what section 160 says. So, इस केस में जब हमें थाने से नोटिस आया, I replied to the show cause notice because BCCI के केस में certain principal commissioner, the commissionerates are being designated कि वो ऑल इंडिया जुरिस्डिक्शन रखते हैं पैन बेसिस पे. और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो फ्रॉड्स के केसेस आ रहे थे 122, क्योंकि आज हमारा पेनल्टीज का टॉपिक है, 122 नॉट फ्रॉड, फेक इनवॉइसिंग एंड ऑल. 122 के जो शो कॉज नोटिस आ रहे थे, उसमें एक पर्सन मुंबई में है, हु इज द मास्टरमाइंड, राइट? लेट्स सपोज H, एंड द एंटिटीज आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस इंडिया, जिसने उसके साथ सेल परचेज किया. पटना, बिहार, यूपी, पंजाब, कर्नाटका, कोलकाता, एवरीवेयर. सो गवर्नमेंट हैज पर्टिकुलरली इशूड द सर्कुलर कि इस केस में ये जो केसेस हैं जिसका हाईएस्ट टैक्स क्वांटम होगा, वो वाला कमिश्नरेट उसका चार्ज लेगा और वो सबका केस हैंडल करेगा. तो मुझे भी किस कमिश्नरेट के पास जाना है? टू द थाने कमिश्नरेट, जहां से मुझे नोटिस आया. बट अगर आपकी नॉर्मल 73, 74 की एडजुडिकेशंस है, द PO मस्ट बी देयर, प्रॉपर ऑफिसर. इट इज नॉट लाइक CGST से आए उसको जवाब दो, SGST से आए उसको जवाब दो. नो, अ पर्सन कैन नॉट बी पुट टू प्रेजुडाइज under 2 officers.
grouping of offences. So this is the task. I will try to cover a little. पूरा cover करना तो possible नहीं है, but yes, my PPT covers the entire topic. सबसे पहले जरा बात करें. Let's understand the term. को देखो जो penalty. Penalty का मतलब है आपको एक punishment दी जाएगी क्योंकि something wrong has been done. क्या creation of offence अगर society को कोई injury हुई तो आपको penalty लगाई जाएगी. My question comes to you. Mens rea, guilty mind, क्या जीएसटी में पेनल्टी लगाने के लिए होना जरूरी है? Yes or no? Yes. Anybody else? Yes. कोई नो के लिए है? चलो मैं चलती हूँ नो पे. एक बात बताइए, सेक्शन 73 और 74 में फर्क क्या है? सेक्शन 73 किसके लिए है? बोनाफाइड, एब्सोल्युटली बोनाफाइड केसेस. सेक्शन 74 किसके लिए? नॉन बोनाफाइड फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट, सपरेशन. सर कल्यूशन जीएसटी में हट गया. कल्यूशन वाज अ चार्ज इन एक्साइज लॉज. Out of 5 now 3 are being continued only in GST. Now my question comes, sir 73 में पेनल्टी का रेट क्या है? 10%, right? तो फिर बोनाफाइड केस में आपने तो बोला मेंस रिया चाहिए पेनल्टी लगाने के लिए, तो फिर 73 में पेनल्टी क्यों लगी? You said ना 73 में मेंस रिया नहीं चाहिए बोनाफाइड केसेस. 74 में मेंस रिया है क्योंकि फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट, सेपरेशन विद द इंटेंट टू इवेड टैक्स ऐसे वर्ड्स यूज हो. Then why there is a penalty in section 73? Sir, the answer is criminal laws require mens rea, culpable state of mind, but civil liability, mens rea is dependent upon statute. Statute जहाँ mens rea नहीं भी है, but because of your act, some loss have been suffered, some act or omission has been done which is not as per the statute provisions, you can be liable to penalty, and section 73 is one of the examples of it. So कहाँ mens rea चाहिए? अरे जहाँ words used है ना, fraud, intent to evade, section 7, वहाँ mens rea चाहिए. हाँ, mens rea होगी तो पेनल्टी की क्वांटम ज्यादा होगी. 73 में पेनल्टी का क्या क्वांटम है? 10%. 74 में पेनल्टी का क्या क्वांटम है? 100%. So it is the statute that defines. Now let's see it with the help of Supreme Court judgment. Supreme Court said mens rea means guilty state of mind. Mens rea is not an essential ingredient for the civil wrong. So आप जो कहते हैं ना कि भाई मेरी गलती से ये काम हो गया, मेरे से गलती से ये सेल छूट गई, it was bona fide, even then 73 proposes 10% penalty because mens rea is an essential ingredient for the civil offences but not for the criminal offences, not for the civil offences. So what you need to check, sir, civil है या criminal? पतंजलि में ये भी point discuss किया गया है. What you need to check, offense कैसा है. Second, language of provision कैसी है. आपको पता है penalty के हर stage पे mens rea होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. I will prove this. चलिए एक एग्जाम्पल. अच्छा पहले हम levy देखते हैं. levy में word लिखा गया है if the invoice is not issued in a proper manner, it is no mens rea required. ठीक से invoice issue नहीं किया गया. 125 क्या कहते हैं? माइनर ब्रीचेस, माइनर पेनल्टीज. अब अगर मैं टर्म यूज करूं falsified invoice, that shows mens rea is required. Fake invoice, mens rea is required. If I say 100% of the tax evaded, mens rea is required. If I say 100% of the tax required to be paid, mens rea not required. So जो आप 74 के नोटिस आते हैं या पेनल्टी के नोटिस आते हैं, मेंस रिया है या नहीं, ये प्रूफ किसको करना है? डिपार्टमेंट को करना है, मुझे नहीं करना है. The person who is putting the charge, we have the judgment of Honorable Supreme Court in Uniworth case, which says that the burden of proof lies on the department. But हम मांगते ही नहीं है ना. We do not ask it at the lower stages. Why we are waiting for tribunals to come?
खिलाया गया होगा, सो हम समझ सकते हैं। मैं नहीं कहूँगी मेरा सेशन बोरिंग है इसलिए सो रहे, राइट? चलिए, सो व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इज, अगर आपको मेंसरिया चेक आपको सामने वाले से मांगना है, एक्सटेंड, अच्छा कितने लोगों ने सर्विस टैक्स के नोटिस अटेंड किए हैं कि 26 ईयर्स की इनकम आ रही है और आपने सर्विस टैक्स की रिटर्न में उस पर सर्विस टैक्स नहीं पे किया, राइट? डिपार्टमेंट का 1 साल का टाइम पीरियड निकल गया, सबको 5 साल का लगा के लिमिटेशन शोकॉज नोटिस इशू किए गए। वी हैव कुश कंस्ट्रक्शन, Lloyd developers, and a long list of CSTAT judgments which says a particular thing which is already the part of my financial statements, which is already part of 26 years of document which is available on the public domain. How it can be suppression? छुपाया क्या मैंने? And that too, suppression within, अकेला suppression गलत नहीं है। Suppression with an intent to evade tax calls for 74 or the penalties, higher penalties. But who will prove intent to evade? Department. Did you ask कि आपको कैसे लगा intent to evade है? जितने notices आ रहे system generated है। I yesterday checked a judgment which mentioned system generated notices calls for कि आपकी जो पेमेंट जो आप इंटेंट टू इवेड टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। So you need to check for these pointers before you reply. So now it has been lost. So what is the consolidated takeaway? Penalty commensurate करेगी जितना मेंसरिया का एलिमेंट होगा। अच्छा चलिए डिटेंशन का केस लेते हैं सर। एक डिजिट गलत हो गया, इनवॉइस से मैच नहीं करता, और सर डिस्पाइट ऑफ सर्कुलर नंबर 64 दैट हैज बीन इशूड वे बैक इन 2018, डिपार्टमेंट व्हाट वी कॉल इन पंजाबी और हिंदी धड़ल्ले से 200% पेनल्टी लगा रहा है, बोलते अपील में निकलवा लेना। Am I right? So why, where there is a e-way bill on record, where there is e-invoice on record, a mismatch of a number, how it shows there was an intent to evade tax? We have Supreme Court ruling on it, Satyam Shivam paper mills, where even the cost was levied on the department for presuming the men's. कोई गलती हो जाए उस पे आप पेनल्टी लगाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, बट ऑब्जेक्शन मस्ट फ्लो फ्रॉम यू। सर आपके पास कोई हथियार नहीं है सिवाय मोबाइल की जो गिरीश सर इससे पूरा चला रहे हैं। आपका हथियार आपका रिप्लाई है। लोअर स्टेजेस पे दिया रिप्लाई, ट्रिब्यूनल विल आस्क यू अ क्वेश्चन व्हेन दे विल डिस्पोज ऑफ योर केसेस, डिड यू रेज दिस ऑब्जेक्शन एट द फर्स्ट स्टेज? Yes, I raised it. Where is the reply? This is the reply. I was asked when I prayed for the refund case. आपने ये points अपने officer को दिए थे? I said yes. RFD 09 is the reply to that. And what has been his pointers on that? We need to consider that. All right. चलिए. So in taxation, penalty follows the what is the crux? Mens rea is not an essential ingredient of taxation statute. It is the taxation statutes, the statutory design, use of the word intent to evade, use of the word fraud, use of the word falsified invoice, that leads the way whether mens rea is required or it is not required. Right? Chale, now we move forward. Even what are penalties? Penalties are the teeth that are being given to the legislation when certain non-compliances are made, maybe with or without the mens rea. Without mens rea, 73 is the example. With mens rea, 74 is the example. Now, what are the basic principles? Minor breach, minor penalties. Do the department adheres? No. I have already given you the circular 64 example. The degree of breach and the degree of the punishment must commensurate. So, what is the next? Sir, 75, one of the prominent section which is generally missed. अच्छा, आप एक reply file कर रहे थे. Let me hide this. आप एक reply file कर रहे थे, and there was an option personal hearing required or not. और आप
आपने उसमें लिखा पर्सनल हियरिंग नॉट रिक्वायर्ड. Officer has proposed an addition. Now tell me, personal hearing not given because not asked by you. You have particularly mentioned no personal hearing required. Is officer bound to give you personal hearing? Yes. Exactly. 75(4) says, where any adverse decision is contemplated, where request is received in writing from the person chargeable, or where any adverse decision is or. Even if you say no, when any adverse decision is contemplated, they are bound to give you personal hearing. And what is personal hearing? Is it a luscious candy? Answer is no. वो बच्चे को दिखाते ना, डेट दी गई है, 16 को आ जाओ, 18 को आ जाओ, 20 को आ जाओ, 3 hearings given. No, the courts have highly come upon the issue. Personal hearing means effective personal hearing. It's not like 16, oblique 18, oblique 20th. I have given 3 personal hearing. And the personal hearing points and the addition points and the show cause points must be in line with each other. Many times it has been seen. In one of the case, department वो rice का case बहुत चलता था ना, branded है, non-branded है. डिपार्टमेंट ने पार्टी से सारे डॉक्यूमेंट मांगे कि ये तो रिजेंबल करता है ब्रांड. पार्टी ने दिया, मेरा ब्रांड अनरजिस्टर्ड था, मैं 5% के लिए लायबल हूँ. ऑर्डर आया, एडवर्स ऑर्डर था. एंड यू नो व्हाट वाज द पॉइंट? द डॉक्यूमेंट व्हिच हैज बीन सबमिटेड बाय यू हैज बीन मैन्युअली एडिटेड. Hence, it seems it is a temper-tainted document. Therefore, the benefit of appeal was not allowed. Was the show cause notice issued to the notice issued to the party, giving the opportunity to explain the point? Answer was no. And it is a pet case for High Court where show cause notice and order are not in line. When a proper opportunity, we will see a number of High Court and Supreme Court rulings where maybe oats, sugars, milk, and number of cases which says a proper hearing must be given. Speaking order. It's not a term. It should actually be speaking. What is the speaking order? अगर आपने 5 points दिए हैं, officer must rebut those 5 points if he wants to make an addition. Merely writing reply not sufficient, not satisfactory is not a speaking order. आप बोल रहे हो कि मेरे पे पेनल्टी इतनी लगनी चाहिए, means he must rebut those points, he must counter those pointers, right? Moving ahead, let me go to the section, and this is 7513, the one I used while explaining the example. One penalty for one default. जो officer 115% लगा रहा था, 7513 came to my rescue. A very well drafted, और अभी इसका use भी बताऊंगी, that how it will be turning up. Now, sir, what is the point? See, 122 सेक्शन में और एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बताऊंगी. अच्छा, थोड़ी सी केस स्टडी बताओ. चलिए, एक्चुअल केस है, केस स्टडी नहीं है. पार्टी के ऊपर चार्ज था, बिल दिया है X को और माल दिया है Y, और क्वांटम इन्वॉल्व वाज 500 CR. चलो 500 रुपए मान लेते, 500. नाउ कैन यू इमेजिन कि डिपार्टमेंट ने उस 500 के क्वांटम का कितना बनाया? 3500, 3500 करोड़. And how come? I will show you through an example. And how then these sections will help us to come out of that. Now have a look. Section 122, there are 21 offences that are being listed. See, offence and default are two different terms. Every default is not an offence. Offence means something grave, and default means कोई गलती हो गई. Again, the usage of the terms define mens rea है कि नहीं, right? Now there are किसी ने रिफंड्स के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए. सो देयर आर 21 ऑफेंसेस दैट आर गिवन. अब ये 21 ऑफेंसेस में कहा क्या गया है? प्लीज यू रीड द टर्म टैक्सेबल पर्सन. Sir, we need to be vigilant as to each and every point. What it says? If a taxable person, not a registered person. Registered person is a narrow term.
आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, बट आप एक टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन, अगर तुमने इस 21 में से कोई ऑफेंस किए तो हम आपसे पेनल्टी लेंगे। क्या पेनल्टी लेंगे? 10,000। देखिए मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड है। अगेन जितना डिफॉल्ट, जितना ब्रीच, उसके अकॉर्डिंग क्वांटम, और एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेडेड। कैन यू सी द एलिमेंट ऑफ मेंस रिया इन क्वांटिफिकेशन आल्सो? पहला पॉइंट क्या? टैक्स इवेडेड। Evaded is a word which shows intent to evade. Proof कौन करेगा intent to evade? It is the department who has to prove I have an intent to evade, not me. I have done my first assessment. Second से tax collect किया, जमा नहीं कराया. Is there any use of words intent? No. Normal. Tax लिया, जमा नहीं कराया. TCS लिया, जमा नहीं कराया. Penalty लगेगी. इसमें intention के words नहीं है. इनपुट लिया, डिस्ट्रीब्यूट किया कैसे? इरेगुलरली। रिफंड कैसे लिया? फ्रॉडुलेंटली। सो मेंस रिया इज embossed in the statute, in taxation statute at various places. We need to check where mens rea is required and where mens rea is not required. एक पर्सन है, उसने genuine रिफंड लिया, डिपार्टमेंट ने रिफंड दी. Can they come under 122? It should not be. It was an interpretational issue. आज मुझे बताइए, माइनिंग होती है, पटना में भी माइनिंग है, बिहार में, झारखंड में, चलिए माइनिंग होती है। आज सुप्रीम कोर्ट का 9 मेंबर बेंच बैठता है और जजमेंट देता है रॉयल्टी इज नॉट इन द नेचर ऑफ टैक्स। ऑल ओवर इंडिया द नोटिसेस आर बीइंग इशूड अंडर सेक्शन 74। हाउ? जिसको आज अभी उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का केस, आई एम टेलिंग यू कि हाउ दीस पॉइंट्स आर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नाउ। दीस दो जो उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का केस आज भी जीएसटी और सर्विस टैक्स के लिए पेंडिंग पड़ा है कि उसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, बट डिपार्टमेंट ने एडिशन किए क्योंकि स्टे हट गया था। और किसने किए? आपको टैक्स लेना ना, लीजिए। व्हाई 10 to 8? व्हाई 74? That they sirs mentioned in the previous Odisha, आपको टैक्स लेना है लीजिए, 15 लेना है, 20 लेना है, 30 लेना है, 50 लेना है, 80 लेना है, बट करेक्टली लीजिए। आपको टैक्स चाहिए, the policy is there, yes, माइनिंग पे टैक्स लेना है, but why with 100% penalty? Where the taxpayer is going wrong? So what it said, 100% penalty लूंगा। नाउ ये 21 ऑफेंसेस की लिस्ट है। आपने सीमेंट को सैंड करके बेचा, 28% पे 5% का रेट लगाया, इंटेंशन, फॉल्सिफिकेशन, पेनल्टी लगेगी। अब इसी के साथ सर 3 क्लॉजेस मेन हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि मैं लिंकेज एस्टैब्लिश करने जा रही हूँ 74 और 122 में। मैं क्लॉज नंबर 1, अच्छा क्लॉजेस याद रखोगे? फिर हाँ या ना नहीं है? बोलो हाँ, रखनी पड़ेगी। हाँ, सो क्लॉज नंबर 1, सप्लाइज एनी गुड्स विदाउट इशू ऑफ इनवॉइस। एग्जांपल याद करो जरा, x और y। गुड्स दिए, सप्लाई ऑफ गुड्स, लेकिन बिल नहीं दिया, राइट? सेकंड, इनवॉइस दिया y को और गुड्स दिए x को, तो 2 ऑफेंस कर दिए, 1 में भी और 2 में भी। 2 लिंक्स हैं सर, 2 लिंक्स हैं। नेक्स्ट, आईपीसी का लिंक सबसे ज्यादा 7 है। अगर आपने गलत आईपीसी लिया, टेक्स और यूटिलाइजेस, ऑल्दो द वर्ड और इज यूज्ड हियर, बट देयर आर न्यूमरस। सर व्हाट इज एन ऑफेंस? आई थॉट ऑफ मर्डरिंग अ पर्सन। अच्छा रिकॉर्ड मत करना और डालना मत। आई थॉट ऑफ मर्डरिंग अ पर्सन, इज इट एन ऑफेंस? टिल नॉट कमिटेड, till not committed is not an offense. Takes or utilizes, although the law says लेना भी पाप है, but we have got the recent judgment also and past judgment also. अगर किसी ने ITC लिया है और उसको यूज नहीं किया है तो उस पे पेनल्टी। इंटरेस्ट में तो आ ही चुका है, इंटरेस्ट they have already amended. If you have taken and not utilized, your balance in electronic credit ledger is there, you will not be put to interest, but penalty में word still is off. But we have lots of jurisprudence. And sir, one thing more, don't directly jump to jurisprudence, huh?
law. When law does not give you the answer, then go to the case laws and to interpret that law, right? Takes or utilizes without actual receipt to 7 number clause का गलती हो जाएगी. Now I tell you, अभी बाकी सारे penal provisions बाद में आते हैं और एक ये 122(1)(a) वही 4 ऑफेंस जो अभी मैंने क्लॉज नंबर 1, 2 एंड 7 बताया था 9 भी है. मैम डोंट क्लिक द फोटोज, आई विल शेयर द पीपीटी. क्यों अपने फोन की मेमोरी भर रहे हो, राइट? चलिए then click me. Right, okay. So 122(1)(a) ये पेनल्टी आई. सर अगर किसी लॉ का भी इंटेंट समझना है ना, व्हाट इज माय इंटेंट ऑफ सेइंग, व्हाट इज सर्स इंटेंट ऑफ सेइंग, रीड द मिनट्स ऑफ द मीटिंग. व्हाट वाज डिस्कस्ड, क्या हुआ था, क्या प्रपोज किया गया था. सर 271(a) इनकम टैक्स में भी सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ और जीएसटी में भी 122(1) आया. दे वांटेड टू कवर द फेक इनवॉइसिंग फ्रॉम ऑल द एंगल. Although the revenue from such transactions might be less than 1% of the what revenue the government is earning. Sir, 1% से कम लोग litigation करते हैं और जितने भी लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, with the law that has been made is sometimes misused to catch one bad fish. We are disturbing the whole pond. And the way these days the department is adhering to the measures, वो कहते हैं ना फूल से नेक्टर निकालिए, फूल को मत तोड़िए. So what it says, अगर किसी का भी कोई बेनिफिट ऑफ ए ट्रांजैक्शन मिल गया कि आपने कोई पैसा लिया है, कुछ अर्न किया है, कोई बेनिफिट अर्न किया है, एंड जिसके कहने पे ये ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसको भी 100% पेनल्टी लगेगी. जरा अपना एग्जांपल याद करना. 500 करोड़ याद है, 500. सर डायरेक्टर्स को 122(1)(a) में कवर कर लिया गया. The persons who have retained the benefit of a transaction and in whose instance the transaction is done. कैसे बना वो 535, 3,500. Both the directors were given the show cause notices under 122(1)(a. Right? Now, अच्छा एक बात बताइए, penalty provisions are to be strictly read or liberally read? A legal point. Strictly. अब देखिए बोगस इनवॉइसिंग का केस डाला गया 17, 18, 18, 19 का, लेकिन डायरेक्टर और ये प्रोविजन आया है लेटर ऑन आफ्टर 2021. बट द डिपार्टमेंट ने डायरेक्टर्स को 17, 18 और 18, 19 के लिए भी 122(1)(a) का नोटिस दिया. Although we have two reverse judgments opposite to each other on 122(1)(a, I am going to discuss in a minute to come. Here it is. Or one thing more, what I want to highlight, I have particularly kept this slide. If you want department to provide you RUDs, if you say department, they should be in a proper format. If you want them to prove their intent, that we have to prove the cogent evidences, to bring on record the cogent evidences, then your replies should also be in a proper way. You must also first raise the objection and then without prejudice to the objections raised above, these are my factual conditions. आपको नोटिस आता है ई-वे बिल का डाटा और जीएसटीआर 1 का नहीं मिलता, आप आंसर देते हो 50,000 से कम बिल है, 50,000 से ज्यादा बिल. पहले किसी ने कहा स्क्रूटनी में जीएसटीआर 1 वर्सेस ई-वे बिल आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्रूटनी किसकी होती है और 3 भी रिटर्न है, 1 और ई-वे तो रिटर्न ही नहीं है. But we straightforwardly give the replies instead of raising the objections. So, see, इसमें भी क्या था, I showed to the officer कि तुमने मेरे में 200% पेनल्टी लगाई है. यूपी में ही पकड़ा गया था. क्या क्या ठीक है, इनवॉइस ठीक है, ई-वे ठीक है, पीओ परचेज ऑर्डर ऑन रिकॉर्ड है, ये भी पतंजलि का ही केस है, सब कुछ ओके है. गलती कहाँ की है? If you can see in red, can you see that? Here. ये सिर्फ प्रिंसिपल हुआ क्या था, अगर आपने ई-वे बिल बनाया होगा तो ई-वे बिल में ड्रॉप डाउन लिस्ट में एड्रेसेस आते हैं, वो अगर आप उसको पर्टिकुलरली चेंज मत करो ना तो वो प्रिंसिपल प्लेस का एड्रेस उठा जाता है. तो इसमें भी वही हुआ. एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द ऑफिसर लेविड 200% पेनल्टी
although the appeal has been in favor, but there has been lots of harassment to the taxpayer. But we presented it through a chat. इससे ऑफिसर को क्या लगता है सब कुछ तो ठीक है. Again the question comes, where is the intent to evade tax? Right? Now let me come to the portion where we have to hear. Sir, is 73, 74 and 122 are linked? Answer for me is no. 73 has its inbuilt penalty, 74 has its inbuilt penalty, and there are various occasions which can be proved here. See, 73(9), there is no reference of section 122. 73 subsection 11 बोलता है subsection 9 में जो पेनल्टी लग रही है, क्या वो कहता है रेड विद 122? नो. सो ये अलग अलग पेनल्टीज है. एक टैक्सपेयर के ऊपर 73(9) का पेनल्टी या 74 का पेनल्टी रेड विद 122 ड्यूअल पेनल्टीज नहीं लगाई जा सकती. और सर्कुलर 171 बाय द गवर्नमेंट एंड इलाहाबाद, इट इज नॉट लाइक इफ अ जजमेंट इज फेवर ऑफ रेवेन्यू तो आपके लिए एक फेवरेबल लॉ पॉइंट नहीं दे सकते. पतंजलि में चाहे जजमेंट अगेंस्ट पतंजलि है, बट इट हैज put forth for discussion number of legal points. Have a look. Circular number 171, pictorial. You know, a picture is worth 1,000 words. Am I right now? Now, what this circular 171 says, and this is the, मैंने कहा था 3 clauses याद रखना, 1, 2 and 7. अब सुनिए, किसको पकड़े? चलो, मैम को ही पकड़ लेते हैं. नवीन सर बैठे साथ में. नवीन सर को, सर जो फोन में उसको पकड़ लेना चाहिए. राइट? बाद में इन्होंने कहा तूने मुझे स्टेज पे पकड़ा था, जरा पीछे आना. ना सी, और नहीं सर, इसमें नहीं ले सकते, छोड़ देते हैं. हाँ जी. अब मिस्टर ए है, मिस्टर ए इनवॉइस देता है मिस्टर बी को. सर गुड्स दिए, क्या बेचा? डायमंड बेचा, साड़ी बेची, गोल्ड बेचा, ज्वेलरी बेची. मैं तो अपने मतलब की बात करूंगी. कुछ बेचा? नहीं बेचा. टैक्स क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं है. देयर इज नो सप्लाई, देयर आर नो गुड्स और सर्विसेज. दिया क्या? इनवॉइस. सो डिपार्टमेंट को न्यूज पड़ी थी, हमने 500 करोड़ का रैकेट पकड़ा. सर ए बी सी डी जितने लोग हैं ना, सब पे टैक्स का क्वांटम वर्कआउट कर देता है डिपार्टमेंट. Whereas one person in the chain pays the tax, the entire chain goes correct. So that was the circular 171, which is the resultant circular. Department ने बोला, एक तुमने तो कोई सप्लाई नहीं की है, तुमने एक offense जरूर किया है, which is listed in 21 offences in section 122. What is that offense number? 122 subsection 1 clause 2. Issuance of invoice without actual supply of goods or services. So you are liable to 100% penalty tax. हम तुमसे लेंगे नहीं. Then came B. अरे B भाई साहब, माल किसी और से और बिल किसी और से. So B is a person who has taken invoice from A and goods from me. Are you getting it? Sir, 2 गलतियां कर गया. कैसे करी? Let's see. Mr. B, you are the one person जिसने ITC लिया. और ITC भी किसने लिया है? अरे ITC लिया और उस ITC को यूज किया C को माल बेचने में. सर ऐसा क्यों होता है? I tell you the practical example of operational industry. There are many things, you know. हम GST law frame करते हैं, but operational difficulties नहीं देखते. Sometimes it happens कि जो person माल दे रहा है, आप metal scrap का ले लीजिए, junk dealer, वो कहता है मैं माल, this fake invoicing, and the reason is operational difficulties. Many a times parties come to us and says we have to pay lots of amounts to sometimes to the government departments to take the contracts. Where we should account for those? If you will not do this, you will not get the money. You will not get the contract, and if you will not get the contract, your company will be shut down. Right? But anyhow, what the law says, Mr. B, वो आपने A से इनवॉइस लिया और B से A तो तुम पे पेनल्टी लग गई, तुमसे मिस्टर B
आईटीसी रिकवर किया जाएगा जो तुमने लिया और सी को माल बेचने में यूज किया। और अगेन माय पॉइंट इज प्रूव्ड, जहां पे 74 लगा, जहां 74 की पेनल्टी लगी, क्या 122 सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे? एंड माइंडेड, कहां गए गिरीश सर? भाग गए। इससे पहले मैं थाने के सॉरी पिछली सीट खाली। सर, थाने वालों के massive notices with 600 crore demands are incorrectly provision being applied. लगना था 74, आईटीसी वापस ही नहीं मांगा। मेरी पार्टी ने आईटीसी ले रखा, कुछ करवाना मत। मेरी पार्टी ने आईटीसी ले रखा है, वापस नहीं मांगा, 122 में पेनल्टी लगाई। अब सर सर्कुलर को तो मैं बाद में चैलेंज करूंगी। डिपार्टमेंट वाज बाउंड टू फॉलो द सर्कुलर ना, दे हैवंट इवन फॉलोड देयर ओन सर्कुलर। Are you getting it? So यहाँ पेनल्टी नहीं लगा सकते। जिसने आईटीसी यूज किया और जिसने आईटीसी आगे यूज करके आउटपुट टैक्स का पेमेंट किया, उससे आईटीसी रिकवर करो ना। क्लॉज नंबर सेक्शन 74। टैक्स रिकवरी जहां आएगी वहां 122 नहीं आ सकता। टैक्स रिकवरी जहां आएगी वहां सेक्शन 74 या 73 में आना ही पड़ेगा। फॉल्स इनवॉइस में 73 तो लगाएंगे नहीं, तो क्या लगेगा? सेक्शन 74 लगेगा। नाउ कम्स द थर्ड लिंब, सर्कुलर ट्रेडिंग। हियर, अब ये देखिए, अब किसको पकड़े? खुद को ही पकड़े। चलिए, इससे बिल लिया, आगे बिल दिया। क्यों दिया? अरे आईपीओ लेके आना था, सेल ज्यादा चाहिए थी, बैंक का लोन चल रहा है, सेल इन्फ्लेट करनी है, तो अर्न क्या किया? कुछ नहीं किया, पीछे से बिल दिया, आगे बिल दे दिया, परचेज भी बढ़ती गई, सेल भी बढ़ती गई। डिपार्टमेंट बोलता है 2 ऑफेंसेस। मत सोचिए वही बिल लिया वही दिया। पहला परचेज किया, आपको 122(1)(7) आईटीसी लिया, उसकी पेनल्टी लगेगी। गुड्स तो है ही नहीं, सिर्फ बिल खेल रहे हैं, सो क्या लगेगा? सिर्फ 122 लगेगा। 74 टैक्स नहीं मांग रहे हैं, 122 लगेगा क्योंकि आईटीसी लिया और आगे दिया। सेकंड, आगे बिल काट दिया, तो वही ऑफेंस जो ए ने किया था। बिल दिया, गुड्स नहीं दिए, 2 पेनल्टीज लगेंगी, 122(1) एंड 122(7) में। नाउ हैव अ लुक, दिस इज माय केस एंड विल अप्रिशिएट योर ओपिनियंस ऑन द सेम। अच्छा, मेरा भी केस निकल जाएगा, कोई को फायदा होगा। दिस इज माय पार्टी एम, राइट? असली नाम नहीं है, घबराइए मत। एम ने एक्स को गुड्स दे दिए और वाई को इनवॉइस दे दिया। देयर माइट बी सेवरल रीजंस। वाई कहता था, एक्स कहता था माल तो लूंगा, माल बेचना है, हाँ बहुत बड़ा पे मास्टर है एक्स, कहता लूंगा, बिल नहीं चाहिए। माइट बी इज ऑन इश्यूज, आई विल नॉट शेयर दोज इश्यूज राइट नाउ। उसने क्या किया? अच्छा भाई तू माल तो ले, काम कंपनी तो चलानी है। अब वो एम इज अ पर्सन, उसे सर मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता, क्या करूं? माल तो चला गया, स्टॉक से तो आउट हो गया, तो क्या करा? वाई को बिल दे दिया। वाई आगे उसको, अब सुनिएगा, वाई आगे उसको अभी चेन में पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, इज अ सेपरेट इशू। सर इनकम टैक्स और जीएसटी में बहुत फर्क है। इनकम टैक्स कहते हैं टैक्स मिल गया काम खत्म, जीएसटी कहते हैं टैक्स मिल गया काम खत्म नहीं, वो आगे का आगे क्रेडिट चेन पास होता है, राइट? दे सेड, अच्छा उसने कौन सा बिल दिखाया होगा 3B में? वाई वाला। एक्स को तो बिल काटा ही नहीं। अब सुनिए डिपार्टमेंट के चार्ज क्या है। डिपार्टमेंट कहता है मिस्टर एम तुमने एक्स को मार दिया, उसके ऊपर टैक्स का है 74 में टैक्स दो, पहला 500, 74 में टैक्स दो। अब 74 में टैक्स दोगे तो पेनल्टी 100%, 1000, राइट? सेकंड, मूवमेंट ऑफ गुड्स की तुमने विदाउट इनवॉइस, सेकंड फर्स्ट में उसमें भी 500 पेनल्टी दो। सर ये पेनल्टी क्लियर कट टूटती है फॉर 1 लिंब ऑफ द ट्रांजैक्शन। उसने 2 पेनल्टीज लगा दी, 74 में भी और 122(1) में भी। कौन सा सेक्शन? 75 सबसेक्शन। ये टूटेगी, बट अभी उसने क्वांटम कितना बना दिया? 1500। ठीक है, आगे चलिए। अब ये ले
ट्रांजैक्शन नंबर 2 कहता टैक्स तो पेड है, टैक्स तो आप 3B में पे कर चुके हो, लेकिन सप्लाई ऑफ इनवॉइस विदाउट कवर ऑफ गुड, विदाउट गुड्स, पेनल्टी लगा दी 500%, कितना बन गया 2000, और 3 डायरेक्टर इंटू 500 इंटू 3 1500, कितना बन गया 3500. The company is now sitting on a GST liability of 3500 crores for an offence done for 500 crores, and now your sections will take it out. I say, sir, I seek your and sir's opinion on this and now how I take it out. First, section 7530, there cannot be 2 penalties for one offence. आप 74 में भी सेम रेप के ऊपर लगा रहे हो, 1 नंबर पर ही, क्या 2 पेनल्टी 74 में भी और 122 में. सेकेंडली सर आप कहते हो वाई बोगस है, वाई एग्जिस्ट ही नहीं करता. जब वाई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या मैंने रिटर्नों में टैक्स पे किया उसके ऊपर? हाँ किया है. तो दीजिए ना मुझे इसका एप्रोप्रिएशन उसके अगेंस्ट. आप द डिपार्टमेंट कैन नॉट सेल इनटू 2 बोर्ड्स. एक मुझे कह रहे हैं वाई बोगस है, No loss to department. no loss to department. Although sir they have their own pointers, why से तुमने चेन आगे मूव करके टैक्स दिया है, right? So what I want to add, 122(1)(a, sir, wrongly invoked. The case belongs to 17, 18, 18, 19. Penal provision of 122(1)(a was not in existence those days. But High Court of Delhi has to say something else. You know what High Court of Delhi has said in Mahendra Kumar judgment? बोलते हैं शो कॉज नोटिस जब आया तब तो पेनल्टी का सेक्शन था. Although Bombay High Court is against, the Mahendra Kumar judgment of Delhi High Court is subject to Supreme Court, और Supreme Court ने पीरियड से पहले 122A आने से पहले वाले पीरियड पे स्टे लगा रखा है as of now. And now I come to the Patanjali judgment. What Patanjali? Thank you. Finally we got them. Good, thank you. Now let's talk about Patanjali judgment. सर पतंजलि के ऊपर चार्ज, अच्छा पतंजलि के 3 यूनिट्स हैं इसमें, लेट मी शो यू. हियर कहानी सुनते हैं. पतंजलि तुम्हारे 3 यूनिट से, एक हरियाणा, एक उत्तराखंड और एक महाराष्ट्र. आपको पता है इसमें आर्ग्यू क्या हुआ? पतंजलि के ऊपर सर्कुलर ट्रेडिंग का चार्ज था टू आउटसाइडर्स. इट वाज अ चार्ज ऑफ सर्कुलर ट्रेडिंग. अब इस केस में आर्ग्यू क्या किया, 1 यूनिट के ऊपर उन्होंने 74 ड्रॉप कर दिया. एंड इट वाज आर्ग्यूड कि जब 74 का डिफॉल्ट नहीं है तो 122 की पेनल्टी. सर 122 की पेनल्टी क्या बोलती है? टैक्स इवेडेड. जब टैक्स ही नहीं है तो मैंने इवेजन क्या किया, एज अ रिजल्ट मेरे ऊपर 122 की पेनल्टी भी नहीं लग सकती. बट Allahabad High Court said section 74 and 122 are independent sections. Independent section. आपके ऊपर 74 ड्रॉप हुआ है क्योंकि अंडरलाइन गुड्स और सर्विसेज थे ही नहीं. बट 122 का डिफॉल्ट कंटिन्यू करेगा, इसलिए हरियाणा और महाराष्ट्र यूनिट्स जो हैं दे आर स्टिल अंडर अ पेनल्टी ऑफ 234 crores. And what the court has to say, court has held that 74 अबेट करने का मतलब नहीं है कि 122 की प्रोसीडिंग्स भी अबेट हो जाएंगी. 122 अच्छा, फिर ऑनरेबल दतार सर वाज अपेयरिंग इन दिस केस एंड व्हाट वाज मेंशन कि 120 अगेन मैंने क्या कहा था, सिविल और क्रिमिनल सिर्फ करने की बात नहीं है. इट वाज आर्ग्यूड कि 122 जो है वो क्रिमिनल इन नेचर है, तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर कैसे लगा सकता है 122? द कोर्ट हैज हेल्ड 122 आर सिविल इन नेचर एंड नॉट क्रिमिनल. बट जिनको 122 के नोटिस आए हैं, वी ऑल आर टेकिंग अ गन, ऑफिसर लगा सकता है, तो ऑफिसर की पावर तो होनी चाहिए लगाने की. सर एक बात बताओ, सुप्रिंटेंडेंट की पावर कितने की है टैक्स कैलकुलेट करने की? द
10 lakhs, IGST में 20 lakhs, ACDC की फिर बढ़ जाती है, 1 करोड़ के बाद सारी पावर एडिशनल को चली जाती है, मैं राइट? सर्कुलर नंबर 31 है ना, सर्कुलर नंबर 31। सर 122 की पावर आज तक लॉ में दी ही नहीं गई। Recently in 2025 circular number 254 is issued for the first time, जहां की 122 की पावर दी गई है। Have a look, ये देखिए, I show you, ये देखिए सर, ये ऑफिसर अलॉट किए गए हैं, इसमें सेक्शन 73 है, 74 है, लेकिन 123 है, 127 है, लेकिन 122 है ही नहीं। अगर आप बोलते हो 122 का रूल कौन सा है? 142, तो आइए 142 की पावर दी गई है, और पता है किसको दी गई है? सुपरिटेंडेंट को दी गई है। इसका मतलब 234 करोड़ की पेनल्टी पतंजलि पर एक सुपरिटेंडेंट इन्वोक कर सकता। Madam Achal, can you look at your watch? Yes. Perhaps I'm told you have to go to the airport also. Why did you book the flight so early? We wanted you late. No sir, it said 3:30 sir. And I can leave मतलब 1 hour. No, 3:30 is your flight. Yes sir. Then how long will you take to? Sir, as long as I'm being As precisely as possible, take us to the point. Do I have 10 minutes sir to wind No, up? you can have your time up till 10-15 minutes more. 10-15 But, minutes, sir. but then let the audience there, I think they are patiently hearing you with rapt attention, and you are very educated. You may proceed. Then wind up. Be careful of your watch. Others also need to speak something. My friend Sanjeev Anwar says that he also needs an audience. Sure sir. Right. So what I was talking about, that 142 रूल की पावर दी गई थी, but किसको दी गई है? To a superintendent. So what was the issue? Now I show you the circular. This is circular 254 and see the date of the circular, 27 October 2025. इसका मतलब, and इसमें 122 सेपरेट दिया गया है कि 122 की पावर रहेगी 10 lakh, 1 crore, and this is for 74A and this is for 122, which says this is 122 की powers. It means before October 2025 there were no monetary limit fixed for section 122. It is first time through circular 254 that the powers, that the monetary limits have been brought in by 122, and now this is getting challenged in all the cases of 122. And yesterday I had one judgment I have not put in here where the same has been challenged in the court. Right? Now let me be back to that point which we were talking about. 122(1)(a). 122(1)(a) can be applied retrospectively before 1/1/2001. Have a look on the Mukesh Kumar Garg case. This case is pending in Supreme Court of India. Stay has been granted, interim relief has been provided, but Delhi High Court has mentioned that yes, when the show cause notice has been issued, at that time the penalty was there, hence it can be invoked. Although we have Bombay High Court here in Shantanu Sanjay Hundekari, which says penalty जब offense किया गया था उस टाइम पे penalty provision नहीं था, so directors के ऊपर 500 की penalty नहीं लगाई जा सकती. Right? चलिए, let's move ahead. So, who is PO for section 122? This is for the first time that this section has been introduced. Now, let me come to offences and penalties provision. Here, sir, after 122(1)(a, e-commerce के ऊपर भी बहुत, sir, nowadays e-commerce platforms are on track. अब आप बोलोगे मेरा ई-कॉमर्स का कोई क्लाइंट है या नहीं है, बट आपके वो क्लाइंट्स तो हैं जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज देते हैं. रिटर्न्स में चेंज आया है, कॉलम्स में चेंज आया है, 3D में चेंज आया है, 9 में चेंज आया है. सो वी नीड टू बी विजिलेंट कि हम उनको करेक्टली फाइल करें.
operator we have? Depending upon legal terminology, two. एक वो जो TCS काटते हैं, एक वो जो TCS नहीं करते. Swiggy, Zomato, Ola, aggregators, वो TCS नहीं लगाते. There are 4 listed in a particular notification, right? So it is a penalty only on those e-commerce operators जो TCS under section 52 जिनके ऊपर applicable है. Sir, I am not going into the detention PPT at large, but I just want to make a point here. Let me come to this slideshow. Let me make it from here. It has gone. What I want to highlight is this point again. डिपार्टमेंट झगड़ा पता है क्या डालता है? 129 में क्यों आए? Why not in 130 confiscation? Am I right? 120 में एक 129 में कितनी पेनल्टी है? 200%. सर पेनल्टी है. It cannot be paid through the credit. 200% is the entire amount of penalty which is levied there, and that too has a point. Honor comes forward or honor does not come forward. Have a look. Let me show that provision to you. Okay, and one thing more I want to tell. In this PPT, let me show you that here. Index. Friends, this is an index of the case laws. ये सारे case laws इस PPT का part है. Expiry of e-way bill पे, suspicion is not sufficient, SC and driver के नाम पे है, which usually the department does. मोबाइल बिल एक वो डिपार्टमेंट है जिसमें आपको लीगल फ्लॉज बहुत ज़्यादा मिलेंगे. Sometimes तो even orders are not uploaded. We are not even able to file the appeal. Orders are being given in the name of the drivers. So इन points के ऊपर I have given here approximately 25 pointers जिस पे detention किया जाता है. Incorrect distance है, tax element wrong है, इन सब के ऊपर 25 के 25 37 पॉइंटर्स के ऊपर आगे हाई कोर्ट के केस लॉज दिए गए. So which you can refer, and even the penal provisions that how the penalty will be calculated. Goods, अच्छा कई people, some people feel अगर goods exempted है तो 129 नहीं लग सकता. No, even if the goods are exempted but are not covered by proper documentation, the penalty under 129 can be invoked, right? So what is the main issue? अब 130 और 129 में segregation हो चुका है. Notwithstanding word 130 से हट चुके हैं. As a result, अब ऑफिसर को intent to evade proof करना पड़ेगा तो ही वो 130 में आ सकता है. Only for the 7 pointers mentioned there. Otherwise, he has to go through 129 to 130. So this was my points on this topic. Only one thing that I haven't fully covered is this compounding. And in compounding, sir, I am just going to show the compounding, and then we can finish off. Here it is. Right. एक तो गवर्नमेंट ने डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस किया था. 3 ऑफेंस, पहले 12 ऑफेंस होते थे जिससे पनिशमेंट मिलती थी. 3 ऑफेंस. कारण पता है क्या था? मिसयूज. ऑफिसर आया, आपने डॉक्यूमेंट दिखाने से मना किया, वहां पे चार्ज लगा देता था और ये कहता था कि यू विल बी पुट बिहाइंड द बार्स. सो फॉर सच पेटी थिंग्स 3 offenses have been decriminalized. So decriminalization of what? Obstruction or preventing any officers in discharge. ये चार्ज बहुत क्विकली लगता था और बहुत मिसयूज होता है. So obstruction or preventing officer in discharge of his duties, deliberate tampering of material evidence और failure to supply the evidence. सर ये चार्ज तो डायरेक्टली इन्वोक किए जाते थे और बोला था आपने मैं कागज नहीं दिया, मैं 132 के प्रोविजंस लगा दूंगा. As a result, now this has been decriminalized. और 2 करोड़ से ऊपर एक्सेप्ट 122(1)(2) क्लॉज याद कराया था मैंने. उसके अलावा
अरेस्ट की पावर 2 करोड़ से ऊपर है और 5 करोड़ से ऊपर ऑफेंस नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल बन जाता है. सो जनरली डिपार्टमेंट 5 करोड़ से ऊपर ही अरेस्ट डालता है बिकॉज दैट बिकम्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस. नाउ इफ आई से कि दिस इज द चार्ट कि कितने साल की पेनल्टी कितने साल की पनिशमेंट लगती है कितने का इवेजन हो तो. एंड लास्ट इज द कंपाउंडिंग एलिमेंट. लेट मी शो यू. गवर्नमेंट हैज it again goes there. Compounding. This compounding is dealt in section 138, read with rule 162. What is the major element? Compounding government ने fee change की है. Old law में थी 10,000 और 50% of the tax, जिसको कम करके 25% of tax कर दिया गया है. And in maximum cases, it is 100% of the tax. What is the legal element in compounding? The procedure is already given. I just want to discuss one case laws. Compounding of offence is not an adjudication. Neither department nor taxpayer, it is not open to challenge once the compounding gets accepted. So the procedure, the filling of the forms and everything for compounding is given here. And thank you so much for the patient listening. One thing more, throw some light on whether the fake invoicing can be compounded. Sir has raised a question. Sir, this is again a change that has been brought in. For the fake invoicing, the compounding option has been stopped. So this was the part of the PPT. I have given it here also. And I have highlighted also, a person who is accused of issuing fake invoices without actual supply of goods would not be allowed to apply for compounding now. So this has been a change which has been introduced by Budget Finance Act 2023 with effect from 1st October 2023. So I hope that stands covered. So thank you so much for the patient listening. Penalties and prosecutions under the GST Act. A very illustrative guide. I think the paper that Madam has presented today, though she has not been able to take us all to entirety in its entirety, but I feel that that should be on the web portal of the FTP so that the participants and the other persons can go through it. It should be shared. And then she has worked too hard, and I thought that it would be better to give her, she should have been given to do justice another hour to deliberate, and I think it was very educated, very illustrative, and a lustrous way in which he has presented. Thank you for all your efforts, and thank you audience for all your patience. It has all been a good day today. Deliberated a lot upon mens rea with regard to section 74. According to her, the section 74 says the word misstatements, suppression of facts is given. If I correctly remember, there is an income tax case of a larger bench of Supreme Court in Dhamanda Textiles, in which this mens rea issue was settled as such, whether you agree to that or not. While deciding the issue of penalty under section 271(1)(c), they also referred to the prosecution provision of 276(c) under income tax, right? Where there is a word called willfully attempt to evade tax. Something akin to what section 74 says in that. And in Dhamanda Textiles, the larger than probably 306 ITR, if I correctly remember. In that decision, the Supreme Court, whether you agree to that decision or not, nullifying Dilip Sharaf's case, if I correctly remember, and affirming Gujarat Travancore case. They have said that mens rea is not essential in civil proceedings as such, even if the legislature has not specifically mentioned it. They have only gone into limitation that they have to only prove that it will be 3 years, 5 years, etc. But in my humble opinion, if now it is law of the land that Dhamanda Textiles larger than Supreme Court. So importing that ratio in GST as such, because that is a law. Even in 74, in my humble opinion, I will leave it open to the House,
that Minsia even in 74 is not a very important consideration. If the department has been just able to demonstrate that it is a misstatement of fact or suppression, etc., they are not bound to prove Minsia as being a culpable mental state or something like that as such in other. This is the only small point which I wanted to highlight. If at all some derivation again Mr. Kapoor has say or Mr. Kabi has revealed, she can always elaborate. Thank you. It harasses not only the taxpayers but also the lawyers in the court. The subject, the words are very powerful. If you read the Pushpam judgment, the Honorable Supreme Court dwelt largely on the point of willful intent and suppression of facts, as they are words of great importance. I would commend reading that judgment of the Honorable Supreme Court in Northern India Operating System that dealt with the issue willful intent to evade payment of tax. Thereafter, the Central Board of Indirect Taxes has issued a circular on the basis of the guideline issued by the Honorable Supreme Court in Northern Operating System. There, the board went on to say that not only invocation but evidences relating to intent to evade payment of tax must be necessarily attached with the notice. So I believe that these aspects were to be covered by the Honorable Speaker today. She said that for paucity of time she could not. But since I was very curious on the subject matter and having dwelt with the subject in the courts in large number of cases, I would commend you reading Northern India Operating System and the circular and also the Pushpam judgment. These judgments consider excise laws and penalties levied thereunder, and I think these are very useful guide in GST 74 proceedings also. Madam has made a very wonderful deliberations, a very easy to understand manner and lucid way of expression. She has her own inimitable style of expression. I commend her that. I wish her success. As beautiful she is, she has added grace to the Patna conference by deliberations wonderfully. She makes a good round of applause for her, and I think it should not stop. Please go on. Congratulations. माफ कैसे है तो जो भी गलतियां होती रहती है अधिकारी करते हैं और कभी आप तरफ गलती करते हैं कभी वो भी गलती करते हैं तो मैक्सिमम केसेस गाइडलाइंस निकालिए सर आप स्टैंडिंग काउंसिल है नहीं गाइडेंस तो प्रॉपर दिया जाता है स्टैंडिंग और सर्कुलर भी इशू होते हैं प्रॉपर टाइम लेकिन वो अब जानते हैं कि होती हो कुछ आपके तरफ कुछ तो ठीक है अभी हाई कोर्ट है बीच में इसमें ट्रिब्यूनल भी आ गया है और सारे केसेस हमारे यहाँ से डीबी बेंच से तो सिंगल बेंच सारे सीधी आपका ट्रांसफर हो रहा है डिस्पोज ऑफ गो टू ट्रिब्यूनल लेकिन अभी डीबी बेंच है तो वहाँ पर अभी भी आपको वहाँ पर न्याय मिलेगा और हम लोग भी क्या करते हैं वहाँ खड़े होते हैं बस करते डी माइनर ठीक है और 100 केस आते हैं तो 1-2 केस फंसते हैं जो कि हम लोग थोड़ा सा कुछ काम करने की बात है बाकी सारे केस में वो रिमांड ट्रैक तो ये हो 11 थैंक यू वेरी मच बहुत बढ़िया सेशन आप सर यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए Now may I request now break for lunch has been arranged outside the conference hall. We look forward to welcoming you back promptly for the next technical session. छोटा हो जाए इधर हो गया
That too is clickable और सारे amendment last में given है with their notification number with their effective date. Notification number is also clickable. Same for the rules. Text registration code बहुत मुश्किल है सर्च करना, बट यहाँ पे नहीं है. यहाँ पे 3 तरह की होती है. Good services. Just single click automatic हल्दी पर आ गया. Fresh date order 3 तरह की होती है. इसकी HSN भी लिखा, इसकी डेट भी लिखी हुई है. तो you can write any. Same इसमें articles है which is written by different advocates. Articles आप पढ़ सकते हैं. RCM की प्रॉपर टेबल बना रखी है, अपडेटेड RCM की टेबल जो आपको नहीं मिलती इजीली. लाइक दिस, इसके अंदर जो कुछ चेंज होता है वो यहीं पे गिवन होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, न्यूज, वीडियोस, ब्लॉग डेली आपके व्हाट्सएप एंड मेल पर आते हैं विच यू कैन रीड. नाउ वी जस्ट लॉन्च GST GPT. आप सब AI यूज करते हैं, बट जितने भी आप करते हैं ऑलमोस्ट सब में गलत आंसर आता है, एलिवेशन होता है. बट इसमें नहीं है. क्यों? क्योंकि जो भी डेटा लेकर आएगा वो हमारे सॉफ्टवेयर से क्रॉल कर लाएगा. In general query, first option you can ask any query regarding GST. ये जनरल क्वेरी है. स्पेसिफिकली एक्ट रूल में आप कोई सेक्शन, कोई रूल डाल के उसकी समरी बना सकते हैं इन इजी लैंग्वेज. इन जजमेंट यू कैन राइट एनी लैंग्वेज इन एनी वर्ड. लेट्स से आई राइट दिस पार्ट बी मिसिंग इन ईमेल एंड एंटर. हियर यू गो. यहाँ पे जजमेंट भी आएगा, कोर्ट का नाम भी आएगा, डेट भी आएगी, ब्रीफ भी आएगी और जजमेंट के ऑथेंटिकेशन के साथ उसके लिंक भी आएगा. तो इफ यू क्लिक ऑन लिंक, वहीं पे उसका जजमेंट पूरा ओपन हो जाएगा. तो इसमें गलत जजमेंट कभी नहीं आएगा. नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राफ्ट रिप्लाई, विच आर लास्ट ऑप्शन. यू कैन राइट योर प्रॉम्प्ट अगर आपको कोई भी ड्राफ्ट रिप्लाई चाहिए बनवाना है तो. बट नेक्स्ट ऑप्शन है PDF. आप अपनी PDF इसके अंदर अटैच कर दीजिए, जो भी आपकी PDF है, आप उसका ऑटोमेटिकली AI से रिप्लाई बनकर आ जाएगा हमारे डेटा के थ्रू. तो गलत नहीं आएगा. आप यहीं से अपना ड्राफ्ट रिप्लाई बनवा सकते हैं. हम आपका कोई डेटा इसके अंदर सेव नहीं कर सकते हैं. आप चाहे नाम के साथ डालें, बिना नाम के साथ, इसमें आपका कोई डेटा सेव नहीं होता. सेम इज इनकम टैक्स. सो दिस इज ऑल वी हैव. कोई किसी क्वेरी तो प्लीज डू लेट मी नो इफ एनीवन आई वांट टू आस्क. नो? ओके. सो मेरा स्टॉल बाहर ही है. इफ प्राइस की बात करूं तो सिर्फ GST इट कॉस्ट 14,000 प्लस GST, बट 50% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन ओवर हियर. So it will cost 7,000 plus GST for 1 year, and if you go for income tax GST both, it will cost you 13,000 plus GST for 1 year. Thank you. Advocate Devi Gupta sir from Patna and our guest speaker CA Prashant GS from Bangalore to come on the dais, please. It is my great honor to introduce the session chairman, Advocate Deshbandhu Gupta sir, a highly respected and eminent professional in the field of taxation. Shri Gupta sir brings with litigation, particularly within the state of Bihar. Advocate Devi Gupta sir has also served as a member of Empowerment Committee for streamlining the Bihar VAT Act and is presently a member of the GST Grievance Redressal Committee constituted by the government. He has held key leadership roles as former secretary of the Bihar Income Tax Bar Association and former chairman of the Bihar Commercial Tax Bar Association. We all are privileged to have him chair this session. Please join me in welcoming Shri Deshbandhu Gupta sir. इधर देखना राजीव. Next, it is licensing and international taxation. He regularly handles litigation and representation at various judicial and appellate forums, with several of his matters being reported. Ganen. Ganen. With this, an income tax search, formerly referred to as raise, under section 132 of the Income Tax Act,
is a very high stakes legal proceedings. Therefore, practical calm responses are essential to protect the rights, and it always starts with recording of a statement under section 132(4) of the Income Tax Act. And when the statement is recorded, whatever admission is made, it is legally tenable and admissible in the courts. Therefore, while making the statement, one must be very careful that no such statement should be made on a guesswork. If you are not very sure and it requires the details of previous years, then you can make a simple statement. I can answer only after going to the records, meaning thereby, even if you have made a wrong admission in the statements, you have a right to retract it. But retraction should be very promptly and with legal evidence by sworn affidavits. Because once you retract late, there are judgments. A retraction made after 8 months of the search and seizure was held untenable. Therefore, it is very required for all of us to guide our clients that even if a strong statement inadvertently made is admissible, but you can retract it. There are various grounds. I am not going to deal upon those grounds because I have with us an expert from all the way from Bangalore, CA Prashant Sahab, but thereafter, retraction penalty is there. Penalty once under-reporting and misreporting under section 270A of the Income Tax Act, you have to be careful because under-reporting entails tax of 50%, and if it is misreporting, it is tax is more than 100%, 200%. So, you must be extra careful. If there are documents involved which leads to criminal, it may lead a prosecution under section 270C of the Income Tax Act or 277. Even if some admission has to be made of income has to be disclosed, one must be very careful. It is a very long subject. I am not going to develop on those subjects. Now I request my learned friend all the way from Bangalore, CAG Prashant, to take over the proceeding. And the other co-hosts for having given me this opportunity to share my views on practical responses to search. We are indebted to our parents for life. We are indebted to our guru for the way we live. I take this opportunity to place on record my deep sense of respect and gratitude to my mentor, CAS Venkatramani, who has been a guiding force and factor in my endeavor of profession. Also, my respects to CAD Devraj and CAA Shankar Senior Counsel, who have mentored me at various stages of my professional career, which has enabled me to present myself before this august gathering. To say beside and set the tone down, Gupta Sahab brought out the intricacies saying what happens in a search and how important it is in terms of the search, right from the 1961 Act till now, because the 1922 Act initially did not have the search provisions. Only after a law commission report came in, such proceedings came in. 1922 Act, we did not have the provisions of search and seizure initially. By the time the 1961 Act came in, yes, search and seizure was an integral part of it, and it continues in the Income Tax Act 2025 as well. 132, sir referred to that. You can replace it with 247 in the new Act. But now, what is the importance of this particular discussion we're going to have today? Instead of being a monologue to say the provisions, explain them, which most of you would be aware. For example, Rastogi would have handled hundreds of cases, would have argued hundreds of cases before the court. But to say where we would probably as professionals require a little bit of extra knowledge or a bit more of, I would not say exactly additional knowledge, but to say that finer points or niceties where on the technical aspects which technical aspect to be taken up, which is not. So, the first thing, what happens when a search party enters your premises? The presentation will be shared, because I will not be able to go by the PPT, because the organizers will share the presentation with all the delegates.
No, I don't go about this. You can have only the first slide. I don't know. If you want me to go by it, I'll go by it. I generally don't. I mean, it's difficult. If you want to run it, I'll just keep changing it. So what is the first of the things that happens when a search party comes? It is not as it is depicted in the movies, what we've seen, that people come, enter a house, damage your furniture, hold you at gunpoint and say, then take away all your cash, gold, everything, tear your sofas. It's probably a dramatic way of presenting how probably a search is. Probably they would have taken cinematic liberties there to show why and how it is very important for research and how important ingredient it is for the government to detect tax evasion, which is why they take cinematic liberties when they show how a search is undertaken. But what happens in reality and what is the rights of a person being searched? We have always read about what the search party does, what he does, what can he do when he comes, what are the takeaways. What is that first thing you can do once he enters the premises? Because we are talking about the practical responses that we have to understand, and it's a responses also the practical niceties of how to handle a search. On the people on the ground who have handled search should know it. What is the first thing that you are supposed to do? You can verify the warrant of authorization. When a search party comes saying that I am so and so, I have come to search your premises. As a person being searched, you have a right to verify the authorization. They will not give you a copy but because the warrant is there for it to be shown to you so that you allow entry into the premises. After having shown a valid warrant, you cannot deny him the permission to enter. Till such time that he does not show you the warrant, he is trespassing into your premises. Because he is an unauthorized visitor. Because he is neither your friend nor relative to barge in at a time that he wants. He is entering with authority of law unless that is depicted or shown, which means most persons who get searched would not be even aware that they can ask the officers that please show me the warrant. Because the importance of a warrant is it is not merely permitting the official to enter, whether it is person specific or premises specific. Because, see, for example, we know Bharat Bhai would have amassed huge amount of wealth, but when they want to undertake a search on him, he may have multiple premises. Where will you go? The publicly known address may be in Thana, but he may have many other properties which the tax authorities might not have known, or they would have come to know through different sources. So how does the warrant help you? Once they come into premises and show the warrant, search in the case of so and so, the important aspect is which is the premises being searched. The search can be in the case of say Bharat Bhai, but for all that you know, the premises they want to search may belong to Girish Bhai. Because the department may have enough and more reason to believe or reason to suspect, as the case may be, that money, bullion, jewelry or books of accounts might have been hidden in the place where Girish Bhai resides. Because if you look at how Customs Act deals with it, I think section 105(1) of Customs Act talks about goods being secreted. If you apply a similar analogy, that's how the warrant is given to a separate premises. So you have to see the person specific, is it person specific or premise specific? Each warrant is premises specific. The search can be on any individual, but the premises to search can belong to a third party also. What happens to the documents is there that we will discuss during the course of the presentation. But as a first cut, the person being searched has a right to verify the warrant of authorization. Once you verify, what is the next step? The person searched can insist upon verifying the identity of each of the department officials. Each of them you can insist upon the officials to show you their IDs. If you want, you can make a note also saying so and so name, employee number. Because we have seen how many fictitious searches have happened, fake searches have happened where people in the guise of tax officials and CBI officials have
conducted these fake raids. So you have a right to look for their identity and then also make a note which officer visited, what is his employee code. What happens if they are not carrying a valid identity card? See, he may have an Aadhaar, he may have a voter card, he may have a driving license. Doesn't mean that he can enter their house. It must be the identity card which duly authorizes him to enter. Either a sanction letter directly in his name saying that so and so, Rajesh Mehta, with full details, particulars, address, Aadhaar number there to say, with the photograph attested by the higher official to say, I am authorizing him. Or he must have that valid government ID, which is given by the income tax department. He cannot say, he can't show the epic election voter card and say, look, I am enrolled in this area, I am permitted. No. These things people out of fear would not ask. It may so happen that most officials might not have carried their ID cards. Which means you can tell them, Vaisab, please wait outside, please get your ID cards, I will let you inside. But till then, you are a trespasser into my premises. You have no right to enter. Even the right of easement also will not apply to an intruder or a trespasser. Even the right to easement also is available for legal passage and not for trespassers. And what else can you insist upon? What we commonly know as the Panchanama which is drawn, you have something called Panchas, they are known as the witnesses. You can insist on two credible witnesses from the locality. When you say credible witnesses, we are not talking about their economic strata. A newspaper vendor or a milk vendor may be a good person, very good person at heart. He might have known your house for long, but you cannot say he will be a very credible witness in the proceedings of such. Because it also involves him understanding what goes on, what are the rights and duties of the person being searched, and what authority that the person who is searching has. So, common man or a newspaper vendor or a milk vendor who visits your house daily, you may know him, but is he a credible witness? Whether the Evidence Act now re-christened as Saksha Adhiniyam, will it permit them to be treated as credible witnesses? So you can insist on two respectable witnesses from the locality. And you can also insist on a personal search of the personnel. Why? Because in this technology-driven era, planting of evidence, if at all you have to make the claim, if you want to take a position tomorrow, I'm not saying directly the department does it, but if at all it has happened. In the past, if you had to say that planting of evidence, it had to happen through ledgers, vouchers or big sacks of records. But now a small pen drive can destroy a business empire. So you have a right to conduct the personal search of each of the persons entering your premises. And if you carefully look at the Panchanama, they are right. We offered ourselves for search, but the SSC politely declined. But in practically that doesn't happen at all. They will never offer. So therefore you have no choice to say that you politely refused. But if somebody is aware of their rights as a taxpayer or as an assessee, you can insist on a personal search. You can tell them, please keep all your mobile phones also outside, because you don't know what they want to record outside of it. What happens to this? You always have a pros and cons of displaying this behavior. One, it shows you are confident that you are prepared for any eventuality in terms of search. You are okay that they can come and search and find out and willing to give documents is one part of it. You think you are confident. Department thinks that you are arrogant. इसको बताना इसका औकात क्या है करके. He undertook a personal search of mine and he insisted on my ID card. अब मैं दिखाता हूँ उसको मेरा power क्या है. That's the mindset. You cannot grow out of that, but it depends on what is the position you want to take. How confident you are about what is being found in your bedroom, what will be found if your wall is dug up, what is found if your sofa is stolen. If you are too sure that there is nothing there, you can display confidence, which department terms it as arrogance. But you display this confidence and the moment they enter they find unaccounted bullion and jewelry, then the impact on you is double dhamaka. Because not only you have hurt the ego by being overconfident,
you have also given them the enough and more to target say how this money came in. One common question arises, do you have a right to call for professional assistance? Can you call for your lawyer or chartered accountant during the course of search? Theoretical answer is yes. Practically, I would say never do that. Because if you want to challenge the validity of search and how proceedings were conducted at a later point in time, if you have had your CA or advocate present with you during the course of search and they sign on the Panchanama saying that we were witness to these proceedings and how the seizure happened and how the PO was clamped, you cannot tomorrow take a plea that that particular advocate or CA is not aware of the provisions of law and therefore you want to go back on the statements. It becomes difficult because you have sought professional assistance during the course of search. To the extent possible, though theoretically it is permissible, you can say, I will look into the documents and give a reply at a later point in time, instead of saying, call my auditor, abhi bol denge usko. You can wait. Because once a search happens, you have to wait out. There is nothing called closure next day. Ab itna bhi try karo. Agle din close kar do. You can close in other ways, but the proceedings will take place. The proceedings will continue till the period of limitation. So therefore, you have to start. There's one more new thing which you have to practice once you get searched. You need to learn how to wait outside officers' chambers. How do they test you? Post the search. What happens during search we'll discuss. But once the search is complete, they will call you at 10 a.m. to record a statement. He'll make you wait for 3 hours. Then he'll say, we are going for lunch. Wait for the second half of the day. Then he'll record partly a statement. Then he'll say, come tomorrow morning at 10 a.m. You should be willing to spend the time outside the chambers of the department officials waiting, so that tomorrow we will have enough and more to make a claim saying, this is how the proceedings happened. I was called at 10 a.m. Called in only by 1 p.m. after that. This only depicts the intent of the department. But you need to be patient enough to say, go there, wait. They will tell you, kal aa jao. They will say, only 15-minute lunch break, we will record the statement. That happens, but you need not give in to that. Coming back to what happens during the course of search, what are your rights? Is right to sleep agreeable there in search? Because right to sleep has been treated as a fundamental right by the Supreme Court now, in Baba Ramdev's case. So therefore, the person is searching, and nowadays if you look at how the search happens, it starts early in the morning and goes on for more than a day. It goes on for 2 days, 3 days continuously. Why do you think this is going on of late? There is a reason behind it. There is a Karnataka High Court judgment, Ramai Reddy versus ACIT, 339 ITR page number 210. The landmark judgment, the Karnataka High Court said, once a search warrant is executed, it is a one-way ticket and not a season's pass, which means you enter the premises, conduct the search, finish the proceedings and come out. You cannot use that warrant to time and again enter like you enter your father-in-law's house. In that sense, they made the same. It is a one-way ticket and not a season's pass. So therefore, of late, the tax officials conduct these raids for 4 or 5 days continuously. One, they are trying to bring you down mentally, saying that tax authorities are in your place for 4 or 5 days. How do you handle them? But do you have rights at that point in time? Yes, you have a right to sleep at your normal time. You have a right to have your meals at the normal time. They can't force you to abandon your meals. Children have a right to go to school, subject to the condition that their bags and tiffin boxes also will be checked. Because department has had experiences in the past wherein search was happening, children were sent to school, then department realized the tiffin boxes and school bags contained cash and jewelry, and the search was ultimately a failure because they did not find. Because now they incorporate that in the Charter of Rights, that children will be allowed to go to school, but even their bags would be checked. As long as you permit that to happen, department officials would permit your children to attend school. And insofar as women are concerned, you can insist on only female officers to search, or personal search of a member be undertaken only by a female officer. Because you have, in our custom, you have a lot of parda nashin women who will not
come out and meet gentlemen. So therefore, you can insist that due to the religious practice, that lady would not step out, and you insist that only a female member comes. You're buying time. You're buying time. You are buying time to think, not to destroy evidence, but you're buying time to think what you can do, what is the response you can give. Can the department stop your business when the surgery is happening? Can they say all operations shut down? No, this is how the common knowledge, how it is depicted is that, but it is not permissible. The business has to be allowed to continue. They can make their identification marks, collect evidence, collect details. If you're selling something, they can collect a photocopy of a bill, but he cannot stop the business. And you also have the jewelry limits, and that we'll discuss. Once the reasonably a search proceeding concludes, or they come, they have verified, they have seized. If you look at a Panchanama, you will have something called items found, seized, or found and seized. They might have found, say, 3 kilos of gold jewelry. He records it, 3 kilos of gold found. He will record with details of the narration of the items found. Then, depending on the quantum of jewelry found and the number of people in the house, also considering the status of the family, for a married lady, 500 grams, 250 grams for an unmarried lady or even a small girl child, 100 grams per male member of the family. Which means, if you have about 4 or 5 adults in the house, about 1.5 kilos automatically gets explained. When I say explained, it doesn't mean that the source stands explained. For seizure, that 1.5 kilos or 2 kilos, they will not seize it because they permit it. The source of that still needs to be explained. Considering the status of the assessees, need not be that only 500 grams, they can let other extra jewelry also be noted down as found, but they may not seize it. If you are having bills, evidences, or if you have recorded in the books of accounts the existence of the jewelry, they may not seize it. But just because they don't seize does not mean you are absolved of the requirement to explain the source. The requirement to explain the source will still be on the assessee, despite them not seizing it. And same thing happens with cash. If the cash is available as per the books of accounts, they will record cash found, they may not seize it. If they seize also, it will be mentioned in the Panchanama, immediately it will be deposited in the PD account of the commissioner. And of course, you can use it to offset your tax liability. Insist that department appropriates it against the tax liability also. You also have a right to collect the Panchanama at the end of it. You do not have a right to collect the warrant. They will only show you the warrant. But for Panchanama is concerned, they are supposed to give you the copy of the Panchanama. There is a column in the Panchanama which reads, the search commenced at so and so time and ended partially and temporarily concluded or finally concluded. When you say temporarily concluded, are you saying that they are stopping the search there and then they can resume? Or is it because of clamping a PO? You have too many documents in a house, too many rooms. So if it is impractical for them to seize everything, for a couple of rooms or almiras in the house, they will clamp something called a prohibitory order. And then say that search is temporarily concluded, and they will also have that PO on that particular almira or the room, clamp it, seal it, they will exit. The next time when they enter the premises, technically, theoretically, the department official's right is only to enter that particular bedroom or that almira only, subject to right of easement. If he has clamped the PO on the bedroom, he can walk to the living room, enter that bedroom, open that and check. Even if a gold bullion 10 kg bar is lying on the living room, he has no right even to question it, what is that? Theoretically I am saying, he has no right to question it, because his right to enter is limited only to operate the PO. And then he has to also record as to why he did not choose to seize those files, because if it's a big house and if he is clamping in a PO only some 10 files, what stopped him from seizing them and taking it with him? It is, again, they are playing mental games with you to say, your house is under my control, I can come anytime.
it has got a clamp, I have sealed your room, you cannot enter this, I will come tomorrow, I will come day after. Because there is a time limit for them to enter, up to 60 days they can come. So you will be under that mental pressure to say, look, the search is not complete yet, department officials can come any time, can I go out for a holiday, can I go for a vacation, can I go out for a wedding in the family, you are not sure when that fellow will come. Therefore, these are pressure tactics that department uses. But you can obviously say, tell them, boss, look, you have found the files, please seize it. Mark, place identification marks, please seize it. Again, that depicts why they are, because he has to record, technically he has to record reasons as to why he is clamping a PO and not seizing the documents. These finer aspects will help you in dealing with the wing when you appear post-search, saying the irregularities in terms of the procedures. Because generally, if the procedure is wrong, the proceeding is wrong. But what happens, because these are more of customs built up, this is not in the law as to, you can question them. If you are aware of the law, you can question that. Why didn't you seize that particular 5 or 10 books on that particular day? Why did you clamp the PO on that almirah? Department will not have an answer. They cannot admit on record that I want to put you under duress, therefore I did this. They cannot do that. That is how the initial responses to search should be. Next we come to what happens during the course of recording. Gupta sir spoke about 132.4 statement. I'll come to that. He spoke about 132.4. It is perimeter to 247.6. 247.6 and 132.4. These are commonly known as statements which are recorded on oath during the course of search. How does it happen? Pre-search inquiries happen through 131 summons. Post-search, they will summon you under 131 because he doesn't have any other right to call you to the department. He can only summon you under 131. He will issue a summons to you, subject to the condition that you do challenge the validity of summons and the legality of the summons and you appear. He will record a statement under 132.4. He will record on multiple occasions. One, during the course of search before the search concludes, and sometimes immediately thereafter also they will record a statement under 132.4. What is the legality and validity of this particular statement under 132.4? If you look at the statements, how the department records nowadays, your first thing will be, I am administering oath to you. You should not say anything other than truth. Otherwise, you are punishable under so and so. You can be tried for prosecution. They will give the list of sections also, and you will sign there. Next, they'll ask you what is your name, full name, father's name, education, what is your family, how many kids. All the general questions would come in. Next comes to a question of how many bank accounts do you have. Mishra sir will say, I have 8 bank accounts. Fantastic. He knows, because he knows his money. He will say, I have 8 bank accounts. He is supposed to write down. But where the department falters, the next question would be, give the details. And the statement would depict account serial number 1, HDFC Bank, 15-digit account number, MICR code, and then bank branch. Like that for 8 banks, Mishra ji will give his details. Next he will say, are you filing return of income? He will say, yes, I filed for 6 years. Give him the details. He will say, assessment year 14-15, 3 crore 26 lakh 46,750 income return, date of filing. Then 15-16, 4 crore 64 lakhs 84,000. Like that, he will give out numbers without the question pointing out saying, I am showing you these return copies, what do you have to say? No. The question will be, provide details of your IT returns for the last 6 years. And Mishra sir has such an elephantine memory that he not only remembers his 15-digit bank account of 8 or 10 banks, that he remembers the total income declared in each of the years for the last 6 years with the date of filing. And next, he will also remember his family members' PAN, their return filing date, the income declared in their hands, and the details of movable and immovable assets that they own according to their statement of affairs. All of that Mishra sir would know it without having to refer to any document. The department official says, please give me details of your assets, and you declare pura answers 1, 2, 3, 4,
ancestral land at so and so place, purchased in 1961 by my grandfather, passed on to my father in 1986, and then next question, what is the market value of that? He will be ready with the market value also. 1961 value was so and so, 2026 market value also, he will record. Good. Let them record it in that manner only, because we should always permit them to do mistakes. If you followed Mahabharata, you would know. Bhagavan Shri Krishna allowed till the 100 mistakes were committed, he did not use his weapon on him. He allowed for the 100th mistake to be completed. So when department is committing mistakes, we should allow them to complete it. Because when you want to challenge that the statement was not voluntary, how do you challenge it? You will say theory of human probabilities. This is the theory that department uses against you always. When you are caught with a document containing check payment 1 crore reflected in the books of accounts, same day you will have cash paid 10 lakhs. Every assessee denies, saying check payment, हमने check दे दिया, check receive लिया, cash entry होना नहीं है. Department always uses theory of human probability, Durga Prasad More and Sumati Dayal, to say if the check transaction is true and recorded in the books of accounts, only indicates that you will not record the cash, which is why you are writing it there. Similarly, use the theory of human probability against the department to say, when the department officer is asking you, please tell his PAN of HUF, his wife's PAN, he would not know by heart. Which means a rational human being, it is impossible to recollect so much data. Which means you can say, the question what is typed there, which I have affixed my signature to, is not the question what was posed. Department what are the details? Department officials have only have the question and written down the answer also. How can it be proved? How will I remember 10 bank account numbers, my income details, details of assets and liabilities, and they will also ask you questions about assessment. Have assessments been concluded in the past? You will say yes, assessment under 143, read with 147 was completed by Assistant Commissioner of Income Tax, Ward 2, Patna on so and so date. Your answer will be like that. No taxpayer can give that answer. He will say yes. I'll come to that later. So, which means it also indicates the department official is only writing that question and answer, because he is writing like he is writing it. So, therefore, he writes wide order number so and so date of the office of the Assistant Commissioner, order date. You will say, नहीं एक case आया था हमारा, वो scrutiny या रेस में पता नहीं, एक case थी 88 lakhs, additions made 50 lakhs, and then assessed income. It is impossible to arrive at those data in the manner that the statements are being taken now. And now Anwar sir was talking about, in the last question they say, do you have anything else to say, or the contents have been read over to me? Even there you can say, that is, if you are really courageous enough, that all these question and answers are prepared with the department officials, I am only signing. But you can do that. But there are people who have done it also in the past, saying that I will not, you ensure the department has taken the pains of recording the statement for 4 hours, 5 hours. In the end, you will say, I will not sign it. Because you have also wasted enough of their time. Game starts then, saying, look, now I will not. In between, they would have asked you a question. You want to declare anything? You want to disclose undisclosed income? Do you know the consequences of undisclosed income? That you can be imprisoned, you can be done. Fine. There may be questions, but your replies can be as evasive as possible. One more thing, I don't know how many of you are aware, there can be a one single answer for all the questions being asked. Excepting for a few basic questions. If they say, what is your name? You cannot refuse to answer. You cannot say, but for every other technical question, you can give one stereotype answer saying, I am given to understand that this is a preliminary proceeding only. All these details will be given to my jurisdictional assessing officer during the course of assessment. If this is the answer you give to each of the questions asked, excepting your name, father's name, you can't say this, saying that this is only a preliminary question I'll give it to my jurisdictional officer. You can give this answer, department officials are duty bound to record this. They can't force you to say, they may say, look, if you give something else tomorrow, we catch you, 100% penalty. ठीक है, लगना है तो लगेगा. Fine, but they have no choice but to write down what you mentioned. Because it is common law, trite law that
If department wants to imagine a particular state of affairs, they have to imagine the corollary also. If they say that you have undisclosed income or a particular land belongs to you, you turn back and say, look, this Raj Bhavan, which is now named as Lok Bhavan, is mine, please sell it and appropriate the proceeds. If the department agree, department will not agree. Similarly, if department says, look, you have this undisclosed income, you agree to this, how will you overcome that situation? Tell them, in addition to this, you are insisting that this belongs to me, I am telling you, the Raj Bhavan also belongs to me. Please sell it, collect taxes, appropriate penalty, and donate 25% of that to PM Relief Fund. Balance, if any, may be credited to my bank account. Department official will say, look, I cannot do this. Then you will say, where is the proof of you owning the particular land and building? For me owning the Raj Bhavan, you want proof. But when you say that this is your undisclosed income, you are not able to show with evidence. Therefore say, I will not declare anything. I will have to refer to my books of accounts and then come back to say, I will give. Then department will tell you, under 132(4), the immunity that if you declare under 132(4), substantiate the manner in which you have arrived or derived your income, pay the taxes, you will not be liable for penalty and prosecution under 132(4). Can you take a position that what you don't declare under 132(4) during the course of recording of statement, but you make a statement subsequently by way of a letter stating this is what? There are divided views on that. Courts have taken divided views saying, look, you cannot treat it as 132(4). But there are instances when courts have treated a letter post-search also in consequence to 132(4), because you would have stated in your 132(4) statement, I have to look into my books of accounts, records, documents to arrive at the true undisclosed income. Therefore, you are closing the statement today because I don't have access to my records. Pursuant to which, when I file a subsequent letter, that in continuation of my statement recorded on so and so date, this is the income being declared, even that can be construed to be a statement under 132(4). Of course, sometimes when the department challenges it, courts may take a different view. Next comes the question of at what time the questions can be taken from you, midnight. Again, there are, like I said, right to sleep has been now recognized as a fundamental right. So, if department really insists on taking a statement at odd hours, please give the statement at odd hours. You may be awake, you will be awake because the search is going on, you will not be able to sleep peacefully. Behave as though you are sleeping or you are awake, give all the answers, but when you sign, please sign with the time, that 3 a.m., 4:15 a.m., 2:26 a.m. so that when you want to take a plea that you are not in the proper frame of mind, the court will look into the Panchanama. What time did the search commence? 5:30 a.m. And what time it is ended? The following day, 4 a.m. which means continuously 24 hours you are subjected to search, and then at 4 a.m. you have given a statement stating that you are admitting to particular income or undisclosed income. There have been instances where the assessees declare income not pertaining to themselves but of their immediate family members and extended relatives also. I am fighting that case, which is still pending, saying that how a statement can be copy pasted. One businessman has agreed saying I declare 50 crores in my name and my cousin brother, uska 10 crore, his wife 5 crores. Fine. He is declared, he is the main person who controls it. The other person, his statement should have been, I declare 10 crores in my hands. No. He also says, my cousin has declared 50 crores in his hands, he has declared 10 crores for me, he has declared 5 crores for me, I accept that. Which means it depicts that the statement, the question and answer to the statement are not to be admitted as evidence. So, the moment you agree to the department to committing that mistake, you have passed stage 1, because you know you can challenge the statement which is recorded. Now, in between this recording of statement and Panchanama, you have something else called breaking open the locks, because they find you have secreted something, almirah you are not opening. Physically what you will do, the law provides you for breaking open the lock or almirah. But under 247 now, you also have a specific thing about
digital access having overriding codes, because they've understood your wealth is no longer only hidden behind this wall, but it can be in a cloud server, it can be on some Bitcoin exchange, which is not decipherable by hammer. Which is why Income Tax Act amended a couple of years ago to say when you rope in experts, earlier it was limited to carpenters and goldsmiths when they say to take assistance during search. Now they have extended it to other professionals, cyber security professionals and forensic experts, because they've realized the people have moved on from the physical hoarding of gold. When it comes to this overriding access to the codes, this leads to a situation of data privacy. Because how has data privacy moved on in India from 1950? That's a topic we have to have a separate day. But especially after the judgment in Aadhaar, that is Justice Puttaswamy versus Union of India, where they have explicitly overruled MP Sharma and Kharak Singh, and also a portion of the Puranmal's judgment. What is Puranmal's judgment? Landmark judgment insofar as income tax is concerned, 93 ITR 505, wherein the evidence collected even in an illegal search can be used against you. That is the principle in Puranmal. But if you look at Bombay High Court, I think in Vineet Kumar's case, what has happened? They have certainly overruled Puranmal also. Puranmal stands overruled in a Bombay High Court judgment dealing with CBI matters. That is the most important facet, because this most practitioners or chartered accountants and advocates would not be aware as to Puranmal has been overruled. Department will come back and say, even if you want to challenge the validity of search, if the search is held to be illegal also, it doesn't matter, because I can use the evidence collected, which is what they use from Puranmal. But in Bombay High Court judgment, Vineet Kumar versus CBI, nothing to do with income tax, they have very categorically stated, saying that how it stands overruled. They say, in terms of Puranmal follows MP Sharma and majority opinion in AK Gopalan dealing with the privacy case, which today stand overruled, because the reason why they do that is when privacy was not treated as a fundamental right, and how the rights would have been infringed then, and how the court has taken cognizance of that in Justice Puttaswamy's case, that opens the Pandora's box for the department to say now how data privacy affects. Because if you look at the finance minister's speech recently, FM spoke about how more than 200 crore of undisclosed income was detected or unearthed due to WhatsApp chats. What we believe can be deleted and delete for everyone, it takes minutes for the department to retrieve it. But whereas there are certain devices, some models I think of the iPhone or some of them, department is not able to crack it, because Apple as a company has not permitted even the government to give overriding access codes. Can they force you to give your thumb impression there? So, can they force you to give a thumb impression, so that will that violate Article 20 subclause 3 of the Constitution? Wherein 20 subclause 3 of the Constitution deals with you cannot be forced to be a witness against yourself. There you come to the basic question to say, by giving out information in a statement under 132(4), can you claim the status of a person accused of an offence? Under Article 20 subclause 3 of the Constitution, the mandatory condition is you must be an accused in a particular offence, so that the statement made by you should not be used against you. Self-incrimination should not happen. That is the principle in 20 subclause 3. Whether 132(4) can override Article 20 subclause 3 in a limited sense, yes. Because here you are not accused of any offence under 132(4), you are being only asked to give answers. Contra opinion, Article 20 subclause 3 on one hand, fundamental rights. Right to silence is a fundamental right.
So therefore, I choose to remain silent. I would not give you the answers and say I would give it at my jurisdiction officer stage. Department cannot say, can the department take a plea that I am obstructing a government official from conducting his activities? No. I have permitted him entry to the house. I have shown him the books of accounts. I have ensured that the books of accounts are there. He can seize them. But I choose right to silence over right to answer. Department cannot say that I am not cooperating. Fine. The appraisal report is up to them. So this is one stage what we can use. Next comes because we have this very important case about the right to silence in an investigation stage dealing with the former Odisha Chief Minister. Nandini Satpathi's case was a landmark judgment on whether can you expand it to criminal investigation and how it happens. So, and subsequently Supreme Court in Pool Pandey and others distinguished the judgment of Nandini Satpathy dealing with the right to silence during an investigation. So therefore the right to silence and investigation will be on one end. But what happens to the statements that we made? And now coming back to admission and retraction. What do you mean by an admission? When you admit to a particular undisclosed income or unexplained asset during the course of search and that you agree that you will make good the tax with interest. You are said to have admitted to additional income being offered to tax. Is it sacrosanct? Just because you have admitted, can you say it is sacrosanct? Because the law is very clear. Consent does not confer jurisdiction. Just because I say I admit 100 crores as undisclosed income, unless the department also is satisfied that I have the ability to earn 100 crores first and then demonstrate the way in which I have earned that 100 crores, either it is represented in the form of asset or expenditure that I should have incurred or in some form or fashion. Unless then the admission cannot be said to be proper. Similarly, every person who makes an admission has got a right to retract from it to prove that the statement made was under a mistaken notion of law or facts or both. This is laid down by the Supreme Court in Pulangodia Rubber Produce Company, 91 ITR, page number 18. At page number 20, Supreme Court says, an admission is an extremely important piece of evidence, but it is for the person who made it to prove that the statement was made on a mistaken notion. So therefore, just because you have admitted to something in the search does not mean it is fatal. It is not. You always have a chance to retract. Gupta sir spoke about a particular case where if a retraction was made after about 8 months, they said it will not be accepted. Fine, there are cases to prove otherwise also as to when you make a retraction. So in retraction you have two sets, or I would say two facets of retraction. One, like Gupta sir mentioned or explained in the beginning, the moment you made a statement, in a reasonable amount of time, say within a day or two or a week, you file a formal retraction letter, sworn affidavit to say why the statement made by you earlier is wrong, with facts and evidence to demonstrate why your statement was wrong. It is one method of retraction. Second, you merely file a letter saying, I was not in a proper frame of mind, it was due to undue coercion, force, etc., etc. So therefore, I am retracting, which department will not really agree too much. You have something else called as a deemed retraction, which is not found in any of your commentaries on income tax also. What is a deemed retraction? You admit to a particular income during the course of search. You don't formally retract it by way of a statement, but wait for the notice to be issued to you. When the notice is issued to you, you are directed to file the return of income. When you file the return of income, you choose not to include this, which means by action you have taken a position that you have retracted your statement. Retraction need not always be immediately by a letter, but you can say it is a deemed retraction on the date of filing of the return. Department may turn back and say, why didn't you inform us all this while? I am not bound to. I have given a statement to you. You want to rely upon it, fine, but
I have also taken a contrary position that I will not be bound by that particular statement, which is a deemed retraction. So when it comes to retraction, by and large, the courts will look into the facts of the case in which how you retracted and what is the evidence the department can prove for admission. If it is a general admission, I declare 10 crores as undisclosed income from my business and investments for the assessment year 26-27 in accordance with law. You cannot say that is a concrete admission of undisclosed income. Whereas if you have admitted to saying, look, I had a methodology, for every 10 invoices, my 6th invoice was being deleted from the system, and that you prove that every 6th invoice I have removed from the system, and this amounts to 1 crore, and you admit such an income, it becomes so much more difficult. I am not saying it is impossible to retract. There are ways and means in which you retract even these things. But it becomes so much more difficult for you to retract because you are supposed to lead by evidence as to why you made this statement in such a comprehensive manner to say, I admit to income and then retract. So admission and retraction, we can't take it lightly. But where does Article 265 help us? Because Article 265 says no tax can be collected without authority of law. So therefore, just because I admit to a particular income or surrender income or confess to income during the course of such, Department Circular is there in 2003 that saying that confessionary statements cannot be taken, but nevertheless that doesn't happen in reality. So therefore, these statements you can retract. How? What about the CCTVs? This is where admission, retraction, you now bring in the element of CCTVs in the search. When the search party enters, most buildings have CCTVs now. Can you be forced to switch off the CCTV in the building? Can you be forced? No, but what happens practically? They would switch it off. So practically sometimes it helps you. They switch it off sometimes and they behave in a different manner. After sometimes you request, in one of the cases it happened that the lady of the house requested saying my children are playing, there's a special child, if you switch it off I will not know. They switched the CCTV back, they forgot about it after 68 hours. They made a note saying, look, we have seized these documents from your office and from your college, so 1 lakh admission fees received, you have received 5 lakhs in cash. They made a detailed note totaling up to 180 crores, stating that this is a statement they presented in the department. The moment you file the CCTV evidence saying, look, this was how it was taken, the documents were neither found in the premises, were brought about by the department from a different search, and they wrote it there, the court quashed it because CCTV helped. There are cases where people have taken a position that they have been slapped, they have been manhandled, and CCTVs have been switched off. But now I am given to understand the devices are now so strong technologically empowered, even if the CCTV is switched off that power, they have an internal backup in that camera to record for at least 2 to 3 hours. Lot of devices now come with alternate things. You have the CCTV, they switch it off, they think there is no recording happening, but the recording is happening inside a chip in the device itself, which has come to the rescue of many assessees who were raided, because they said, look, now we have evidence to prove what you have taken away here. What is written in the Panchanama is 11 lakh cash seized. Fantastic. What was found was 11 crores. What happens to the balance? So the case fell flat. They divided the spoils. I can't speak more than that, but that's how sometimes the issue progresses in terms of admission and retraction. Earlier the better. See, what happens is, to have more chances of you to prove that you are bona fide, if you retract earlier with evidence, more chances of somebody giving more weightage to that. Doesn't mean that just because you retract late, it can't be fatal to you. It is always upon the evidence you lead to say why and how you retract during the course of search, and why not early, because it might have been a strategy to admit first and not retract till department softens its stand, go slow, gives up a lot of other aspects which they otherwise wanted to challenge you upon. Their mind changes, it falls to a different search, different headlines, bigger group, so this falls into the
rare seat of the department's thing, fine. Then slowly you will say this statement, question number so and so was wrong. Or cases where you say affidavit enclosed, don't enclose it. If department reads it carefully, they will ask you to provide the copy. If they don't, after 3 years you can say it was enclosed. I don't have the original, I have the photocopy. So department is at crossroads because you have stated to have enclosed the original sworn affidavit, which department says it is not missing in their file. So it is about how you play the game and at what level you are willing to wage. And the contractor, they may say wager and other things under section 29 and 30 of Contract Act, whether it's legal or illegal. But how are you able to wage your stakes would determine how far you will be successful in either admitting and then retracting and then subsequently doing an assessment to overcome that by saying all that is done by the investigation wing is not reason to believe it is borrowed satisfaction. Because unless they directly, now under the new block assessment regime, after 1/9/2024, they have gone back to old block, which is 1995 to 2003, you had this block. The reasons that they gave when the block assessment was introduced is the same as the reasons they gave when the block was reintroduced in 2024. But the beauty is, the reasons they gave in 2003 to remove the block assessment continues even now, but which means they've gone back to the old block regime, which was there from 1995 to 2003 only for a brief period of 8 years. So they've gone back to, from 1/9/2024, they've gone back to that now. Now coming to the penalties under search, pre-2007, you did not have a specific penalty for search. It was embedded in 271(1)(c). as a portion of it saying either it's concealment or furnishing of inaccurate particulars. Then from 2007 onwards, you had 271 AAA which was introduced, which said 10% is the of undisclosed income is the penalty. One important facet is all penalty sections even now use the word may. At no point in time in the Income Tax Act that these penalties have a word shall, which means even in a search case, the penalty continues to be discretionary only. It is not mandatory. Even after 2012 to 2016, when you had 271 AAB coming in, pre-demon, post-demon, the rates changed. But even then, it was the assessing officer had the right not to levy penalty under 271 AAB. And in the new section, you have 158 BFA2, which deals with what is the penalty to be levied. Now, for the new regime, it is 50% of the tax leviable on undisclosed income determined by the AO. Fine, we will not get on to the nuances of whether the penalty proceeding is separate proceeding, because it's a subject in itself to say how penalty goes about. But one facet I want to bring it out. If you look at the old 1922 Act, which spoke about furnishing of inaccurate particulars, they said deliberately furnishes inaccurate particulars or deliberately conceals. That was the word used in the 1922 Act. Then they removed the word deliberately and to see whether the element of mens rea is taken out from penalty. Then Supreme Court in Anwar Ali's case, 76 ITR 696 said, just because the word deliberately has been removed does not mean that the element of mens rea is removed from penalty. Even now to levy penalty, prosecution of course mens rea is there, culpable mental state, and 278E deals about mens rea, existence of that. Even for the penalty provisions, the element of mens rea is embedded, which was what Supreme Court observed in Anwar Ali's case, after the removal of the word deliberately. So therefore, when the now statute nowhere uses the word deliberately concealed, it only talks about disclosed income, undisclosed income, additional income being disclosed. Therefore, in my view, the element of mens rea is still applicable to penalty proceedings, like how it applied from 1922 Act onwards. You also have a position wherein, sorry? No, Dharmendra Textile is on a separate footing altogether. Then if you look at Atul Mohan Bindal's case, 317 ITR 1, what does Supreme Court say in Atul Mohan Bindal? Atul Mohan Bindal says about a separate satisfaction to be recorded for penalty proceedings. The moment you talk about separate satisfaction being recorded,
The moment it goes to satisfaction, it is independent application of mind on the part of the officer coupled with tangible evidence that he can rely upon to make the assessment. So therefore, penalty proceedings, though we want to strictly construe, would have to still pass through the rigors of you having to demonstrate that you had an intention to evade taxes. Otherwise, why will they levy penalty? Because you have a structure. You have tax, you have interest, accelerated interest for paid beyond a particular period, then a show cause notice for penalty, and then he will confirm it. And the fact that till such time the penalty is confirmed by the tribunal, the penalty proceedings will be kept in abeyance, which itself indicates that it will pass through multiple stages. And if the penalty appeal is admitted with the High Court on a question of law, it means it's a debatable issue. On a debatable issue, penalty cannot be levied. So, penalty itself goes on a separate footing insofar as regular penalty provisions are concerned. When it comes to, Sir spoke about 270A and but 270A penalty will not apply to searches under 150 in the new regime of block assessment. The penalty will be under 158 BFA, which was earlier also there. Nemichen's case in the old block assessment is a treatise on how penalty provisions will be, because Nemichen versus CAT, 344 ITR 495 Karnataka High Court. In the tribunal, my senior Mr. Devaraj only had argued it then, way back in 2005, saying that even under the erstwhile 158 BFA, the officer had a discretion not to levy penalty, because the language of 158 BFA2 even now remains perimetered to what was 158 BFA from 95 to 2003. Even now, even in a block assessment proceeding, penalty is discretionary only. The last 5 minutes now I'll touch upon prosecution proceedings before I hand over the stage back to the session chairman. You have the terminologies used in prosecution proceedings about willfully failing to furnish. That's the essence, which means how a deliberately concealed, the term we used in penalty earlier, which was subsequently removed. Even now in 276 CCC, failure to furnish return of income in such cases, I'm talking in specific to such cases, you have willfully failing to furnish the return of income. So what do you mean by the term willfully? Has it been defined anywhere? You only understand the common intent saying you are doing it deliberately out of action, out in common mind. You have a Supreme Court judgment of 1985, Sundaram Pillai and others, 1985, 1 SCC 591, wherein the Supreme Court, dealing with the default in order to be willful must be intentional, deliberate, calculated and conscious with full knowledge of legal consequences flowing therefrom. Only then you can say that it was a willful attempt by you not to file a particular return or to act in a particular way that you have acted. So therefore, when department has to prove that you willfully failed to do something, the onus is higher than in penalty. Penalty, it's only up to say to prove that your state of mind was a guilty mind. Here, they have to go beyond guilty mind to prove that you actually indulged in this activity out of sheer knowledge with complete legal backing. You took a position and therefore you have willfully, just because department has issued a reminder to you and you failed to furnish, does not mean you willfully failed. Willfully failed does not mean notice on 1st January, reminder on 15th January, one more reminder on 20th January. On 21st January they cannot say you willfully failed. It will not pass the test of you willfully failing. You may have 101 reasons. If you look at how Supreme Court decided the penalty in Shadi Lal Sugars, they said there may be 101 reasons for the assessee to admit to an income. Does not mean you have to levy penalty on that. And you also had Supreme Court talking about how every addition cannot result in penalty in Reliance Petro products. And they also gave the benefit of silly mistakes in, I think, Bartley Boy's case, to say if it is a silly mistake, you cannot levy penalty. So therefore, PwC or whatever, one of the big four cases to say, talk about silly mistakes. So therefore, the term, when you talk about prosecution, it stands on a different footing. The procedure is very important in terms of a prosecution proceeding, right from the complaint to establishing it, whether the right person has filed the complaint, whether he had a proper authorization to file the complaint, because 279(1)
talks about the previous sanction of the commissioner. Once you are talking about the previous sanction of the commissioner, it indicates that the commissioner has to independently apply his mind, record a satisfaction as to why the proposal of the subordinate officer requesting for sanction must be accorded to. The same section is used in a transfer pricing proceeding in 92 CA. In 92 CA1, for a reference being made to the transfer pricing officer, the AO has to seek previous approval of the commissioner. Though it is theoretical in nature, saying that there is a monetary limit and how the commissioner has to mandatorily accord permission, for prosecution under 279(1), it cannot be mechanical in nature. It has to stem from the sanction, the application of mind, and the recording of satisfaction. So 279(1) is very important insofar as the terminology is concerned. 278E I'll touch upon and close. 278 talks about the culpable mental state and the mens rea, what we have. For this purpose, a fact is said to be proved only when the court believes it to exist beyond reasonable doubt and not merely when its existence is established by preponderance of probability. So therefore, you have to go beyond human probability and evidence to prove that the assessee had this culpable mental state under 278E, and then read with 279(1) for the commissioner to assume jurisdiction to proceed with the sanction for prosecution. The law will take its own course, and probably I think we have by and large utilized that 70 minutes or 75 minutes what I had. The mind of a child starts functioning when it is born. It stops when it faces an audience, more so an enlightened audience. Thank you for a very patient hearing. Yes, sir. The search is going on. Has it completed or is it going on? The search is completed, you come to the abatement. The moment in the new search regime after 1/9/2024, the block regime extends for 6 years previous to the year of search, continuing till the date of the last of the authorizations is executed. Therefore, if the search takes place, say, on March 28, 2025, the year ended is 24 March, 24, 23, 22, 21, 20 and 19. 1/4/2018 to 31/3/24 is 6 years. Year of search up to March 28, 2025, extendable up to the date of execution of the last of the authorizations. If the last authorization is executed in June 2025, the block period will be 1/4/2018 to 30th June 2025. So for the intervening period, 143(2) or proceedings cannot be started, because you have to file a block return. So what happens once you are a person searched or other person either under 158 BC or 158 BD, the moment that proceeding of search is complete, they issue a notice under 158 BC for you to file a return. Once you file the return, along with the search notice, they are supposed to mandatorily issue 143(2), that is the Hotel Blue Moon's ratio. Dealing with the erstwhile block provisions, Hotel Blue Moon Supreme Court said 143(2) issuance is mandatory even in a search case. So therefore, if they have complied with 158 BC notice, you have filed the return, then to complete the proceedings, they have to mandatorily issue 143(2), failing which it is barred by jurisdiction. The moment it comes into the block period, the return has to be filed for the block and assessment will be completed for the block and not for individual year. Prashant, I have a query which is a bit different from the topic. That is the case of 132 capital A. We can answer. Matter went to GRP, the income tax measure equation. GRP refused to honor that equation because the cash was also deposited in the special court of state excise. So GRP has not executed, not accepted that equation,
But the department has started all kind of process proceeding, taken the summons, issued the summons, and finally 153 assessment is there. My query is this: whether requisition is only by executing a warrant or something like that, or it is complete when the cash is actually comes into the possession of So what happens if you look at 132A, how it operates, and the time limit, how it differs from say 132 or how 132A operates in isolation, it has to first come to the notice. Unlike that you execute a warrant in a search, how do you, the principal director should have in consequence of their own account, because this becomes a central act. So they are supposed to immediately inform the income tax department, and the income tax department will deposit the cash in the PD account of the commissioner. I know. And then the proceedings will begin as if the moment it came to their knowledge. From that point in time, they would begin the proceedings based on the seizure of cash. Because for them, seizure of cash is the starting point for them to begin the assessment for you. No seizure has been done by the income department. It was deposited in the court, ultimately released to the assessee on the ground. Sir, no. The thing is, the police seizes the cash. They have no. Why do they keep the same bundles of cash? Because they want it to be admissible as evidence in the court. Otherwise, if the evidence is not to be treated with the notes but to the offence, the court will order the deposit of the money. Assuming that the court, for whatever reason, civil court orders it to be deposited in some state treasury, doesn't mean the state treasury has got the power to utilize the money or make good of that. The proper procedure there would be to inform the central authorities, because even in an ED raid, even when an enforcement directorate carries out a raid and seizes the cash, income tax only will conduct the proceedings. So just because the money came back to the assessee, you are saying that they were seized and the money came back. You were found with cash and liquor both by local police. They seized the cash. They returned the cash also to you through a local court. That can be information enough for department to initiate a proceeding. To say you had this possession of cash which has come to their knowledge, and to begin a proceeding. Whether can they issue 153A for that, it may not pass the muster of incriminating materials or information. It will be difficult for them to sustain under 153A. My humble opinion, this 132A is not concluded. They have made a requisition, but since the cash has not come to the Budget and Income department, my query is. So if it's not come to them, they will not assume jurisdiction till that time. Till the cash reaches the department or the account of the commissioner in a PD account, department cannot assume jurisdiction. Till then, it's a civil dispute. The moment it enters the department's domain, it becomes an economic offence and income tax department takes over. Please go to the parking. Respected Session Chairman, D.B. Gupta sir, respected Speaker sir, respected delegates and esteemed members, on behalf of organizers, I, C.A. Deepak Kumar, express my sincere gratitude to our Session Chairman, Senior Advocate, Sri D.B. Gupta sir, whose depth of legal knowledge and balanced observations provided valuable directions to the entire session. His guidance added both clarity and perspective to the complex issues surrounding search and seizures under the income tax laws. I also extend my sincere thanks to our guest speakers, C.A. Prasanta GS sir, for his well-researched and analytically rich presentation. His exposition on recording of statements, evidentiary value of admissions and retractions, and the consequential aspect of penalties and prosecutions were insightful and practically relevant. I again thank C.A. Prasanta sir for his practical way to explain the aspects. The session significantly enhanced our understanding of this sensitive and evolving area of tax laws. I thank the organizers and all participants for their contribution to the success of this session. Thank you very much.
Income Tax Appellate Tribunals and Income Tax Settlement Commission. A noted speaker, thought leader, he has held several leadership. बात हो रही है इस कॉन्फ्रेंस में, जो कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिल की हो रही है, उनके 100 साल पूरे हैं और ऑल इंडिया फेडरेशन के 50 साल पूरे हैं। तो एक ऐसा ओकेजन है जिसमें दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपनी उपलब्धियों के बारे में पूरे देश में इसको बता रहे हैं। इस ओकेजन पे मेंबर्स को एड्रेस करना, डेलीगेट्स को एड्रेस करना एक सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और फेडरेशन में एक ट्रेडिशन रहा है कि हम लोग स्पीकर्स को डेवलप करते हैं। हमारे पास नॉर्मली आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स भी हैं और बहुत यंगर मेंबर्स हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है। सो वो पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करके उन मेंबर्स को डेवलप किया जाता है कि वो इन टाइम्स इन फ्यूचर ईयर्स में दे आर दी स्टार स्पीकर्स। उसी कड़ी में आज यहाँ पे गिरधर को चूज़ किया गया कि वो हम लोगों को कुछ जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है उसके बारे में कुछ बताएंगे। गिरधर शुरू करें उससे पहले मैं कुछ चीज़ें मैं भी बोलना चाहूँगा। नई चीज़ हर एक को पसंद है। कोई भी आप बच्चे से लेके बूढ़े तक को नई चीज़ दिखती है तो एक उत्सुकता जागृत होती है कि भाई देखा जाए क्या है। बच्चे को नया खिलौना नज़र आएगा, बहुत जिद होगा कि भाई इसको मुझे लेना है। इसी तरह जैसे हम लोग ग्रो करेंगे, कोई नई चीज़ आती है तो थोड़ी सी एक उत्सुकता होती है कि भाई इसको देखा जाए क्या है क्या नहीं, इसमें क्या इसका पहले से क्या फ़र्क है। अब 2025 का इनकम टैक्स एक्ट जो है वो भी एक नया हम प्रोफेशनल्स के लिए और टैक्स पेयर के लिए दोनों के लिए एक नई चीज़ है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एक्ट है ये क्या है, ये पुराने एक्ट से कितना कुछ अलग है या उसी की कॉपी है या उसमें पुराने एक्ट में कुछ चीज़ों को डिलीट किया गया, कुछ चीज़ें मॉडिफाई कुछ किया गया है। हम लोगों की मेमोरी में जो है कि हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट की तो अक्सर 1922 के एक्ट की भी बात होती है। 1922 का एक्ट जो था 1961 में जाके 1961 में करीब 39 साल बाद जाके चेंज हुआ। 1961 के एक्ट में बहुत अमेंडमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो गए कि एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से कोरिलेट करने में भी डिफिकल्टी होती है। लैंग्वेज इतनी टेढ़ी हो गई, भाई वर्ड यूज़ करो टेढ़ी लैंग्वेज टेढ़ी हो गई कि आपको अगर सेक्शन 1023 सी का जब हम पढ़ने लगते थे तो पता चला कि उसमें शुरू में 10 प्रोवाइजो थे, 10 से 10, 11, 12, 13, 14 पढ़ते पढ़ते 18 प्रोवाइजो हो गए। और जब एक सेक्शन 1023 सी को ही पढ़ते थे तो एक प्रोविजन फर्स्ट प्रोविजो पढ़ा
सेकेंड पढ़ा, थर्ड फोर्थ पढ़ा, तो फोर्थ के बाद जब फिफ्थ पढ़ रहे हैं तो पता चलता है कि हम लोग अरे वो फर्स्ट को रेफर कर रहे हैं, अगेन वी हैव टू गो बैक टू द फर्स्ट प्रोवाइजो टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट फर्स्ट प्रोवाइजो वाज एंड हाउ इट रिलेट्स टू फिफ्थ प्रोवाइजो। इस तरह से बहुत सारे सेक्शंस में ऐसा हुआ कि जहाँ पे कि इट वाज डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, तो एक ज़रूरत थी कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे आ गए जो कि रिडंडेंट प्रोविजंस हो गए। काफ़ी लोगों को याद होगा कि 2010 में एक डायरेक्ट टैक्स कोड आया। डायरेक्ट टैक्स कोड में इनकम टैक्स एक्ट 61 को रिप्लेस करना था। समहाउ कोड आया मगर वो एक्ट नहीं बन पाया। उसके बाद कई कमेटीज बैठी कि टू सजेस्ट क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। उस कमेटी में कल के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर गिरीश आहूजा, वो भी मेंबर थे उसमें, उन कमेटीज़ में मेंबर रहे हैं जिन्होंने जहाँ पे चेंजेस सजेस्ट किए गए थे। फिर उसके बाद अब 2025 में आया डायरेक्ट टैक्स बिल 25, उसको रेफर किया गया सेलेक्ट कमेटी को एंड सेलेक्ट कमेटी ने अपना डिटेल आफ्टर डिस्कशन विद स्टेक होल्डर्स में, मतलब जो टैक्स पेयर हैं या कॉर्पोरेट्स हैं, सबसे जिसको उन्होंने सजेशन इनवाइट किए, ऑब्जर्वेशंस एंड सजेशंस इनवाइट किए और उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी गवर्नमेंट को। वो रिकमेंडेशन, बेस्ड ऑन दोज रिकमेंडेशन, सरकार ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, रिप्लेसिंग द ओल्ड बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन February 25, जो लोकसभा ने पास किया, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा ने पास किया और प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गई उसको 21 अगस्त 2025 को प्रेसिडेंशियल असेंट मिल गई। नया जो एक्ट है ये दिस विल एप्लीकेबल होगा 1/4/2026 से। कुछ एक दो चीज़ें ही मैं बात करूँगा क्योंकि बाकी दो गिरधर विल स्पीक। एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल चेंज, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर की जगह टैक्स ईयर आना, और फाइनेंशियल ईयर जो है दैट विल बी द टैक्स ईयर। द वर्ड फाइनेंशियल ईयर इज समथिंग जो कि हमारे बहुत जगह अदर लेजिस्लेशन में डिफाइंड है, जो यूज़ किया जाता है। कुछ लोगों का सजेशन ये था कि ग्लोबली कैलेंडर ईयर इज टेकन एज द टैक्स ईयर और द असेसमेंट ईयर, तो इसको भी कैलेंडर ईयर से को ही टैक्स ईयर बनाया जाए या असेसमेंट ईयर बनाया जाए। मगर हमारे इंडियन लेजिस्लेशन में या इंडियन स्कीम्स में या वर्किंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ फाइनेंशियल ईयर यूज़ किया जा रहा है। सो यही डिसाइड हुआ कि फाइनेंशियल ईयर को ही हम अप्रैल टू मार्च ही रखेंगे इसका ईयर, हम उसको कैलेंडर ईयर नहीं रखेंगे। सो एक पहली चीज़ ये है कि टैक्स ईयर, अब टैक्स ईयर 1/4/26 से शुरू होगा, सो 26-27 टैक्स ईयर 26-27। इसी तरह हमारा जो प्रीवियस एक्सेप्ट के एक्ट में जो हमारा प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 26 है, उसका असेसमेंट ईयर होगा 26-27। तो यहाँ पे 26-27 दो जगह आ रहा है, एक होगा असेसमेंट ईयर 26-27 और दूसरा टैक्स ईयर 26-27। ये दोनों डिफरेंट पीरियड को रेफर करते हैं। टैक्स ईयर रेफर्स टू 1/4/25 to 31/3/26 and tax year 26-27 1/4/26 to 31/3/27। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि 1961 का एक्ट जो था वो रिपील किया गया, तो क्या हमें 1961 का एक्ट भूल जाए? शुड वी स्टार्ट, हम अनलर्न करें कि जो 1961 का एक्ट था उसका क्या करें? कई लोगों ने करेगा ये तो अपनी लाइब्रेरी में रख दीजिए, ऐसा नहीं। ये हम ये देखेंगे कि काफ़ी टाइम तक एटलीस्ट अगले नेक्स्ट 6-7 साल तक आपको 1961 का एक्ट और 2025 का एक्ट दोनों ही
यूज करना पड़ेगा। सेक्शन 1 में आया है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द 25 एक्ट एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/26 और हम आ जाते हैं सेक्शन 536 विच इज रिपील एंड सेल। वो उसमें ये कहा गया है कि 1961 के एक्ट की क्या क्या चीज़ें जो हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट द एक्ट इज रिपील्ड, क्या क्या चीज़ें अभी भी एप्लीकेबल होंगी और किस मॉडिफाइड मैनर में और एप्लीकेबल होंगी। सो हमें 1961 का एक्ट भी पढ़ना है, 1900 का भी रखना है, 2025 का एक्ट वो भी रखना है। एक कंफ्यूजन ये एक बड़ा कंफ्यूजन रहेगा इसमें कि जो नया लेजिस्लेशन आया उसमें जूरिस्प्रूडेंस कैसे डेवलप हो रहा है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भी पता चलेगा। मगर पुराने लेजिस्लेशन को कि उसकी एप्लीकेशन अंडर द 25 एक्ट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और सबसे पहले जब हम लोग शुरू करते हैं तो सीधा सेक्शन 1 के बाद हमें सीधा अब सेक्शन 536 पे जाना चाहिए। पहले चीज़ें आप वो बीच की चीज़ें भूल जाइए पहले फॉर द टाइम। पहले आप देखिए कि जी 1961 के एक्ट की क्या क्या चीज़ें आगे चलेंगी वो समझना बहुत जरूरी है और वो दिमाग में रखना है। फिर जब हम रिलेवेंट प्रोविजन सिमिलर प्रोविजन 25 के एक्ट में आएंगे तो वहाँ पे हमें कंपेयर भी करेंगे कि भाई 25 के एक्ट में क्या है, 61 एक्ट में क्या था और 25 का एक्ट कौन कौन से 61 के कौन कौन से प्रोविजंस को एक्सटेंड कर रहा है कि 61 के एक्ट की एप्लीकेबिलिटी वो जो है वो 25 के एक्ट आने के बावजूद भी चलेगी। ये आई थिंक गिरधर विल एक्सप्लेन इन डिटेल इन दिस। आई गिव ओवर टू यू गिरधर। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम देता हूँ। किसे देता हूँ पैगाम? आपको, जो हमारे ऑडियंस है, जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, बिकॉज ये सर्च सीजर इतना जो मतलब कठिन विषय और इतनी सीरियसनेस के बाद मुझे लगा, और श्रीवास्तव जी जैसे समझा रहे थे तो थोड़ा देता हूँ उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। किसकी दी हुई है दौलत? ये दौलत दी हुई है इस इनकम टैक्स एक्ट की। मेरे को लगता है हमारे भाई जो सारे टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनके पास पैसे रुपये ये वो, उसको मैं दौलत नहीं कह रहा। जो नॉलेज, जो एक्यूमेन, जो क्लाइंट जिस लिए हमें खोजता है तो वो है दौलत हमारी कमाई हुई। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है बहना, दिए का काम है जलना। जो एक्ट है वो तो बदलते रहेगा, जो डिपार्टमेंट है वो क्वेश्चन पूछते रहेगा, बट हम है दिए हमें को एज ए टैक्स प्रोफेशनल हमेशा चलते रहना पड़ेगा क्लाइंट के हित में, देश के हित में। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। थैंक यू AIFTP, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार इनकम टैक्स बार एसोसिएशन, बिहार कॉमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन, हमारे चेयरमैन साहब मिस सौरभ साहब और काफ़ी NEC के मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, मेरा अपना AIFTP, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपके बीच कुछ प्रस्तुत करने का, जितना भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ। श्रीवास्तव जी की बात को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, यस, यंग प्रोफेशनल्स आगे आने चाहिए और उनको नर्चर करने का जो बीड़ा AIFTP ने अपने 3 मोटो से उठाया है, एजुकेशन, एक्सीलेंस एंड एथिक्स, उसको लेके साथ चलने का समय है। सो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और सारे आप लोग ऑडियंस का जो पेशेंसफुली मुझे सुन रहे हैं। एक बार सबके मुंह पे हंसी आ गई है, तो एक बार जोरदार अपने लिए तालियां बजाएं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गिरधर जी, आपको काव्य पाठ करने नहीं बुलाया था यहाँ, आपको तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 की बात करने बुलाया गया था।
तो आप जो है सब्जेक्ट से भटक गए हैं। हमने मांगा कुछ और था और आप प्रस्तुत कुछ और कर रहे हैं। यस, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। हमने मांगा था सरकार से कि ये जो लिटिगेशन है, ये जो लिटिगेशन हम 1961 से देख रहे हैं और ईयर बाय ईयर जो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, जो सर्च में ये सारी चीजें जो प्रशांत साहब ने कहा कि रिट्रैक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस सर्कुलर के बाद वो हो जाएगा, ये सर्कुलर जाओ इशू करेगा, वो सर नोटिस फाओ इशू करेगा। वी आर बिफोर दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ हेक्सावेयर। ये जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, दिन का मुद्दा जो हमारे कोलकाता से होके और बॉम्बे से ब्रांडिक्स मॉरिस और टाटा के मेडिकल सर्विसेज के होते हुए और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये सारी चीजों से, ये सब जटिलताओं से हमें निकालिए, इन सबको सरल करिए कि क्या मार्जिनल मैक्सिमम टैक्स रेट लगा रखा है और फिर उसको 4 हेड्स 5 हेड्स और फिर इसमें करेंगे नहीं करेंगे। और हमने कहा कि हमने शेयर्स इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाया है, तो आप हमें कैपिटल गेन में नहीं, हम आपको लेके जाएंगे उठा के कहाँ, रेसिड्यूरी हेड में 68 में ले जाएंगे आपको। हम पेनी स्टॉक करके जितना सेल प्रोसीड है वो सारा जोड़ देंगे और कुछ नहीं सुनेंगे। सर हमने प्रॉफिट कमाया है, सेल प्रोसीड के अगेंस्ट में हमने कॉस्ट पेमेंट किया था, वो हमारा टैक्स पेड मनी था। नहीं, वो आपका सेल प्रोसीड धारा 68 में, ठीक है साहब मान लेते हैं। नहीं, उसके साथ 150 BBE भी लगाएंगे। ये क्या होता है? ये 60% टैक्स, सरचार्ज, पेनल्टी और बहुत सारी चीज आपको उसके साथ गिफ्ट में दे दी जाती है, तो इसको सरल कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, इसको उठा के 1961 को डाल दिया चैट जीपीटी में, ऐसा कहते हैं चैट जीपीटी में डाल दिया। और क्या निकला, कुछ सेक्शन नंबर चेंज हो गए और एक प्रॉम्प्ट दिया, बोला इसको सरल कर दो। सरल कर दो कैसे? बोला इस पे 2025, तो बोला चैट जीपीटी आने के पहले नहीं हो पाया था सर। 2010 में श्रीवास्तव साहब ने कहा मेहता जी कि डायरेक्ट टैक्स कोड आया था, बहुत कुछ मंथन हुआ लेकिन चीजें वहीं की वहीं रह गई। लेकिन चैट जीपीटी ने कर दिखाया और उन्होंने सारे सेक्शंस आपको नंबर बदल दिए और कहीं पे मे को सेल कर दिया, ईच को एम कर दिया, कॉमा को फुल स्टॉप में बदल दिया। और उसी की लड़ाई हम लड़ते आए हैं आज तक कि कॉमा को फुल स्टॉप करने से हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अगर आप नोटिस में 2 एक्यूरेट पार्टिकल्स और उसको अगर मान लीजिए नहीं, अगर पेन से काटोगे भी तो हम तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, ऐसे बिल्डर्स के केस में और मंजूनाथा कॉटन मिल्स, हम सब जानते हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ, कुछ सेक्शन बदल गए, बट उस सेक्शन में क्या हुआ कि अल्टीमेटली चीज वो की वही है। हमारे LK केजरीवाल साहब जो हैं वो धड़ल्ले से सेक्शन रात को नींद में सोते वक्त भी बताते थे, कौन आ जाता था। अब क्या हुआ, सरकार ने रोजगार बढ़ा दिया। क्या किया रोजगार, बोला उनको एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा। बोला मैं प्रोविजन सारे बता देते हूँ, सेक्शन नंबर मेरे असिस्टेंट से पूछ लेना। गिरी सऊजा साहब जो टैक्स इंसाइक्लोपीडिया, वो बेसिकली सारा लॉ सारा उनको रटा हुआ, किताब की दरकार नहीं है। मैं इनफैक्ट देख रहा था उनको दूसरे वीडियोस पर, इवन नए सेक्शंस भी वो जो है धड़ल्ले से बोल रहे थे। हम लोग कल उनको विटनेस करेंगे, साहब वो आ रहे हैं। तो ये सेक्शन बदल गए, तो जो कमाया हुआ इतने सालों का परिश्रम और सब कुछ वो वहीं का वहीं रह गया। और बेसिकली सेक्शन सारे बदल गए, चीजें बदल गए, जो चीजें एग्जम्पशंस और सारी थी सेक्शन 10, 11, 12 वो शेड्यूल्स में चली गई, कुछ सेक्शंस में सीमित रह गई। तो ये चीजें लेकिन वही है जो हम लोग पिछले 1.5-2 सालों से या 1 साल से सुन रहे हैं कि नहीं इसमें कोई चेंज नहीं है, वो सारी चीजें वही है। और आपको पता मेहता साहब ये हुआ क्यों? आपके कारण, मेहता साहब के कारण, केजरीवाल जी के साहब के कारण और श्रीवास्तव साहब और ऐसे दिग्गज जिनको सरकार सुनती है, वो जाते थे मिनिस्ट्री में, बोले साहब देखो ये कंपनीज एक्ट आपने 2013 में चेंज कर दिया। बोला हाँ कर दिया, नया आ गया, हम तो नहीं प्रैक्टिस करते, हम इनकम टैक्स करते हैं। बोले लेबर कोड आपने चेंज कर दिया पूरा, तो हाँ कर दिया। बोला हमारा वाला नहीं किया। बोले GST देखिए आपने 2017 में पूरा का पूरा नया लाया है। तो GST में इन्होंने क्या किया, एक्साइज, कस्टम, स्टेट टैक्स सबको बना के खिचड़ी कर दिया। लेकिन जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं उनको पता है कि चीज वही है घूम फिर के। तो बोले कि फिर गए, बोले सर देखिए GST भी चेंज हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया,
हमारा वाला नहीं हुआ, अलग कर देते हैं, तुम्हारा वाला भी कर देते हैं। और उन्होंने क्या किया, इनकी सुनी और सुनते हैं, बिकॉज ये इतने नॉलेजेबल और इतने मान लीजिए रिप्रेजेंटेशन और करते हैं, तो इनकी सुनी और इनकम टैक्स एक्ट आपको उपहार स्वरूप मिला, जो कि 2025 एक्ट बन के हमारे सामने आया और आने वाले कुछ दिनों में लागू होने वाला है। बट उसके पहले 1 फरवरी को, जो कि रविवार है, और मेरे को लगता है मुझे करेक्ट करेंगे कि आज तक के इतिहास में पहली बार छुट्टी के दिन संडे को हम लोग देखेंगे कि यूनियन बजट प्रस्तुत हो रहा है। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण को प्रस्तुत करेगी और हम क्या देखेंगे उसमें, एक एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो मरने जा रहा है कुछ दिनों बाद ही, उसमें अमेंडमेंट होंगे, और एक एक्ट जो जिंदा होने जा रहा है उसमें अमेंडमेंट होंगे। तो एक ही साथ जो एक गोइंग टू डाई एंड वन विच इज गोइंग टू बॉर्न विल सी द अमेंडमेंट इन बोथ ऑफ देम। सो ये पहली बार होगा और उसके बाद भी मरने के लिए वो मर जाएगा। सेक्शन 536 की बात करी श्रीवास्तव साहब ने और मैं उसको डील करूंगा, बिकॉज मैंने देखा प्रशांत साहब जो है सर्च सीजर की कठिन बातें कर रहे थे और गिरीश आहूजा साहब कल जो है कैपिटल गेन्स की और मुझे जो बताया गया है, और सेक्शन 148 जो रीअसेसमेंट, इन चीजों की बातें करेंगे। बट मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि ये सारी चीज हम लोग समझें, उसके पहले नए युग से, पुराने युग से नए युग में कैसे चले, कैसे पहुंचे। जब एक सेक्शन सरकार ने बदला था खाली रीअसेसमेंट का, जो 148 से चेंज करके 148 और 148 ए और डाल दिया था कि जो आप पहले बाद में करते थे, वो जीके एंड डाइवर्स ने सुप्रीम कोर्ट में जो बोला वो आप एक्ट में डाल दीजिए और वो पहले करिए, और किसी को भी राइट ऑफ उसका जो रीओपनिंग है, जो इंफॉर्मेशन है वो पहले बता दीजिए, और जो फिट केस है उसी को आगे लेके जाइए उसी में। और 90,000 केस जो सुप्रीम कोर्ट के आशीष अग्रवाल के जजमेंट में लिखा हुआ है, और 90,000 लोग तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर थे और कितने नहीं थे हू नोज। तो उसमें आशीष अग्रवाल हो गया और फिर उससे भी बात नहीं बनी, नोटिस ही खाली गलत था, कुछ और मान लीजिए पुराने एक्ट में नोटिस था, नए एक्ट में था, डेट था, आगे था, पीछे था, उससे भी बात नहीं बनी। बहुत सारा मंथन हुआ और फिर हम लोग दूसरे बार सुप्रीम कोर्ट चले गए और दूसरी बार फैसला हुआ, ठीक है, और फिर हम लोग वापस आए। कुछ कुछ केसों में अभी भी सहमत नहीं है। डीएसजी और एएसजी साहब जो जो अपीयर किए कहते हैं कि 15-16 हमने नहीं खोलना है, और फिर उन्होंने इंटरव्यू किया कि नहीं 15-16 में खाली पहले 3 साल है वो हमने कंसीड किया है, सारों को नहीं किया है। तो इलीगल बैटल चलेगा और उसके लिए हम और आप हैं और प्रोफेशनल्स। इसके साथ मैं आपको आगे लिए चलता हूं। मेरे को लगता है कि 536 जो सेक्शन है उसको हम लोग कैसे बेसिकली समझेंगे। 536 में साहब ये श्रीवास्तव साहब कह रहे थे बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 1922, और एक बात और लगती है मुझको कि हम लोगों ने सबने, मुझे लगता है जो भी यहाँ आज बचे हुए हैं उन्होंने कोविड देखा है, वन ऑफ द डिफिकल्ट टाइम्स इन दिस मीन्स अर्थ, एंड अगेन आई फाइंड ऑन अ पॉजिटिव नोट दैट वी आर मोस्ट प्रिविलेज्ड पर्सन, वी आर मोस्ट प्रिविलेज्ड मीन्स ह्यूमन बीइंग, जो हम प्रजाति हैं यहाँ, उन्होंने जो इतना बदलाव और इतना चेंज ओवर हमारे समय में देखने का समय मिला। कुछ लोग हमारे यहाँ 1922 के समय थे, हो सकता है कुछ 1961 के समय थे, बट ये जो लेबर कोड चेंज हो रहा है, जीएसटी हो रहा है, कंपनीज एक्ट हो रहा है, और फाइनली ये इनकम टैक्स एक्ट 2025, तो ये हम प्रिविलेज है कि हम इसको विटनेस कर पा रहे हैं, हमारे सामने ये सब हो रहा है और हम इस लीगेसी को कहीं ना कहीं पार्ट आगे ले जाने के लिए। तो ये बेसिकली जो पहला एक्ट चला था वो 39 साल बाद चेंज हुआ, 64 साल ये चला, एंड गॉड नोज ये 2025 एक्ट कितने साल चलेगा।
तो धारा 536 की हम लोग बात कर रहे थे, जिसका पहला सेक्शन कहता है, सब सेक्शन, कि इनकम टैक्स ऑफ 1961 रिपील हो जाएगा। रिपील हो जाएगा तो जो पेंडिंग चीजें हैं, या जो बेसिकली 1961 जो ग्रैंड फादरिंग जिसको कहते हैं, या जो एक टाइट लॉ है कि जो बेसिकली जिस समय आपका बेसिकली जो लॉ एप्लीकेबल रहेगा, आप आगे भी फ्यूचर में प्रोसीडिंग्स कुछ भी करेंगे लेकिन लॉ वही रहेगा। अगर आज आप मर्डर आज करते हैं तो आज जो सजा होगी वो आपको बेसिकली लगेगी। ऐसा नहीं कि आपका फैसला 2030 में आएगा तो 30 में अगर सजा 50 साल हो जाए या और कुछ हो जाए तो वो आपको लगेगी। तो उसी के बेसिस पे इन्होंने कुछ 22 क्लॉजेज इसमें दिए हैं, जिसको रिपील्स एंड सेविंग का सेक्शन कहा गया है, जो अत्तो साहब इसका डिस्कस कर रहे थे। तो 22 क्लॉजेस में बेसिकली इन्होंने उसको 1961 का जो प्रोसीडिंग्स है उसको कैसे बचाया जाएगा और कैसे उसकी दरकार नहीं है वो बताया। मैंने स्पेसिफिक कुछ सेक्शंस लिए हैं, जो कि सेक्शन क्लॉज सबसेक्शन 2 का क्लॉज सी, The provisions of this repealed income tax act shall continue to apply to any proceedings pending on the date of commencement of this act, and to say any proceedings initiated on or after. तो ये जो बात कर रहा साहब, ये पेंडिंग की बात कर रहा है और जो बाद में इनिशिएट होगी दोनों की एंड लगा है बीच में। तो इसका मतलब है कि ये जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं की जो पेंडिंग है और फिर री इनिशिएट होगी, वो कह रहे हैं shall be carried out as per the procedure specified in the repealed income tax act। तो जो हमने बात करी कि भाई 1961 वाले एक्ट में जब 2021 में अमेंडमेंट हुआ तो नोटिस जो है वो नए बेसिकली फॉर्मेट में आनी चाहिए थी हमें, और इसलिए सारी नोटिसेस वो क्वैश हो गई है जो कुछ है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ अगर आपका रीअसेसमेंट होगा जो पुराने सालों के लिए होगा, 1/4/2026 के पहले के सालों का, जिसको हम लोग असेसमेंट ईयर कहेंगे, और उस सब के लिए बेसिकली आपको जो पुराने धारा में पुराने जो बेसिकली 148, 148A और उन सब का पालन करना पड़ेगा, और नोटिस का फॉर्मेट एंड एवरीथिंग सारा वही रहेगा। हम लोग सब जानते हैं कि ये एक्ट आ गया है, इनैक्ट भी होने जा रहा है, हम लोग जनवरी के ऑलमोस्ट मध्य में पहुंच चुके हैं, लेकिन रूल्स एंड फॉर्म्स का अभी तक विमोचन नहीं हुआ, अभी तक पता नहीं है, गॉड नोज उन्होंने बना रखा है या बना रहे हैं, या कब हमको दिया जाएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारी चीज़ निर्भर करती है कि बेसिकली क्या रूल्स रहेगा, क्या फॉर्म्स रहेगा। बट जहां हम लोग खड़े हैं वहां पे डॉक्टर साहब जो पुराने रूल्स और फॉर्म्स हैं पुराने सालों के लिए वही एप्लीकेबल होगा। तो इसीलिए उसमें मेरे को लगता है कि बट अब डिपार्टमेंट जो टेक्निकली जो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो कंप्यूटर सिस्टम में चल रहा है, उन्होंने उस तरह सॉफ्टवेयर को कैसे मॉडिफाई किया है, 2 मॉड्यूल चलाएंगे, क्या करेंगे, बेसिकली पुराने एक्ट का पुराने में नोटिस जाएगा, नए में जाएगा, ये चीज़ें जब तक चालू नहीं होता है और कुछ नोटिसेस नहीं आती है तब तक कहना मुश्किल है, और उसके बाद ही पता चलेगा। तो ये बेसिकली जो पुराने इनिशिएट होंगे पुराने सालों के लिए प्रोसीडिंग्स की बात है। उसके बाद जब प्रोसीडिंग्स के बाद पेनल्टी आती है तो क्लॉज डी में इन्होंने पेनल्टी का डिस्कशन किया है। तो पेनल्टी के बारे में ये कह रहे हैं कि पुराने सालों की पेनल्टी जब डिसाइड होगी तो पुराने तरह से लगेगी। एकदम सही बात है कि जो सजा जिस समय जिस साल के लिए ऑलरेडी लिखी जा चुकी है वो नया नहीं डिसाइड हो सकता है। तो सपोजिंगली आपकी कोई अपील चल रही है, आपके यहाँ एक असेसमेंट हुआ, उसने असेसमेंट करके आपको 156 का डिमांड नोटिस दे दिया और 274 रेडविट 271 1C और 271A का कुछ एक पेनल्टी नोटिस दे दिया। आपने तुरंत एक अपील फाइल करी 30 दिनों में और एक स्टे लगा दिया कि बेसिकली इस पेनल्टी की नोटिस को आप कीप एन एबियंस रखें जब तक हमारा बेसिकली अपराध या किसी तरीके का जो गलत एडिशन हुआ है, सही एडिशन हुआ ये निर्धारित नहीं हो जाता है माननीय कमिश्नर अपील साहब के द्वारा या फिर लर्नेड ITAT के बाद द्वारा और फिर हाईकोर्ट के द्वारा, तब तक इसको बेसिकली कीप इन एबियंस रखा जाए। तो अब सपोजिंगली कीप इन एबियंस आपका जो है निपटारा होता है 2032 में, तो 2032 में तो 2025 का एक बहुत आगे निकल जा चुका होगा और कहाँ से कहाँ नई चीजें आज जी चुकी होगी।
बट उस समय भी जो आपकी पेनल्टी जिस तरीके से, जिस प्रोसीजर में, जिस फॉर्म में, जिस फॉर्मेट में आज लगती है 1961 एक्ट में, उसी तरीके से लगेगी। तो 1932 तक जो श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि काफी लोगों ने इनको एडवाइस दिया कि इसको लाइब्रेरी में रख दो, साहब पता नहीं है कि पुराने एक्ट कब तक मान लीजिए सल्टेंगे या क्या होगा। तो ये 1961 अभी चलने वाला है। तो हमारे जो पुराने और मान लीजिए जो भी एक्सपीरियंस्ड और दिग्गज और हमारे गार्डियंस हैं, केजरीवाल साहब हैं, जेपी अग्रवाल साहब हैं, सारे सब जो भी, वो हमारे लिए उतने ही एक्सपीरियंस और उनसे हमें काम लेते रहेंगे जैसे कल लेते रहे। बिकॉज 1961 कहीं भी चला जाए ये बना रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो पेनल्टीज उसी वे में, प्रोसेस में वो होगी। फिर ये जो उसके बाद मैं बात कर रहा था कि कोई अपील हमारी पेंडिंग है सीआईटी अपील के पास या आईटीएटी के पास या हाईकोर्ट के पास, या कोई अपील एप्लीकेशन या रिवीजन या रिव्यू जो 263 264 में अभी हुआ करता है। ये सारी चीजें अगर पुराने सालों की है, सपोजिंगली हमारे एंड ऑफ दिस वर्ज ऑफ सपोजिंगली 2025 अभी मार्च में या मार्च 2026 में हो रहा है, उसके लिए हमारे पास पुराने एक्ट में जो 30 दिनों का, 60 दिनों का और एज फॉर एज 264 एक साल का समय हमारे पास है। सो वो बना रहेगा और हम नए में नहीं जाके पुराने एक्ट में ही सारी चीजों को, बिकॉज वो चीज अभी पेंडिंग है और उसके लिए हम लोगों को पुराने एक्ट को ही लेके चलना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो क्लॉज 2G में दिया गया है, रिफंड फॉर इंटरेस्ट, कि पुराने सालों के, मैं एक बार पढ़ देता हूं, वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू एनी टैक्स ईयर बिगिनिंग बिफोर द 1 अप्रैल 2026, मीन्स पुराने समय की बात की जा रही है जो 1961 एक्ट से रिलेटेड है। A refund falls due after commencement of this act or default is made after such commencement in the payment of any sum due under such proceedings. The provisions of this act relating to interest payable by the central government on the refunds and interest payable by the SSC for default shall apply for the period after commencement of this act. तो ये कहीं ना कहीं जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे उससे भिन्न बात है, एक डिपार्चर है कि बेसिकली जो अभी तक कहा जा रहा था कि हम 1961 की बातें मानेंगे, वहीं का प्रोसीजर, वहीं की सारी चीजें करेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि आपका अगर रिफंड या डिपार्टमेंट को आपसे डिमांड अगर नए एक्ट आने के बाद और बेसिकली आपको निकलती है, तो वो नए एक्ट में जो रेट होगी, नए एक्ट में जो प्रोसेस होगा, नए एक्ट में सपोजिंगली आपने अभी जो 220 की रिकवरी करी जाती है या जो कुछ है वो हम नए एक्ट में करेंगे और वो सारी चीजें नए एक्ट में जिस तरीके से है वो नए एक्ट में लागू होगी। तो ये थोड़ा सा एक चेंज है। सपोजिंगली कल के दिन ये ले आते हैं कि उसकी जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होगी, अभी जो 1% पर मंथ या 0.5% पर मंथ होती है, तो वो नए एक्ट में नए तरीके से जो चीजें होंगी वो नए एक्ट में अगर आपको पता चलती है कि आपका 143(1) या 143(3) जो असेसमेंट सपोजिंगली फाइनल होता है 2027 में या 28 में, या 148 का असेसमेंट फाइनल होता है 2030 में, तो वो सारी चीजें उस समय के बाद से रन करेगी और उस समय का जो इंटरेस्ट और सारी चीजें हैं वो अप्लीकेबल होगी। यद्यपि जो कि आपका असेसमेंट या रीअसेसमेंट कुछ भी पुराने एक्ट के हिसाब से हुआ होगा, तो ये थोड़ा सा एक चेंज है और डिफरेंस है विच वी मस्ट नोट, आई बिलीव। अब यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, अप्रूवल्स, ये सारी जो चीजें हैं वो बनी रहेंगी 1961 एक्ट में जो भी इशू करी गई। अब बात आती है जो प्रशांत सर कह रहे थे कि बेसिकली जो 500 ग्राम एक मैरिड लेडी के लिए, 250 ग्राम अनमैरिड लेडी के लिए और 100 ग्राम एक बेसिकली मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, तो वो क्या नोटिफिकेशन को 2025 में फिर से देना पड़ेगा सरकार को? बोलेगा नहीं नहीं, वो तो जो 1961 में था, आपके यहाँ अधिकारी आएगा और कहेगा कि 2025 के लिए तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है।
तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे 536 में डाला है कि नहीं, वो जो सर्कुलर नोटिफिकेशन और जो सारे अप्रूवल्स हैं वो सारे बने रहेंगे। तो हम लोग बहुत जोरदार तरीके से कहेंगे कि नहीं, वो जो सारी चीजें हैं, वो जो सर्कुलर है, वो जो 20% डिमांड का पेमेंट करके हम CIT अपील में डिमांड का स्टे करा सकते हैं, वो जो ज्वेलरी बेसिकली सीज नहीं होने वाली है, वो जो जाओ पाओ का नोटिफिकेशन है जो 28 मार्च 2022 को आया था, वो सारी चीजें बनी हुई हैं। और चाहे एक्ट बदल गया, उसके नंबर बदल गए हों, बट सर्कुलर्स और उन सर्कुलर्स के बेस पे उनके बेसिकली चीजों को लेके जो कोर्ट्स ने डिसाइड किया है, मैं इसको थोड़ा और आगे ले जाता हूँ कि जो जजमेंट हमें मिले हैं, आदरणीय रस्तोगी जी साहब जो काफी जजमेंट और काफी SSC के हित में उन्होंने लैंडमार्क बेसिकली जजमेंट उनके, वो कल भी 2025 के बाद भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने बेसिकली जो पहले थे। 61 एक्ट। तो मैं सर बात कर रहा था सर्कुलर नोटिफिकेशन की, ये सारी जो चीजें थी वो बेसिकली 1961 में जो थी, और हमें ऐसा लगता है कि आज तक कोई रूल्स फॉर्म्स ये चीजें नहीं आई हैं। तो जो भी सर्कुलर में बात कर रहा था कि चाहे 1910 जो 1916 बेसिकली जो 1914 जो 20% का सर्कुलर है, या ज्वेलरी का सर्कुलर है, या अदरवाइज जो डिफरेंट अप्रूवल्स हैं वो बने रहेंगे बेसिकली। या पिक्यूनरी जुडिक्शन की हम बात करते हैं, बहुत सारी टेरिटोरियल जुडिक्शन की बात करते हैं, तो वो unless they come specifically and say that whatever we have said in repeals and savings for this particular year, that will not apply, and means whatever for the new this thing will be applied. But I am sure for the earlier years obviously those notification circulars will keep on this thing, and for new years also, till they does not notify something new for a particular subject, supposingly for demand stay or otherwise, the old circulars notification, this will means keep on going. Clause U talks about any scheme. We have talked about circulars, notifications, approval, but they are given the faceless scheme, how the faceless assessment will be done, how the faceless appeals will be done, what is the basically role of the JAO, what is the role of the FAO. There are 4 wings, technical unit, assessment unit, and means otherwise. So how they will function, it is all there in the scheme. What they are saying that those scheme will remain as it is, as good as the time has traveled. The Income Tax Act 2025 is there. The assessment years become tax year, but for 2027 also, 27-28 also, the scheme will remain same. The assessments and appeals will be keep on going in the same manner. And finally, means वो होता है ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो हम लोगों ने इतना बेसिकली चीजों को पकड़ के, और जो हमारा काम है कि कॉमा, फुल स्टॉप और सारी चीजों को लेके और एक डिस्कशन अल्टीमेटली जो एपेक्स कोर्ट तक जाता है। तो यहाँ पे सबसेक्शन 3 में इन्होंने कहीं ना कहीं उसको क्लैरिफाई करने का ट्राई किया है कि ये जो हम टैक्स ईयर जब बोलेंगे, वेयर एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट to any tax year commencing on the 1st April 2025 or before to that, for any year that will be understood to be said to be previous year, कि किसी नोटिस में किसी बेसिकली आने वाले प्रोसीडिंग्स में और वो पुराने साल की डील कर रहे हैं और वहां पे उन्होंने लिख दिया टैक्स ईयर, आप दूसरे दिन संजीव अनवर साहब लिख के उनको एक बड़ा ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट आई वुड लाइक टू रेज दिस ऑब्जेक्शन दैट there is no tax year called in the Act 1961, so you withdraw your notice and there is no means on the client. So वो कह रहे हैं कि टैक्स ईयर मैं जब भी बोलूंगा तो आप प्रीवियस ईयर उसको समझना, और उस साल के जो असेसमेंट ईयर जो अगला साल है उसके बेसिस पे कार्रवाई होगी। तो ये बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन क्लैरिटी इन्होंने दी है यहाँ पे। सिमेट्रिक एम्बिगुइटी क्या होता है?
सॉरी, सिमेट्रिकल बेसिकली जो मान लीजिए कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल जो एनालॉजी है कि भाई टैक्स ईयर, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर सारे को हम लोग किसी न किसी तरीके से एक ही वे में समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर बोल लीजिए, प्रीवियस ईयर बोल लीजिए, टैक्स ईयर बोल लीजिए। बट जब टैक्स की हम लोग बात करते हैं, जब रेवेन्यू लॉ की बात करते हैं, तो जो कहा गया उसका हम लोग स्पेसिफिक बेसिकली इंटरप्रिटेशन हमको करना है और उसको हम लोग कुछ और नहीं समझ सकते हैं। तो उसको इन्होंने बेसिकली जो सिमेट्रिकल दिस्टिंग है उसको क्लैरिफाई किया है इंटरप्रिटेशन के थ्रू कि बेसिकली हम जब टैक्स ईयर बोलेंगे, दो दैट इज सिमेट्रिकल, you cannot means read a tax year by previous year, but in this case you have to means understand that if when I am talking about tax year for an earlier year when the 1961 operates, then you will have to understand that as a previous year. और हम लोग 1-1.5 साल से करीब सुनते सुनते कहीं ना कहीं ये एक अभ्यस्त हो गए हैं कि बेसिकली इसमें कुछ चेंज नहीं है। जो भी 1961 वाले साल में था वो कहीं ना कहीं सेम टू सेम और जो सारी चीज़ें वही है। हम लोग कहीं ना कहीं पुराने और नए सेक्शंस को पढ़ देते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि शोले बोल के एक पिक्चर आई थी, तो वो मुझे वाकया कहीं ना कहीं याद आया और मैं उसको थोड़ा चाहता था इससे रिलेट करूं। तो जो शोले पिक्चर आई उसमें एक सीन था, बॉर्डर, तेरा क्या हुआ कालिया? तो उसमें एक सीन था, मैं एक बार जस्ट आपके सामने प्ले करना उसी की है पर खूब है, सुनेगा? मतलब आवाज आ रही है? कहीं हमारी भाभी की चिट्ठी तो नहीं है? उसी की है पर खूब है, सुनेगा? मतलब कहीं वो वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं यार, वो वाली बात यहाँ कहाँ। लिखती है करनाल वाले मामा जी गुजर गए, बाकी सब ठीक है। गाय ने बछड़ा दिया था, पैदा होते ही बेचारा मर गया, बाकी सब ठीक है। 4 दिन हो गए मुन्नी का बुखार नहीं उतर रहा, बबलू टांगे से गिर पड़ा, उसकी हाथ की हड्डी टूट गई, बाकी सब ठीक है। साडा मुंडा मेरी इतना 4 साल का हो गया। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत कुछ हुआ लेकिन बाकी सब ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 2025 के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम लोग 1-1.5 साल से ही सुन रहे हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ साहब, वो नॉर्थ ईस्ट स्टैंडिंग को इररिस्पेक्टिव कह दिया खाली, बाकी सब ठीक है, वो पुराना वाला ही है। नहीं नहीं वो जो 10, 11 और 12 में थे उनको पीछे टेबल में डाल दिया है, जिसमें हमारे मेहता साहब एक्सपर्ट हैं थोड़े, तो बोले उसमें उनको टेबल में डाल दिया, बाकी सब ठीक है। बोले टीडीएस में कुछ नहीं हुआ है, वो जो लिखा हुआ था ना, जिसको हम लोग पूछते थे इंटरव्यू में, संजीव साहब के पास एक लड़का आता, बोला कैंडिडेट, बोला इंटरव्यू, बोला टीडीएस बताओ तुम। बोला सर क्या बताऊं? बोला सैलरी का कौन सा सेक्शन होता है, ठीक है। बोला रेंट किस सेक्शन में काटा जाता है, वो सेक्शन बता देता था तो वो सिलेक्टेड था, और नहीं तो मैं तो सही बोल रहा हूँ। तो बेसिकली अभी उन्होंने सेक्शन वेक्शन हटा के 393 एक सेक्शन में सबको डाल दिया, तब आप नहीं पूछ पाएंगे सेक्शन कौन सा है। बोला टेबल में किस लाइन में लिखा हुआ है। तो अभी उन्होंने बेसिकली टेबल बना दिया है। अगर आप जो रेडी रिकॉर्नर से प्रैक्टिस करते हैं जो कहीं ना कहीं, तो देखेंगे रेडी रिकॉर्नर में जितनी तरीके से वो टेबल बनाया रहता था वो उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है, और एक्ट जो है वो वैसा ही है, बाकी सब ठीक है। प्रोविजोस को बेसिकली जो है वो सेक्शन में डाल दिया गया है, एक नया सब सेक्शन बना के, बाकी सब ठीक है। लेकिन सर वो एक्सेप्शंस का क्या हुआ, एक्सप्लेनेशंस का, अरे वो भी उसी में डाल दिया है सब सेक्शन बना के, लेकिन बाकी सब ठीक है। तो बाकी सब 1961 का ही है, कुछ कहीं कहीं चेंज हो गया है। नहीं साहब ऐसी बात नहीं है। जो हमारे विद्वान रस्तोगी साहब जैसे हैं, डीवी पाती साहब हैं, काफी लोग यहाँ पे जो कोर्ट रूम में लड़ाई करते हैं, वो
मे को सेल कर देने से, कॉमा को फुल स्टॉप कर देने से और काफी चीजें चेंज हो जाती है और उस पे जो एसएससी को और जीत दिला के और लाते हैं। तो जस्ट 2-3 प्रोविजन में जस्ट ऑन एग्जाम्पलरी बेसिस, मुझे उधर से ऐसे ऐसे करा जा रहा है तो मुझे थोड़ा आगे बढ़ के जस्ट 1-2 चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आशा करता हूं आप लोग मेरे साथ उसको सहमति हो पाएंगे। हम लोग 1961 का सेक्शन 68, 69, 69A ये सारे जो प्रोविजन है जिनको हम लोग अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट इन्वेस्टमेंट ये सारी चीजें वहां पे है, उसको बेसिकली अभी 102, 103, 104 इन सब सेक्शंस में सेक्शन नंबर चेंज हो गया है, बाकी सब ठीक है, मतलब बाकी सब वही है। नहीं, यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो जो सेक्शन था वेयर एनी सम इज फाउंड टू बी क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ एसएससी मेंटेन फॉर द प्रीवियस ईयर एंड द एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन about the nature and source thereof, or the explanation offered by him is not in opinion of the assessing officer satisfactory, the sum so credited may be charged to income tax as the income of the SEC of the previous year. अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है हमारे सबमिशन से, हमारे डॉक्यूमेंट से, तो वो उसके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर था जो कि यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, shall be charged to the income tax of the। अब इसका क्या मीनिंग होगा और आने वाले समय में इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा? यस। तो वो बेसिकली सैल और रस्तोगी साहब ने बहुत सही कहा कि ऐसे जुडिशियल प्रेसिडेंट है हमारे पास। मुझे अगर सही याद पड़ता है तो पीके नूरजहां के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बेसिकली इंटरचेंजेबल है। तो मैं जो कह रहा था आपको कि ये हमें बचा के ले आएंगे कोर्ट रूम से, तो वो बात बिल्कुल सही है जो पीके नूरजहां के केस में 103 टैक्समैन 383 में सुप्रीम कोर्ट 382 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये मे और सेल जो है वो इंटरचेंजेबल है। जो फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बेसिकली यस करेक्ट वेरी गुड सर, इसीलिए हम लोग इनको बेसिकली एक्सपर्ट कहते हैं। कंटेक्स्ट इन विच इट इज बीइंग यूज्ड, तो ये मैं एक हाईलाइट करना चाहता था आपके सामने। और फिर ये प्रशांत साहब भी कह रहे थे वर्चुअल डिजिटल स्पेस का एक डेफिनेशन नया दिया गया है सेक्शन 261 क्लॉज जे में, जहां पे सोशल मीडिया अकाउंट, हम लोग जो अक्सर संजीव साहब बाहर घूमने जाते हैं और कहाँ विदेश की फोटो डाल देते हैं और अदरवाइज जो बहुत सारी चीजें जो डिजिटल स्पेस है वो अब आपका सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली द प्राइवेसी, द DPDP Act which means is there and many more things means will have to fight in the courtrooms that how means both will take their own position. But yes, this virtual digital space they have amended and that being means the social media account, the online investment account, trading bank account, remote servers and cloud servers, all those means are their purview, and the access code for them you will have to basically assist them the proper officer. And this is particularly what I understand in interpretation part of a particular chapter, so this relate to search and seizure proceedings particularly. This TDS and TCS provision, I'll take another 5 minutes only, David sir. So 193 to 196D has been means now in a single section, which is 393, and 192, which was the salary section, is still means remains in a separate section, which is 392 now. Threshold limit and all means by the last budget itself been means increased, and that been taken over in the new act, and they have given 3 tables, one for resident, one for non-resident, and one for any other person like you are resident also, non-resident also. So that thing has been taken, and basically most importantly another table which is more important and more relevant I feel, means the confusion and means what actually the taxpayer get means troubled with, that on what means items, on what situations, on what transactions TDS you don't need to deduct. They have means given a table for that also. Generally in any statute you will see, or any legislation, that what is taxable and what is means your leviable tax, that they provide. But here basically they have given a separate table also, that where in what transaction means situation you don't need to deduct
TDS. So that's the TDS simplification we are talking today. And this 394 is about TCS, rates of TDS and TCS. Again, for TCS there is a separate table. One last thing I'll just covering up about the lower TDS certificate. We all have witnessed the bill which was taken back and then presented in a format of an act later on, and another bill. So in that bill per se basically there was no provision of nil TDS certificate, which means an assessee can apply in case of TDS and TCS. But later on in presentations, and obviously the select committee has recommended, so they have included that also. So likewise earlier this 1961 Act, you can still apply for lower rate of deduction of TDS and also the nil rate of deduction of TDS and get the certificate. Obviously the validity and these things remain the same, and AO has power to cancel that even in between if he thinks so on a plausible reason. Yes, they have made it simple, and for the ease of SSC, there were several sections only for which you could have taken the TDS and lower deduction and nil rate certificate. Now they are saying for all sections till now. God knows what Madam Sitaraman will present in the coming budget. So maybe they will do some tinkering. But the 194 supposedly, which is for corporate gifts and all, 194 LA and all that, those were not there earlier for the lower deduction or nil rate of certificate. Now they have keep it on board for everyone. Like in TCS also, the sections and these things were only for subsection 1 and subsection 1F, which largely discuss about basically the TCS of the Tendu leaves and all, and 206 1F deals with basically leases of mining and all. When you were supposed to, when you are purchasing the car, which is above 10 lakh, when you are going for a foreign tour where they have also imposed TCS, when the LRS remittance and all, those were earlier not covered under TCS lower deduction or nil rate of TCS deduction. Now they have saying again they will have certain circumstances in which you can basically apply and get for TCS certificate for lower TCS deduction. Now they have not put any conditions till now in the 2025 Act, and have also on board given it for the new TCS regime in 2025. Lastly, the registered non-profit organization. This is the new buzzword, new word you must be hearing in your entire tax practice, because still we were used to heard trust, we are used to heard school, we are used to heard university, which is separate sections. Now they have taken all together and given a one word, which is registered non-profit organization, registered NPO. So now onwards we'll be dealing from 1 April 2026 for all this which we are dealing in section 11, section 12, section 13 in new sections which is 332 to 355. So these are the sections. I am not going into detail for the paucity of time, obviously. You can have obviously separate session on this, and this is all about time of thought, please. Sir, there is different views on this. We have discussed a lot that was discussed about the judicial basically precedence, what is there in favor of SSC or in favor of revenue. But I understand largely whatever we have still citing 1922 Act judgment in 1961 Act. So and by and large क्योंकि जो सेक्शन खाली चेंज हुए हैं नंबर्स और नॉट स्टैंडिंग रिस्पेक्टिव हुआ है, बाकी सब ठीक है, तो वो जो सारी चीजें वही है, तो मुझे लगता है कि जजमेंट्स भी ठीक ही है, तो वो रहने चाहिए मुझे लगता है। तो मैं जस्ट खत्म कर रहा हूँ बोल के, तो जो एनपीओ की बातें मैंने कही, तो जितना मैं कह पाया हो सकता है आपको लाइटर और हार्डर वे में समझा पाया, फिर भी कुछ बाकी रह गया हो
तो मैं कलकत्ते से हूँ और कल आया था, आज हूँ और कल तक आपके साथ हूँ। तो किसी भी बात का डिस्कशन रह गया, कुछ भी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग मिल के बैठ सकते हैं। अगर कुछ भी पूछना समझना हो तो मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और इनकम टैक्स एक्ट। तीसरी चीज का सोचना भी अपराध है बिहार में, हम लोग हैं बिहार में। थैंक यू। वहाँ ये कहा गया है कि applicability of circulars, instructions, notification, it is under 61 Act. और further उसमें कहा है shall continue to be applicable if these are not inconsistent with the provisions contained in 25 Act. तो Act में ही provide कर दिया कि पुराने circulars would be equally applicable now. Notification would be equally applicable if the language includes this paramparimic area. There is no distinction, no difference between the two. So, on the same analogy, the judgments under the old Act, 1922 के एक्ट की बहुत सारी जजमेंट 61 में फॉलो होती है, इसी तरह 61 के एक्ट की जजमेंट जो हैं, on a similar language contained in 25 Act, they would be applicable. The courts will hold that these are Kejriwal. Sir. चालू है सर, चालू वो नीचे ऑन कर दीजिए। सबसे पहले मैं गिरधर जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने 61 और 25 एक्ट के लिए जितना अच्छा इन्होंने विश्लेषण किया है, इसको एक बधाई के पात्र हैं। और खासकर को जितना अच्छा कहा है, मैं इसमें एक लास्ट ये 2025 एक्ट उसमें उन्होंने दिया था, मुझे जहां तक याद है कि लास्ट क्लॉज में, कि इनकम की जो डेफिनेशन 1961 एक्ट में है, बाकी वो सब बनी रहे। ये मैंने देखा था, तो वही मैं देख रहा हूँ कि वो है या नहीं है। शायद वो बिल में रहा होगा, अभी एक्ट में हटा दिया होगा, क्या है बिल में शायद था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब ये 1961 एक्ट, जब हमारे पास रिपील एंड शेयरिंग सब है, उसके बाद भी 1961 एक्ट की चर्चा 2025 में हो रही है कि इनकम की डेफिनेशन में बाकी जो भी डेफिनेशन दी हुई होंगी 61 में, इस सेक्शन में, वो लागू होंगी। ये मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। I'll only say that Girdhar has tried to explain some of the issues arising in 2025 Act and how these are and similarity between the two 61 and 25 Acts. Tomorrow we have Dr. Girish Ahuja to talk on again on 25 Act, and then we have yet another session by Haris Kalra also on 2025 Act. So we'll have lots and lots of issues in 25 Act which will be discussed tomorrow. But an attempt has been made to initiate a discussion and to understand the provisions of 1925 Act. I hope this will be carried forward tomorrow, and the queries, whatever queries you may have can be raised to the speakers tomorrow. Thank you very much for giving us a briefing. Session Speaker C.A. Girdhar for his deliberation. My heartfelt thanks to the sponsors, organization and all participants for their support and cooperation which made this program a success. Thank you. On the wide range of tax subjects at Professional Forum of the Institute of Chartered Accountants of India and all India Federations of Tax Practitioners, as well as the Royalty and the other reputed organizations.
He is an immediate past president of the tax practitioner firm with over 5 decades of professional legacy with advanced qualification in information system audit, risk management, forensic audit and bank audit. He is widely recognized for promoting technology and AI adoption in accounting profession. He is a master faculty of ICI AI course, has coordinated. So friends, technology has always changed the way professionals work. यहाँ पे 100 years एक एसोसिएशन को हो गए और एक एसोसिएशन को 50 साल. So हम सब जानते हैं, मैं आर्टिकलशिप जब करता था तब से देखता कि पहले हमारा होता था मैनुअल अकाउंटिंग, फिर उसमें बही खाता है, फिर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ लाइफ में हमारे डबल एंट्री. Then came ledgers. Ledgers became spreadsheets. Spreadsheets became softwares. And now AI. So let me be clear at the outset that AI is not here to replace professionals. ये धारणा हमारे मन से हम जितनी जल्द निकाल दें उतना हमें AI के साथ खेलने को मजा आएगा. AI cannot replace professionals. It is just here to reduce routine efforts so that the judgment, responsibility and accountability will always remain firm with us. So, we will become, we should become like a master chef. नीचे का काम कोई कर लेता, हम सिर्फ उस पे तड़का नमक डालते हैं. So AI will help you to think on those lines. So when AI is used with disciplined manner, it saves time, improves consistency, and frees seniors' mind from clerical overload. But if it is used carelessly, it magnifies your errors to something so big that the human can't even comprehend and imagine. So today's session right now is not about hype or fear, it is about some practical use. So with that, I invite a speaker to share real experience and his grounded insights. Over to you. Yeah. 8 in Khalil, before Shyam starts, Bharat bhai, you have been called by the national president urgently. I would request Sir Rajesh Mehta. So, good evening everyone. Bar Association. When I was first invited on to speak on this topic AI, मैंने बाकी सारे भी topics थोड़ा study किया, तो notice किया कि सब पढ़ाई लिखाई वाले हैं, सब income tax, GST related सब हैं, and मेरा एक topic सबसे अलग दिया गया है. So it was very uncommon कि भाई इस crowd में AI को blend लेकर आना. I would like to thank the organizers कि उन्होंने सोचा कि AI अब इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आज इतने बड़े नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस में इसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है. सो थैंक यू सो मच टू द ऑर्गेनाइजर्स. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे को टॉपिक दिया गया है ईजिंग वर्क विद AI. ईजिंग वर्क विद AI में सबसे पहले अपने AI के बारे में डिस्कस करते हैं. हमारे सेशन चेयरमैन भरत सर ने बहुत अच्छे से आपको समा बांध दिया है कि कैसे AI आया, क्या उसमें होता है, उसको करने से क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नहीं होंगे, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट टू स्टार्ट विथ कि AI होता है. अच्छा, यहाँ कितने लोग के मोबाइल में चैट GPT है? सबसे पहले क्वेश्चन. आई थिंक 25% होता है. जिसका नहीं है वो रिक्वेस्ट करूंगा एक बार डाउनलोड कर लीजिए. चैट GPT हो चाहे जेमिनाई हो, कुछ अपने थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी करेंगे मिड ऑफ द सेशन, तो आप लोग को ईजी रहेगा. जिसका नहीं है एक बार डाउनलोड कर लीजिए.
तो अगर मैं बात करूं कि एक एग्जांपल कन्फेशन देता हूं कि आज हम टैक्स प्रोफेशनल्स हों, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, चाहे एडवोकेट्स हैं, कुछ भी हैं, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वी आर ओवर टायर्ड विद द वर्क। हमारे पास काम इतना है कि समय नहीं मिलता है काम अच्छे से करने का या और काम लेने का। तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है हमारे पास? टेक्नोलॉजी। आज यहाँ बहुत सारे सीनियर प्रोफेशनल्स हैं। मैं खुद एक थर्ड जनरेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे दादाजी 84 एंड स्टिल एक्टिव। उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो उनसे जब डिस्कस करता हूँ तो जैसे भरत सर ने बोला कि सामने पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, फिर बही खाता हुए, फिर स्प्रेडशीट्स आए। तो अगर हम लोग इतने अडेप्टिव हैं तो हम एआई का एरा भी सस्टेन कर सकते हैं। I would term it as we are the most adaptive creatures on this planet, being a tax professional. Because रोज नए लॉ आते हैं। अभी हम लोग डिस्कस 2 घंटे से कर रहे हैं 61 एक्ट, 25 एक्ट, अलग अलग, उसके पहले 22 था, उसको कब तक कंटिन्यू करना है। तो इतनी सारी चीजें डेवलपमेंट ईयर ऑन ईयर, डे ऑन डे, जीएसटी में डे ऑन डे नए नोटिफिकेशंस आते हैं, इनकम टैक्स में ईयर ऑन ईयर आते हैं। तो हम लोग अडेप्टिव होते जा रहे हैं, बट उसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। तो इन दैट सेंस इफ वी टॉक, देन एआई का इस्तेमाल करके हमें कैसे अपने आप को और इवॉल्व करना है, अपने उस पर डिस्कस करें। तो टू स्टार्ट विथ, एक ग्राफ दिखाना चाहूंगा। ग्राफ दिख रहा है और एक रिपोर्ट निकालती है कि अगले आने वाले कुछ सालों में क्या कौन से जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी, कौन से काम की डिमांड बढ़ेगी और कौन से काम की डिमांड घटेगी। उसमें से एक ये पैराग्राफ है। ऊपर में दिया हुआ है किसकी बढ़ेगी, नीचे में दिया हुआ है किसकी घटेगी। तो ऊपर वाले जो जॉब्स हैं या जो काम जिसकी डिमांड अगले 5 साल में आने वाली है, उसमें लेफ्ट साइड में आपको नाम दिख रहे होंगे। थोड़ा बड़ा कर तो बेटर रहेगा। बेटर है सर? एक बार इसको पढ़ के देखिए, कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? जो लेफ्ट साइड में नाम दिए हुए हैं कि इन सारे जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी, कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी विल बी इन डिमांड। सिर्फ एआई की बात नहीं हो रही है, यहां टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी का स्किल है तो आप अगले 5 साल में डिमांड में, आपकी डिमांड ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब इसके नीचे वाले ग्राफ में आते हैं सर। क्या दिख रहा है सर? इसमें पढ़िए क्या पैटर्न दिख रहा है। क्या हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ लग रहा है आपको है इसमें? बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज होंगे, एडवोकेट्स होंगे। हम लोग अकाउंटिंग से लेकर, ऑडिटिंग से लेकर, लिटिगेशन से लेकर सब प्रैक्टिस करते हैं। उसमें दिख रहा है लास्ट में लीगल ऑफिशियल, लीगल सेक्रेटरी, फिर ऊपर में अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, पेरोल। कोई भी टाइप का मंडेन टास्क, कोई भी रिपीटेटिव टास्क जो हम लोग करते हैं, उसकी डिमांड धीरे 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 खत्म हो रही है। ये हमारा बचेगा ही नहीं काम करने के लिए। ठीक है, अब बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस एक और आपको दिखाता हूं। चलिए सर, ये देखिए सर, ये क्या है? एक और ग्राफ है सर। ये लास्ट मंथ एक स्टडी हुई थी यूएस में, जिसमें एक स्टडी किया गया कि दुनिया के सारे कंट्रीज में कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो एआई पे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, जो एआई अडॉप्ट कर रहे हैं अपने काम में। उनको रैंकिंग दी गई है। उस रैंकिंग में देखिए इंडिया कहां खड़ा है। More than 150 countries were examined, on which India stands at 3rd today in adopting AI and implementing AI. आज हमारी जो हमारा एक बोला जाता है ना मीडियन एज बहुत यंग पॉपुलेशन की है, तो उस केस में क्या हो रहा है, हम अडॉप्टिव बहुत ज्यादा हो गए और एआई का अडॉप्शन इतना हद तक हो गया है
कि लास्ट टू लास्ट मंथ मैं अपने बेटे के उसमें गया था, स्कूल में करियर डे में गया था, जिसमें अराउंड 20 अलग अलग प्रोफेशनल्स आए थे, करियर काउंसलिंग के लिए आए थे, क्लास 10-11 के बच्चों को बताने के लिए। मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट गया था, तो कोई लॉजिस्टिक्स से आया था, कोई इंजीनियरिंग से आया था, कोई कहीं से आया था। ऐसा एक प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर एआई नहीं घुसा है। सबसे बात हुई, सबके इंट्रोडक्शन हुए, ऐसा एक प्रोफेशन नहीं है जिसके अंदर एआई नहीं घुसा है। सो आज हम लोग भी अलूफ नहीं है, एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर हमें भी एआई को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब आई वुड से जब अर्ली 90s में कंप्यूटर आया था, उसके पहले लोग सर 234 एबीसी का कैलकुलेशन करते थे हम लोग। कौन मैनुअली करता था उसके पहले 234? अगर कोई हाथ उठा सकता है तो। मैनुअली करते थे 234 एबीसी। सर आज कितने लोग करते हैं? हाथ उठाए मैनुअली। क्यों सर? क्या चेंज हुआ? टेक्नोलॉजी। कुछ नहीं, आजकल हम लोग सॉफ्टवेयर में डालते हैं, अपने आप कंप्यूटेशन जनरेट होता है, उसमें एबीसी का कैलकुलेशन आ जाता है। तो हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया। दैट इज द ओनली चेंज दैट वी। आज भी बोला जाएगा तो कर लेंगे, ऐसा बात नहीं है नहीं कर पाएंगे, बट ईज ऑफ डूइंग वर्क हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से मिला। सेम गोज विद एआई। जो हमें टेक्नोलॉजी उस समय अडॉप्ट किया, अब हमें एआई को भी अडॉप्ट करना होगा। इट इज नॉट रिकमेंडेटरी बट इट इज मैंडेटरी। इट इज मैंडेटरी आज के डेट में। तो जैसा टॉपिक है ईजिंग वर्क। ईजिंग वर्क का मतलब क्या होता है? ईजिंग वर्क का मतलब होता है कि हमें आज लेस काम करना पड़े, कम काम करना पड़े विथ मोर बेटर एफिशिएंसी। मतलब पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने? लेस रिपीटेटिव ड्राफ्टिंग करना पड़े, मेंटल फटीग कम होना चाहिए। अभी जब 31 दिसंबर का ड्यू डेट आ रहा था, इनकम टैक्स ने बहुत सारे नोटिसेस भेजे थे, चाहे वो 80G के बारे में भेजे हों कि आप वापस रिटर्न फाइल कर दीजिए, ITR व्यू लगा दीजिए, चाहे फॉरेन बैंक अकाउंट्स, फॉरेन इनकम डिक्लेयर नहीं किया, एसेट्स डिक्लेयर नहीं किया, उसके लिए हो। तो रिपीटेटिव काम करना पड़ता है, मेंटल फटीग होती है। रीवर्क एंड डेडलाइन प्रेशर, इनकम टैक्स का प्रेशर अचानक से आ जाता है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के लिए तो समय ही नहीं मिलता है। फर्स्ट अभी क्वार्टर 4 थोड़ा हमारे लिए लूज है, नहीं तो क्वार्टर 1, 2, 3 तो कोई ना कोई डेडलाइन पड़ी ही रहती है। आज ये खत्म हो रहा है तो कल वो खत्म हो रहा है तो परसों हो। तो काम क्या बढ़ाएं, काम कैसे करें? तो इस टाइप का है। बट अगर ये सब में हम एआई लगा भी लेंगे तो भी हमारा एज अ प्रोफेशनल इनपुट रहेगा। कैसे रहेगा? उसको मैंने राइट साइड में किया। क्या? प्रोफेशनल जजमेंट तो एआई नहीं कर सकता। आज हियरिंग अटेंड करने एआई जाएगा क्या? कि फेसलेस में एआई जाएगा? नहीं जाएगा, हमें ही रहना पड़ेगा। प्रोफेशनल जजमेंट हमारे पास ही रहेगा। एथिकल कंसिडरेशन एंड कंप्लायंस, सबको पता है कि एआई हेलुसिनेट करता है, गलत जवाब देता है। तो सब एआई अगर कर लेगा तो फिर हमारी जरूरत कहाँ पड़ेगी? दैट इज वाई ह्यूमन इंपॉर्टेंस, हमारी एक्सपर्टीज, डोमेन एक्सपर्टीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लाइंट रिलेशनशिप, एआई तो क्लाइंट के साथ नहीं। आज हमें एज अ टैक्स प्रोफेशनल कोई क्लाइंट होता है तो सदियों रहता है। मतलब हमारे यहाँ जो सबसे पुराना क्लाइंट है वो 50 साल पुराना है, उसकी तीसरी पीढ़ी आ गई है, मेरी तीसरी पीढ़ी आ गई है। तो दैट इज व्हाट वी मेंटेन। वो ह्यूमन टच, ह्यूमन जो एक बैंडविड्थ है वो हमेशा रहना चाहिए। So that is why AI will assist you in execution, but AI will not take over your job. That is very very important to understand. तो हमारा एक्चुअल एफर्ट जाता कहाँ है? हम लोग का जो अगर दिनचर्या हम बोले एज अ प्रोफेशनल, सबसे पहले मैंने लिखा है ड्राफ्टिंग सिमिलर रिप्राइज। जब 133(6) आता है तो 148A आता है, तो वो 142 आता है, तो एक एक करके लाइन से नोटिस आती है और उसी को हम लोग रिपीटेटिव वे में काम करते हैं। मैनुअल चेकिंग करते हैं। पहले लाइन आइटम्स होते थे 1, 2, 5, 10, आज लाइन आइटम्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे पहले सेविंग्स बैंक अकाउंट कितने पन्ने के होते थे एक साल का? अगर हम टैक्स कैलकुलेट कर देते थे 4 पन्ना, 5 पन्ना। आज के डेट में कितना हो गया सर? 100 तो मिनिमम है। उसमें क्या होता है? 5 रुपया, 10 रुपया यूपीआई होता है और जीरोधा और अपस्टॉक के शेयर बेचे और खरीदे हुए होते हैं। 26 AS मैंने एक ऑफिसर का कर रहा था, एक पुलिस ऑफिसर का मैं काम कर रहा था, उसका 26 AS 64 पन्ने का था। आप इमेजिन करिए कितना काम बढ़ गया है हमारा।
तो हमारा मैनुअल चेकिंग का काम, और फीस कितनी बढ़ी है काम करने की, लेकिन काम आप ही को करके देना है, चाहे वो 5 पन्ना हो चाहे 500 पन्ना हो। तो मैनुअल चेकिंग का काम बढ़ गया। रिपीटिंग एक्सप्लेनेशन, अभी बजट आएगा 1 तारीख को, सारे क्लाइंट फोन करके चालू हो जाएंगे, हमारे लिए क्या हुआ, 7 लाख करना है, 12 लाख करना है, 15 लाख करना है, क्या करना है बताइए। जीएसटी का नया नोटिफिकेशन आता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता क्या आया, मेरे लिए कुछ आया क्या, मेरा रेट 22 अक्टूबर को चेंज हुआ, मेरे लिए क्या फर्क पड़ा। रिपीटेटिव काम करना, ये सब हो रहा है। रीवर्किंग ड्यू टू गैप्स, आज एक क्लाइंट के यहाँ एक स्टाफ ट्रेन करके हम लोग ने रखा है, वो बहुत अच्छे से काम संभाल रहा है, अचानक से वो काम छोड़ दिया। अब उसको गैप भरने के लिए आप ही को लगना पड़ेगा, बिकॉज दूसरा स्टाफ जब तक ट्रेन होगा वो काम सीखने के लिए, तब तक तो वो क्लाइंट या तो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा या तो हमारी सर्विस डिलीवरी खराब हो जाएगी, तो हमें लगना पड़ता है काम करने के लिए। सो दीज आर द एरियाज जहां पे हमें काम करना पड़ रहा है। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? देयर कम्स द प्रेशर, देयर कम्स व्हाई एआई मैटर्स टुडे। अब हमें डिस्कस करते हैं कि एआई क्यों हमें यूज करना है। राइजिंग कंप्लायंस प्रेशर डिस्कस कर लिया हम लोग कि रोज कंप्लायंस बढ़ रहा है। रिपीटेटिव वर्कलोड्स के बारे में बात हो गई। स्टाफ शॉर्टेज सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लिया हम लोग ने। इंक्रीज क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस, ये मैंने सीखा अपने दादाजी से। आई स्टार्टेड प्रैक्टिस अराउंड 15 years बैक। उस समय मैंने देखा कि माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू ड्राइव द डिस्कशन, जो भी अगर क्लाइंट और प्रोफेशनल के बीच में बात होती थी तो ही यूज्ड टू ड्राइव, ऐसे करिए वैसे करिए, ये करना है वो करना है। आज के डेट में टेबल्स हैव टर्न्ड, अगर आप लोग में से कुछ लोग अग्री करें कि वो आके हमको बताता है हमको ये करना है, आप बताइए कैसे करें। हमसे सजेशन नहीं मांगते, हमको ये करना है, अब आप इसका उपाय निकाल के दीजिए। करेक्ट? सो द टेबल्स हैव टर्न्ड, द क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस हैव टर्न्ड। और पहले होता था कि कॉल आया है, कोई कम्युनिकेशन करना है, अच्छा ठीक है बताते हैं, देख के बताएंगे। अभी बोलता अभी बताइए, रात को 10 बजे फोन करते हैं, सुबह 7 बजे फोन करते हैं, कभी भी फोन कर सकते हैं। सो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैव मतलब इम्बाइब्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली। और फाइनली डिजिटाइजेशन। आरओसी का फॉर्म किसने किसने भरा था आपकी? एओसी एमजीटी। कितनी डिफिकल्टीज आई सर आपकी? पहले जो फॉर्म 15 मिनट 20 मिनट में भर लिए जाते थे, अब 2-2 3-3 घंटे लगे थे एक फॉर्म भरने में। उसके बाद भी एरर अगर आ गया तो पूरी मेहनत पानी। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली सारे डिपार्टमेंट्स डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि सब बैक एंड में लिंक हो रहे हैं दूसरे से जाके। तो उसके लिए भी एआई का समझना बहुत जरूरी है, कैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। सो आज जो हमारा डिस्कशन होगा इस स्लाइड के इर्द गिर्द घूमेगा। ये क्या बोलता है? हाउ एआई ईजेस आवर फ्रेमवर्क। हम लोग एआई 4 जगह पे हम लोग को एआई हेल्प करता है ओवरऑल, कहीं पर भी लाए। पहला चीज रिपीटेशन रिमूव करना, बार बार एक ही चीज का रिप्लाई बनाना है, बार बार एक ही तरीके से रिप्लाई बनाना है, वो काम ईमेल ड्राफ्टिंग बोल लीजिए, लीगल ड्राफ्टिंग बोल लीजिए, किसी भी तरीके का काम वो करता है। सेकंड, रिड्यूसेस कॉग्निटिव लोड। आज अगर कोई नोटिस आती है जिसका मेरे को रिप्लाई बनाना है, तो हम पहले नोटिस आएगी पढ़ेंगे, रख देंगे, हाँ समय मिलेगा तब इसको बनाएंगे। फिर उस समय जब मिलता है तो सोचते हैं, सोच के 10 पॉइंट अगर सोचते हैं तो लिखने में 4 पॉइंट ही याद आता है, 6 पॉइंट दिमाग में स्किप कर जाता है, लिखते टाइम नहीं याद आता। तो बहुत सारे मतलब गैप्स हो जाते हैं। बट लेकिन अगर आप एआई का यूज करोगे तो आपको फर्स्ट ड्राफ्ट जो मिलेगा वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव, अपने आप ही वो निकाल के दे देगा, उसके बाद आप उस पर काम करो। दैट इज वेयर रिड्यूस कॉग्निटिव लोड। हमारे सोचने के लिए हमको कम टाइम देना पड़ेगा, वो डायरेक्ट आप लोग को फर्स्ट का ड्राफ्ट अच्छा दे देगा। थर्ड, इंप्रूव्ड फर्स्ट ड्राफ्ट, जैसे हम लोग डिस्कस किया। और फोर्थ, कंसिस्टेंसी। आज जो काम मैं कर रहा हूं, मेरे जितने भी स्टाफ मेरे टीम में हैं, क्या वो सेम लेवल पे काम कर सकते हैं? और अगर सपोज करिए मैंने एक जन को ट्रेन किया, हाथ पकड़ पकड़ के सिखा के 2 साल 4 साल ट्रेन किया, अचानक से वो चला गया, तो कंसिस्टेंसी कहां गई मेरी? वापस आई एम बैक टू स्क्वायर जीरो, वापस नए लड़के को पकड़ के उठाओ। तो कंसिस्टेंसी हमारे काम की डिलीवरी में नहीं रहती है, जो कि एआई के आने से आपको मिलेगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं ड्राफ्टिंग का। ट्रेडिशनल प्रोसेस क्या होता था कि पहले सोचेंगे, फिर टाइप करेंगे, रीराइट करेंगे, एडिट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे। दिस वाज द नॉर्मल प्रोसेस। अब एआई क्या करता है? एआई बोलता है आप खाली सोच लो, उसको बता दो, वो देगा आपको, आप रिव्यू करके फाइनलाइज कर दो।
तो कैसे कर सकते हैं सर? एक अपने लाइव एग्जांपल करते हैं। सपोज करिए ये एक नोटिस आया हुआ है मेरे पास, ठीक है, मैंने इसको ड्राफ्ट करके रखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। अब मेरे को इसका रिप्लाई बनाना है। राइट साइड भूल जाइए, लेफ्ट साइड बोलिए। इसका रिप्लाई बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज, कितना चीज हमें देखना पड़ेगा? बहुत सारा चीजें एनेक्स्चर में मांगा है, किया है, क्लाइंट से बात करना होगा, डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा, सब कुछ होगा। इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। अब ये अगर एआई काम करता है तो कैसे करेगा? कितने लोग ये काम कर रहे हैं अभी अपने ऑफिस में? हाथ उठाएं। आई थिंक 10%। कुछ फायदा हुआ है? प्रॉम्प्ट में प्रॉब्लम होती है आप लोग को? अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं प्रॉम्प्ट कैसे करते हैं। तो सपोज करिए मैं चैट जीपीटी खोला, अपने एक बार समझते हैं, जो लोग नहीं किए हुए हैं उन लोग के लिए मैं इसको लाइव करके दिखाता हूं। सपोज करिए चैट जीपीटी यही है, मैं चैट जीपीटी में गया, मैं इसको पकड़ा और दोनों को फाइल को अटैच किया। अटैच करके मैंने बोला मेरे को बना के दो, अटैच हो गया। Draft a polite professional reply to a tax notice asking for additional time to submit documents. ठीक है, I think हो रहा है अपलोड। अच्छा, जब तक ये हो रहा है तब तक कितने लोगों ने अपना ये चैट जीपीटी अपग्रेड किया है फ्री वाला? 20% जनता। सर अब तो फ्री है, अब उसको तो अपग्रेड कर लीजिए, अब आपको बेटर आंसर्स मिलेंगे। चलिए सर, क्या कर रहा है सर? ड्राफ्ट एनालाइज कर रहा है, एनालाइज करके उसने आंसर बनाना चालू किया। ये सब नॉर्मली करते हैं, सबको आता है करना। अब एक बात बताइए, अब मैं इसका सेकेंड प्रॉम्प्ट पकड़ता हूं। अब मैंने इसको बोला रीराइट इन अ रिस्पेक्टफुल टोन टू अवॉइड एडमिशन ऑफ एनी लाइबिलिटी एंड कीप द सोर्स ओपन फॉर फ्यूचर सबमिशन। मैंने 2 पॉइंट ऐड किए। तो आप एक चीज समझो, अगर यही चीज मुझे अपने नॉर्मल में करना पड़ता तो पहले मैं वर्ड ड्राफ्ट कर लेता, उसके बाद अगर मैं ये सेकंड मेरे दिमाग में आता नहीं अपने को चेंज करना है, तो पूरा रीड्राफ्टिंग वापस करना पड़ता। बट एआई के हेल्प से क्या हुआ, आपको खाली प्रॉम्प्ट देना पड़ा और उसने अपने आप पूरे लेटर को चेंज कर दिया। तो टाइम बचा, मेहनत बची, करेक्ट। अब सपोज करिए इसमें तीसरे प्रॉम्प्ट में चलते हैं। मेरे को इस लेटर के हिसाब से अपने क्लाइंट को बताना है कि मैं ये सबमिट कर रहा हूं, तो सर उसके लिए अलग माथा लगाना पड़ता। मैंने बोला कि एक काम करो, इस रिप्लाई को 3 पॉइंट में मेरे को दे दो कि क्लाइंट को मेरे को देना है कि मैंने क्या रिप्लाई कर रहा हूं। उसको व्हाट्सएप में मैंने ये 3 लाइन का बना के दे दिया। तो किसी भी चीज को, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ने जो लिया कि एक नोटिस का रिप्लाई बनाने के लिए एआई कितने माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स में आपका काम करके देगा। तो दिस इज ईज ऑफ वर्क। इसी को तो हम लोग ईज ऑफ वर्क बोल रहे हैं, और तो कुछ है बेसिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये हुआ, ये तो हुआ ड्राफ्टिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कि क्लाइंट लोग से किस तरीके से बात। अब मैं एक नए क्लाइंट के पास जा रहा हूं, सपोज करिए उसका टैक्स का कोई नोटिस है, सर्च वगैरह हुआ है, मेरे को उससे बात करनी है। तो मेरे को तो प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। दो आज यहाँ बहुत सीनियर है तो हम एक्सपीरियंस है तो हमें बात कर लेंगे, बट सपोज करिए मैं नया नया प्रैक्टिस चालू किया हूँ, तब मुझे जाना है और कोई या तो नया सब्जेक्ट है जिसके बारे में आइडिया नहीं है। अभी लेबर लॉ कोड आ रहा है, आएगा क्वेश्चंस, क्लाइंट लोग पूछेंगे ही हमें, तो उसके बारे में अगर जवाब देना है तो क्या करेंगे सर? पूरा कोड बैठ के पढ़ेंगे, वो तो करना ही है, उसको तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बट कोई स्पेसिफिक क्वेरी पूछ लिया किसी क्लाइंट ने कि मेरे को अभी बताओ इसका आंसर क्या है नए लेबर लॉ कोड, क्या करेंगे सर? आपको चैट जीपीटी यूज करना है, कैसे यूज करना है अपने को वो समझना है। तो सपोज करिए
मैंने एक जीएसटी का काम किया, एक जीएसटी का अपने एग्जांपल लेते हैं, लेबर लॉ का है। आई हैव अ क्लाइंट हुज जीएसटी रिटर्न्स शो फ्रीक्वेंट आईटीसी रिवर्सल्स एंड डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। व्हाट आर द पॉसिबल इश्यूज दैट आई शुड लुक इनटू? मतलब आप ये समझो कि आपके पास कोई क्वेरी अभी तक आई नहीं है, आप अपने क्लाइंट का डेटा एनालाइज कर रहे हो और उसको एज अ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर उसको बताना चाह रहे हो कि आपका ये जो बिजनेस हो रहा है इसमें इतने आईटीसी रिवर्सल हो रहे हैं, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको पकड़ा और ये क्वेरी को मैं चैट जीपीटी में डाला। तो वो क्या करेगा, बता देगा, सही बताएगा गलत बताएगा, कोई बताएगा? विल इट गिव अ राइट आंसर और रॉन्ग आंसर? अब देखिए सर, उसने बताया कि आईटीसी रिवर्सल में क्या क्या जा सकता है, इनएलिजिबल है तो क्यों होना चाहिए, रेड फ्लैग कहाँ कहाँ होता है, मिसमैच अगर है तो क्या देखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसने पूरा डिटेल मेरे को बना के यहाँ पे दिया। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड प्रॉम्प्ट लेता हूँ, रीराइट दिस एज अ रिव्यू। अब सर एक काम करिए सर, आप लोग भी ये वाला चीज टाइप करिए ना, मोबाइल निकालिए, मोबाइल निकालिए, उसमें लिखिए आई हैव अ क्लाइंट, चैट जीपीटी निकालिए, उसमें लिखिए आई हैव अ क्लाइंट हुज जीएसटी रिटर्न्स शो फ्रीक्वेंट आईटीसी रिवर्सल्स, आई हैव अ क्लाइंट, I have a client which shows whose GST returns show frequent ITC reversals and delay in payment of tax. What possible issues should I look into? एक नॉर्मल सा, या तो कोई फोटो खींच के उतना सा डाल देगा तो भी आंसर आ जाएगा। Yes sir. In your previous example, prompt number 2, you wrote for a rewrite of the opinion. It drafted well, but the subject line was understood to be as a request for adjournment. Sir, I will come to that. Prompt engineering में मैं आऊँगा. I'm just now trying to show you कि कैसे AI आपको help कर पा रहा है. Prompt. Yes, I will come to that. There are two things to it. Which AI tool to use when? That is also what I will come to. Sometimes when we put our GST query. Agreed sir. I'll come to that. सबने टाइप किया, एक बार एंटर करिए। इफ यू एंटर, आपको भी इस टाइप का कुछ मिला होगा, ठीक है। जब ये मिल जाए तो सेकंड वाला प्रॉम्प्ट ट्राई करिए। सेकंड वाला क्या था? जब आपका आंसर मिल जाए तो ये टाइप करेगा, रीराइट दिस एज अ रिव्यू चेकलिस्ट, रीराइट दिस एज अ रिव्यू चेकलिस्ट दैट आई कैन यूज बिफोर मीटिंग द क्लाइंट। और क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट की जगह आप डाल दीजिए, अलग अलग डाल दीजिए, कोई ट्रेडर डाल दीजिए, कोई मैन्युफैक्चरर डाल दीजिए, राइट एनीथिंग स्पेसिफिक, कोई आप एक चीज स्पेसिफिक डालिए, राइट आइदर अ मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर और अ सर्विस प्रोवाइडर, कुछ भी, तो आपके पास एक आ जाएगा। अब इसमें क्या बेनिफिट हुआ, आप क्लाइंट के पास जब जा रहे हो उसके पहले यू आर प्रिपेयर्ड विद अ चेकलिस्ट कि इस टॉपिक पे डिस्कस करना है तो मेरे को क्या क्या चीज उससे पूछनी है, क्या क्या चीज डिस्कस करना है, एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब सपोज करिए मैं एक बेल्ट में हूं जहां सपोज बिहार, यूपी, वहां पे हिंदी बहुत चलती है, मेरे को इसको करना है ड्राफ्ट हिंदी में, मैं क्या करूंगा, गिव मी इन हिंदी। वर्नाक्युलर लैंग्वेज भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। वर्नाक्युलर लैंग्वेज भी जनरेट कर सकते हैं। सर जब आप चैट जीपीटी में जाएंगे तो साइन अप का एक ऑप्शन आएगा,
साइन अप में जाइए, अपना जीमेल आईडी दीजिए, जीमेल आईडी से आपका फ्री में अपग्रेड हो जाएगा। वहीं पे आपको क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देना पड़ेगा एक बार के लिए, आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, लेकिन वो अपग्रेड हो जाएगा। या आई एम यूजिंग द लेटेस्ट, आई एम नॉट यूजिंग दैट फ्री वर्जन, आई एम यूजिंग दैट $20 वर्जन जो इंटरनेशनल वाला है। तो आपको क्या लगता है कि चैट जीपीटी खाली टैक्स और ऑडिट का ही बता सकता है क्या? आप लोग एक काम करो, सबके मोबाइल खुला ही हुआ है चैट जीपीटी, मोबाइल वापस नया चैट में जाइए, न्यू चैट में जाइए, गो ऑन अ न्यू चैट, क्लिक अ पिक्चर ऑफ योर पाम, अपने हथेली की एक फोटो पिक्चर क्लिक करिए, वहां पे अटैच का देखिए एक ऑप्शन है, क्लिक अ पिक्चर ऑफ योर पाम and write, give me my astrological profile, give me my astrological profile। कैमरा से फोटो खींचिए हाथ की और फोटो के साथ डाल दीजिए गिव मी माई एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफाइल। किसी का आया? कोई एग्जांपल देना चाहेगा? हैज एनीबॉडी? सर आया? पूरा डिटेल में दिया सर, जो आपकी जन्म कुंडली आती थी वो सर आ गई फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके पास हम लोग मेडिकल रिपोर्ट्स कराते हैं, उसका कोई भी आप अपलोड कर दीजिए, आप एक्सरे कराते हैं, कुछ भी अपलोड करके फोटो डाल दीजिए, आपको सब कुछ बताएगा। इसका डेटा सेट बहुत हैवी है, किसी भी दुनिया में कोई एक सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये बता नहीं सकता है, और किसी भी भाषा में बता सकता है। एनी लैंग्वेज दैट यू वांट यू कैन स्टडी। आपके पास बहुत, जैसे मैंने हिंदी का आपको दिखाया है, तो बहुत सारे जगह में हिंदी में नोटिसेस भी आते हैं, तो आप हिंदी के नोटिस अपलोड कर सकते हैं, वो आपको उसका जवाब देगा। ठीक है, अब ये सब चीज जो आपने डिस्कस की है, इसमें एक अब सर का टॉपिक लेते हैं कि क्या ये सब आंसर सही दे रहा है, गलत दे रहा है, ये कैसे डिसाइड किया जाए? कोई बता सकता है? चैट जीपीटी सही दे रहा है, गलत दे रहा है, कॉन्टेक्सचुअल दे रहा है, ये कैसे पता चलेगा? करेक्ट सर। तो अब मैं बैक टू स्क्वायर वन आता हूं। चैट जीपीटी ऐसा कोई काम, या चैट जीपीटी हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, कोई भी एआई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो हम नहीं कर सकते। वो काम वही करके दे रहा है जो हम करके दे सकते हैं, बस उसकी स्पीड फास्ट है और वो एनालाइज ज्यादा कर पा रहा है टाइम से। हमारे पास सिर्फ टाइम सेविंग एक सबसे बड़ा ऑप्शन है, मतलब हम पेशेंस खरीद रहे हैं एक तरीके से चैट जीपीटी का जब आंसर मांग रहे हैं। तो दैट इज द होल थिंग एनी चैट जीपीटी इज ऑल अबाउट। यहां कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं? 10-12 जन। आप लोग ने सीए जीपीटी यूज किया है? सीए जीपीटी का अभी तक परफेक्ट चल रहा है? कोई बता पाएगा? क्या सीए जीपीटी अपडेट हो रहा है? किसी ने नोटिस किया ये वाला बात कि सीए जीपीटी अपडेट हो रहा है कि नहीं? सीए जीपीटी में अभी भी कुछ पुराने आंसर्स आ रहे हैं, वो लेटेस्ट अपडेटेड नहीं हो रहा। तो सर कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आंसर हमें क्या होता है चैट जीपीटी में, ये सब जब हम लोग नॉर्मल चैट में बात करते हैं तो आंसर गलत आने का स्कोप रहता है। तो इस केस में अपने पास दो ऑप्शन है, एक होता है कस्टम जीपीटी और एक होता है नोटबुक एलएम। एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग को क्या करना पड़ता है। अच्छा, टू एक्सप्लेन, मतलब ये जो भी पूछा, ये जो आंसर दे रहा है, कैसे दे रहा है, इसका तरीका क्या है आंसर देने का। ये क्या करता है, हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ये www वर्ल्ड वाइड वेब में जाता है, वो जहां जहां उस इंफॉर्मेशन जो हमने पूछा है उसको कलेक्ट करता है, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करता है और आपको आंसर दे देता है। करेक्ट? बट हो सकता है वो आंसर अपडेटेड है कि नहीं, बिकॉज हम लोग टैक्स से डील कर रहे हैं, तो वो करंट दे रहा है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस केस में क्या करना होगा हम लोग को, हम लोग को एक कस्टम जीपीटी बनाना पड़ेगा। कस्टम जीपीटी कैसे बनाते हैं सर? जिसका पेड वर्जन है वही ये काम कर सकता है। जैसे आप जाइए जी, आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में देखिए, जब नीचे आएंगे ये एक्सप्लोर जीपीटीज बोल के दिख रहा है, लेफ्ट साइड में देखिए एक्सप्लोर जीपीटीज, इसमें क्लिक करिएगा। इसमें क्लिक करके यहां क्रिएट का ऑप्शन है राइट टॉप साइड में,
क्रिएट में क्लिक करेंगे जब, सर ये भी जरूरी है सर। जब आप यहां पर आएंगे तो यहां पे देखिए लेफ्ट साइड में अपलोड फाइल्स का एक ऑप्शन दिया है, ये दिख रहा है सर यहां पे, ये अपलोड फाइल्स लेफ्ट साइड में। अब क्या करना है, मान लीजिए मैं जीएसटी का कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं क्या करूंगा, जीएसटी एक्ट को यहां पे जाके अपलोड कर दूंगा, पूरा एक्ट नोटिफिकेशन रूल्स जो भी मेरे पास है मैं उसको यहां पे जाके अपलोड कर दूंगा। हाँ, इसको करके ऊपर में क्रिएट बोल के एक ऑप्शन है, राइट साइड में देखिए क्रिएट बोल के एक ऑप्शन आ रहा है, इसको क्रिएट कर दिया। अब क्या करूंगा मैं, अब मेरे को मान लीजिए जो मैंने जीएसटी से क्वेश्चन पूछा, अब मैं क्वेश्चन इसमें से जाकर पूछूंगा, तो अब ये जो आंसर देगा ना, जो फाइल्स मैंने अपलोड करी हैं सिर्फ उससे आंसर निकालेगा। ये पूरे वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की दुनिया से आंसर नहीं निकालेगा। ये सिर्फ एक, इसमें क्या हुआ, मैंने बाउंड्री बांध दी उसकी, कि मैंने उसको बोला कि तुम एआई हो, तुम मेरा जो मैंने डेटा अपलोड किया है सिर्फ उससे मेरे को आंसर निकाल दो। तो इस केस में क्या हुआ, आपके जो आंसर्स हैं वो रिफाइन हो गए और करेक्ट मिलेंगे, आपके गलत आंसर आने के चांसेस कम। तो इसलिए हमें कस्टम जीपीटी का इस्तेमाल करना चाहिए। जो सीए जीपीटी यूज कर रहा है वो यही चीज है, इट्स अ कस्टम जीपीटी और कुछ नहीं। तो एक तो ये तरीका हुआ, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, ये तो पेड वालों के लिए है, पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका दूसरा उपाय है सर नोटबुक LM, जिसका जीमेल आईडी है वो लोग के पास ये फ्री में अपने इसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, नोटबुक LM। अब जैसे इसमें मैंने क्या किया, आप देखो ऐड सोर्सेस में मैं जाता हूं, जब इसका ऐड सोर्सेस में जाता हूं तो आप नीचे देखो यहाँ पे 50 फाइल अपलोड करने का मेरे को ऑप्शन मिल रहा है। और 50 कैसी फाइल, चैट जीपीटी में सिर्फ वर्ड या पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। यहां पे आप देखिए, आपको यूट्यूब का लिंक डालना है, आपके पास कोई गूगल ड्राइव में आपका कुछ नोट्स बनाया हुआ है पर्सनल, आपके रिप्लाईज बनाए हुए हैं, वो सारे आप यहां पे अपलोड कर सकते हैं। आप अपलोड कर दीजिए तो ये क्या करेगा, ये आपका फ्री का कस्टम जीपीटी बन गया। मैंने जैसे क्या किया, 1961 का एक्ट और 2025 की एक्ट अपलोड करी, ठीक है। अब मैंने उससे जाके क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा सर, गिव मी सर्च प्रोसेस कंपैरिजन एज पर बोथ एक्ट्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और टैबुलेट फॉर्मेट, ठीक है। अभी सर्च का डिस्कशन हो रहा था प्रशांत सर से, उसी समय मैंने किया ये। उसने क्या किया, पहले स्टेप बाय स्टेप मेरे को बताया कि 1961 में क्या होता है और 2025 में क्या होता है, और उसके बाद उसने मेरे को एक टैबुलर फॉर्मेट में आंसर दे दिया कि कैसे है। तो अब क्या हुआ सर, मेरा आंसर एकदम डिफाइंड, करेक्ट, एकदम टू दी परफेक्शन मेरा आंसर मिलेगा। इसमें हेल्यूसिनेशन का कोई रोल ही नहीं। और इसको आप क्या कर सकते हो, नई नई वर्कबुक बना सकते हो, कभी इनकम टैक्स के लिए अलग बना लिया, जीएसटी के लिए अलग बना लिया, जैसे जैसा जो काम कर रहे हैं उसका अलग अलग कर लिया। एंड सबसे अच्छा चीज इसमें क्या है, ऊपर में यहाँ पे देखिए शेयर बोल के एक ऑप्शन है, तो आपके टीम मेंबर्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हो कि भाई मैंने ये बना दिया, तुम लोग भी यूज करो। तो इट इज शेयरेबल विद योर टीम, खाली अपने पे डिपेंडेंट नहीं। हमारा काम है एज अ एम्प्लॉयर, मतलब कुछ देर पहले बात हो रही थी कि हम अब काम एग्जीक्यूशन में नहीं आते हैं, हम लोग डेवलपमेंट में आते हैं। हम समझा दिए, कर दिए, बाकी टीम पूरा काम कर रही है बैठ के, तो उन लोगों को तो बताना पड़ेगा ना, उन लोगों को एक्सेस देना पड़ेगा कि आप ये इस तरीके से एआई यूज करिए। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। अब इसमें, अब सपोज करिए मेरे को समझना है कि इसमें बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, डिटेल में आऊंगा। राइट साइड में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिया हुआ है। पहले ऊपर में क्रिएट ऑडियो ओवरव्यू, ऑडियो ओवरव्यू में अगर मैं क्लिक करता हूं, ये क्या करेगा, जो लेफ्ट साइड में जितने रिसोर्सेज दिए हुए हैं उसका एक पॉडकास्ट बना देगा। आपको समझना है कि भाई 1961 और 2025 और गिरीश सर का 2 वीडियो डाल दीजिए, प्रशांत सर का एक वीडियो, कपिल गोयल सर का वीडियो, 2-5 डाल दीजिए, और सबका खिचड़ी बना के एक समराइज, सारांश मेरे को एक ऑडियो में चाहिए।
वो यहाँ ऑडियो ओवरव्यू में क्लिक करिए, आपको बना के दे देगा। वीडियो में क्लिक करेंगे, वीडियो बना के दे देगा। एक माइंड मैप बोल के चीज है, ये माइंड मैप। ये क्या करता है सर, ये देखिए, फ्लो चार्ट बना के दे देगा ये, कि सपोज करिए 61/2005 में ये था, हेड्स ऑफ इनकम में क्लिक किया तो एक नया माइंड मैप खुल गया, उसके अंदर क्या है। फिर मैं कैपिटल गेन में गया, कैपिटल गेन में खोला, उसके अंदर क्या है। फ्लो चार्ट एक के अंदर एक के अंदर एक, क्या आपको समझना है, कैसे एक के अंदर एक चीज है, आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। तो ये टूल जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, मतलब पर्पस बहुत अच्छा इसमें फुलफिल होता है। दिस इज व्हाट इज नोटबुक 11। अब सर इस टाइप से तो बहुत सारे टूल हैं। बाहर में आप लोग ने 2 स्टॉल देखे होंगे, टैक्सोनेशन एंड टैक्समैन। वो क्या करते हैं सर, वो भी तो एआई बोल के कुछ दे रहे हैं आपको। क्या है सर, सर्च इंजन है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सर बता रहे थे कि केस लॉ जो दिया, हमने नॉर्मल चैट जीपीटी में क्वेश्चन किया, केस लॉ मांगा, केस लॉ गलत आ गया, तो सर उसका सोल्यूशन क्या है। वो केस लॉ गलत क्यों आ रहा, कोई बता सकता है वो केस लॉ गलत क्यों आया। आईटीटी बैंगलोर का जजमेंट सबको पता है, नहीं? बैंगलोर आईटीएटी ने 2024 दिसंबर में एक जजमेंट पास करी थी, ये था केस लॉ। इस जजमेंट में 4 केस लॉ साइट किए गए थे। उस 4 केस लॉ को जब साइट करके ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस कर दिया गया ऑर्डर, तो जो एसएससी है और उसका जो कंसल्टेंट है उसने देखा कि भाई ये 4 क्या है, देखा जाए इसको। तो उन्होंने जब देखा तो उनको दिखा कि 4 में से 3 केस लॉ तो उनको कहीं मिले ही नहीं। रिटन ऑर्डर का मैं बात कर रहा हूं जो ओपन कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। तो वो लोग वापस ट्राइब्यूनल गए, पूछे कि भाई क्या हुआ है, प्लीज टेल मी। तो दैट पर्सन टोल्ड दैट द पर्सन हु हैज ड्राफ्टेड द ऑर्डर, व्हाट ही डिड, ही टुक द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस, पुट इट ऑन चैट जीपीटी एंड आस्क्ड चैट जीपीटी कि गिव मी फेवरेबल ऑर्डर्स फॉर दिस केस, फॉर दिस ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। उसने जो 4 केस लॉ दिया, उसने उसको कॉपी वहां से किया, ऑर्डर में पेस्ट किया एंड द ऑर्डर वाज प्रोनाउंस्ड। दिस इज व्हाट hallucination इज ऑल अबाउट। ये hallucinate हुआ कि आप एक चीज नोटिस करना, जब भी आप चैट जीपीटी को कोई एक क्वेश्चन पूछोगे, वो एक पहला लाइन क्या देता है, व्हाट अ ग्रेट क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। इस तरीके से आपको एक hallucination मोड में लेके जाता है कि आपसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। फिर आंसर देता है, आंसर देने के बाद नीचे क्या लिखता है, डू यू वांट मी टू इंप्रूव दिस, क्या मैं इसको ये कर दूं, ये ऐड कर दूं, ये डाल दूं। क्यों? जब आपने ब्रिलियंट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया तो उसमें फिर ये नीचे क्यों? वो आपका जो उसका मॉडल ट्रेन किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि आप हमेशा ये सोचो कि जो वो बोल रहा है सब सही हो, जो कि हम लोग को नहीं करना है। तो hallucinate नहीं करने देना है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी एआई मॉडल से आपको आंसर मिल रहा है उसको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। You have to cross verify whether that answer is correct or not from a genuine source. अगर कोई आंसर मिले और आपको पता नहीं है सही है कि नहीं, तो आप चैट जीपीटी में जाके लिखिए। आजकल तो खैर ऑप्शन आने लग गया है, आप लिख भी सकते हैं, गिव मी द सोर्स ऑफ दिस आंसर, क्योंकि वो आंसर तो बना नहीं रहा है, कहीं से ला के दे रहा है। तो अगर जहां से ला के दिया उसका लिंक दे देगा, आप लिंक में क्लिक करके जाइए, देखिए वो सही आंसर दे रहा है कि नहीं। अदरवाइज आजकल आप लोग ने देखा होगा कि जब वो आंसर देता है तो राइट साइड में एक सिंबल बना हुआ था, उसमें क्लिक करेंगे तो अपने आप ही आपको लेके चला जाएगा जहां से वो आंसर है। सो इस केस में क्या हुआ, इसको फिर ओपन कोर्ट में 7 जनवरी को वापस लिया गया कि भाई गलत ऑर्डर पास हो गया है, इसको रिट्रैक्ट किया जाए, एंड देन द प्रोसीडिंग्स वर रन अगेन। तो अब कमिंग बैक टू माय क्वेश्चंस, टैक्समैन, टैक्सो ऑनलाइन, ये सब क्या है?
ये सब वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको इस चीज से बचाते हैं, जो अपना कस्टम जीपीटी बना के रखे हैं, और जब वो आंसर देते हैं तो वो हल्यूसिनेशन फ्री आंसर देते हैं। कि आप मेहनत तो कर ही रहे हैं, चाहे हम चैट जीपीटी में करें, चाहे टैक्समैन में करें, चाहे टैक्सो में करें, किसी में भी करें, प्रॉम्प्ट तो हम ही को देना है, आंसर तो अपने आप आ नहीं रहा है। तो कम से कम जो आंसर आ रहा है उसको क्रॉस वेरीफाई करने का एक हेडेक तो खत्म हो मेरे पास। दैट इज वाई एक चीज समझना पड़ेगा कि ये जो सॉफ्टवेयर या अब जो नई एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसको आपको एज अ कॉस्ट नहीं समझ के एज अ इन्वेस्टमेंट समझना पड़ेगा। टैली का सब्सक्रिप्शन सब दे रहे हैं ना साल का, इन्वेस्टमेंट है ना वो, कॉस्ट तो नहीं है आप लोग के लिए। सेम गोज विद एआई, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे जेमिनी हो, चाहे क्लाउड हो, कुछ भी हो, यू नीड टू इन्वेस्ट टू गेट प्रॉपर बेनिफिट्स। आप एक केस लॉ का समझ लो ना, आपका अगर वो कोई भी एक सॉफ्टवेयर 10,000, 15,000, 20,000 अलग अलग रेट है, कोई भी एक केस लॉ से आपका तो पूरा सॉफ्टवेयर का खर्चा निकल जाएगा साल भर का, एक केस अगर आपने कर लिया उससे, तो द कॉस्ट इज वेरी मिनिमल। समझना पड़ेगा ये चीजें। सर, we are talking of sustainability. Yes, sir. And one cost is the environment, that is planning. Correct. I asked a question from GPT that what is your cost as far as the environment is concerned? What is your Use of water, what is your, sir, pardon? environmental cost. Uh-huh. So they said one question takes one glass, at least one glass of water. You invest one glass of water. So from that angle, so I stopped taking the advice from. So, sir, let me tell you one thing. Let me ask you, can you work alone for 24 hours? Can you work alone for 24 hours? No, I guess. You need to hire an assistant. Am I correct? You need to pay your assistant. It has a cost to it. That assistant consumes food. Am I correct? So if you are hiring an assistant and paying him for doing your work, isn't that a cost to the environment? सर, टेक्नोलॉजी आएगा तो टेक्नोलॉजी में डिसरप्शन आएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल टेक्नोलॉजीज आर गुड। कुछ टेक्नोलॉजी हमारे बेनिफिट के लिए है, कुछ टेक्नोलॉजी हमारे अगेंस्ट में है, बट वी आर अ सोशल ह्यूमन बीइंग एंड वी शुड डिसाइड, वी आर रैशनल ह्यूमन बीइंग्स, we should decide which is better for us and which is not. How to use it, how not to use it, it is in our hands. So the better we use it, I think, और it's not that, and सबसे important चीज ये है, आज मेरी जो मतलब मेरा जो फ्रेंड्स ग्रुप है या मेरे कलीग्स हैं, वो लोग तो पूरा घुस चुके हैं इसमें। तो अगर वो लोग यूज करके बेटर आंसर्स, बेटर ओपिनियंस, बेटर रिप्लाई दे पाएंगे क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट किसके पास जाएगा? It says that it takes at least one glass of water to answer one question. And you can. Sir, I am not an environmentalist, so I will not be able to give you. Sir, I am not an environmentalist, so I will not be able to give you perfect answer for this. I asked them, ChatGPT itself. They say. Sir, it might hallucinate. What is the guarantee it is giving you the correct answer? Why they will? Because they are saying that water is used one glass of water. Sir, we'll take it offline. अपने इसके बारे में आफ्टर द सेशन डिस्कस करते हैं। तो आज ईजिंग आप लोग बेटर करना चाह रहे हैं, ईजिंग वर्क विद एआई, तो व्हाट इज द बेनिफिट? फर्स्ट, वी अलाइन अवर एआई विद आवर एसओपीज, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि एक स्टाफ को ट्रेन किया 2 साल 4 साल, वो चला गया, तो उसका काम को वापस सिखाने में बहुत टाइम लगता है। उससे बेटर हम एक मशीन को ट्रेन कर रहे हैं जो मेरा आंसर्स और मेरी रिप्लाईज, मेरा जो काम है उसको स्टैंडर्डाइज कर देगा। That is the cost. That is the easy way out to do a work with AI. Second, built-in checklist. हम लोग ने अभी देखा कैसे हमें क्लाइंट के पास अगर जाना है, उसको जाने के पहले चेकलिस्ट मेरे को बना के दे रहा हो। तो कोई भी तरीके का काम करना है, आज हमारे टीम है, एक लिटिगेशन टीम होती है, ऑडिट अलग करती है, सब अलग। हर टीम को एक चेकलिस्ट बना के दीजिए ना कि काम क्या करना है, नहीं करना है, बेटर रहेगा काम, उससे बेटर होगा। थर्ड, अप्लाई ड्राफ्टिंग स्टैंडर्ड्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर जीएसटी एक्ट, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। इसमें एक और एक्ट आने वाला है जो थोड़ा देर पहले गिरधर भैया ने बोला था, डीपीडीपी एक्ट। एवरीबडी इज अवेयर अबाउट डीपीडीपी एक्ट?
क्या है सर? डिजिटल प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. इट हैज ऑलरेडी बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट. उसका काउंटडाउन चालू हो चुका है. उस एक्ट का मैं एक समरी खाली आपको बताना चाहूंगा. डोंट वी फ्रीली शेयर द आईडी पासवर्ड्स ऑफ आवर क्लाइंट्स ऑन व्हाट्सएप? करते हैं? अग्री? डीपीडीपी एक्ट बोलता है कि अगर किसी का कोई नुकसान होता है उस आईडी पासवर्ड शेयर करने से और वो प्रूफ कर देता है कि आपके चक्कर में वो नुकसान हुआ है, आपके आईडी पासवर्ड देने से वो नुकसान हुआ है, you are liable to a penalty of up to rupees 250 crores. The Digital Privacy and Data Protection Act is very clear. आज जो मैंने एक नोटिस अपलोड किया, आप लोग को दिखाया, उस नोटिस में आपने एक चीज देखा था, वो क्रॉप किया हुआ था. हम लोग क्या करते हैं, नोटिस आया मेल पे क्लाइंट से, पूरा नोटिस एज इट इज पीडीएफ उठा के डाल दिया और बोला इसका रिप्लाई बनाओ. यही करते हैं सर? ये नहीं कर रहे. वी कैनॉट प्ले विद द प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा ऑफ आवर क्लाइंट्स. बिकॉज वो चैट जीपीटी क्या करेगा, उस चैट जीपीटी के पास वो डेटा चला गया, अब वो उसको यूज करेगा, उससे अपना मॉडल को ट्रेन करेगा और डेफिनेटली वो अपना फायदा के लिए आपका डेटा यूज कर रहा है. सर आप और मेरे लिए इनक्रिप्टेड है, गवर्नमेंट के लिए इनक्रिप्टेड नहीं है. मैडम ने शायद लास्ट बजट में एक बात बोला था, अगर आपने नोटिस किया हो, कि वो किसी भी डेटा से कुछ, मतलब आपका कोई भी डिजिटल एसेट है उसमें से वो कुछ भी निकाल सकते हैं. वो मेरे और आपके लिए इनक्रिप्टेड है, दुनिया के लिए इनक्रिप्टेड नहीं है सर. तो उनका काम है निकालना, और अगर हम उस चीज में भागीदार होते हैं तो अवर लॉस. तो ये डीपीडीपी एक्ट आने के बाद ना, ये जो फ्रीली हम लोग पासवर्ड शेयर करना, कोई भी डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप में दे देना, ये सब बंद हो जाएगा. क्योंकि जो तलवार लटकेगी वो हम प्रोफेशनल्स के ऊपर लटकेगी कि आपने डेटा निकाल के दिया, अगर कोई प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें आज से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये सब तरीके का टूल यूज करने के लिए वो क्रॉप करके यूज करना, नाम हटा देना, पैन नंबर हटा देना. रिडक्शन इज द वर्ड इन एआई, REDACTION, रिडक्शन. हमें हर डॉक्यूमेंट को रिडैक्ट करना पड़ेगा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन हटानी पड़ेगी, उसके बाद उसको अपलोड करना. दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ यूजिंग एआई. तो बेनिफिट क्या होगा, इंपैक्ट क्या होगा इससे? 40 एक स्टडी के हिसाब से है, इट माइट बी डिफरेंट फॉर केस टू केस बेसिस, बट ऑन एन एवरेज 40% बेटर आउटपुट, 50% लेस रिव्यू एंड 65% फ्यू एरर्स. अगर सर एक मतलब 50% लेस रिव्यू अगर हो गया तो भाई मेरा एक आदमी दो आदमी का काम करने लग जाएगा. कॉस्ट वहां पे कितना कम हो जाएगा सोचिए. सो अब आते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में. अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे होता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग चैट जीपीटी तो यूज कर रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी अच्छे से कैसे यूज करें. तो कोई भी चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट, सपोज करिए हम लोग 133.6 किसी भी चीज का रिप्लाई बना रहे हैं, तो 6 चीज होने चाहिए एक प्रॉम्प्ट में. क्या 6 चीज होनी चाहिए? पहला चीज होना चाहिए टास्क, ड्राफ्ट लेटर, ड्राफ्ट नोटिस रिप्लाई, ड्राफ्ट ये टास्क देना उसको. सेकंड कॉन्टेक्स्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर जीएसटी एक्ट, एज पर ये कुछ भी. थर्ड एग्जाम्पल, अगर आपका सपोज करिए आपने ऑलरेडी 133 का रिप्लाई, 148 का रिप्लाई बना के रखा है, उसका एग्जाम्पल लगा दीजिए कि तुमको ऐसा मेरे को बना के देना है. फोर्थ पर्सोना, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ लॉयर, एज अ टैक्स प्रोफेशनल, क्या किस तरीके से आपको चाहिए. फिफ्थ फॉर्मेट, बुलेट पॉइंट में करके चाहिए, पैराग्राफ में चाहिए, टैब्यूलर फॉर्मेट में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए वो देना है. एंड लास्ट टोन, प्रोफेशनल मैनर, हार्ड मैनर, सॉफ्ट मैनर, किस हिसाब से चाहिए. अगर ये 6 चीज आपके प्रॉम्प्ट में है, देन यू विल गेट अ ऑप्टिमम आंसर फ्रॉम एनी एआई मॉडल. क्योंकि आज के डेट में सिर्फ एआई रिलेटेड हम लोग कोई भी टूल यूज करते हैं तो उसमें वो लिखना पड़ता है मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए आपको ये 6 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा.
If these 6 things are in your prompt, you will get the best answer. So, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा, मैंने बोला मेक अ टैक्स कैलकुलेटर फॉर एग्जाम्पल, तो क्या समझेगा, चैट जीपीटी क्या समझेगा, कौन सा टैक्स कैलकुलेटर, इंडिया का बनाना है, यूएस का बनाना है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल का बनाना है, कॉर्पोरेट का बनाना है. इट्स अ बैड प्रॉम्प्ट. बट गुड प्रॉम्प्ट क्या हुआ, क्रिएट एन इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर ये अंडर द न्यू टैक्स रेजिम. आप उसको एक डिफाइन कर रहे हो कि हाँ मेरे को ये चीज चाहिए. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ गुड प्रॉम्प्ट एंड अ बैड प्रॉम्प्ट. जो आपको आंसर्स दे रहा है वो फर्क है. सो दिस इज द वे यू शुड cater to it. वेरी इंपॉर्टेंट, आज जो हम लोग ने हम लोग ने लास्ट पार्ट डिस्कस किया. पहला चीज एआई ड्राफ्ट्स, प्रोफेशनल्स साइन. ड्राफ्टिंग आप कर रहे हो जो एआई से हुआ है, बट नीचे सिग्नेचर किसका जा रहा है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली लाइज अपॉन द प्रोफेशनल एंड नॉट विथ एआई. तो कोई भी चीज अगर आप उससे यूज ले रहे हैं, ड्राफ्ट करा रहे हैं, तो मेक श्योर यू क्रॉस चेक इट, क्रॉस वेरीफाई, बिकॉज आपके ऊपर ही जो आएगा आएगा. नो ब्लाइंड कॉपी पेस्ट. इसका एग्जांपल आपको देता हूं, ब्लाइंड कॉपी पेस्ट करने का एग्जांपल. ये एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था, देखिए सर, पढ़ पा रहे हैं. जो चैट जीपीटी लास्ट में डिस्क्लेमर देता है, तो जिस जर्नलिस्ट ने ये आर्टिकल छापा उसने चैट जीपीटी से लिखवाया होगा और एज इट इज वो न्यूज़पेपर में छप गया. सर कॉमन प्रैक्टिस है. सो वी हैव टू बी वेरी श्योर, कॉपी पेस्ट वाली चीज बहुत केयरफुली करना है. एंड लास्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड जजमेंट. तो डीपीडीपी एक्ट के बारे में मैंने बताया व्हाई कॉन्फिडेंशियलिटी इज इंपॉर्टेंट एंड जजमेंट, बिकॉज जो भी आप कर रहे हो वो ये नहीं बोला जाएगा कि एआई ने किया, वो यही बोला जाएगा आपने किया वो. तो यू हैव टू बी जजमेंटल कि जो भी आउटपुट हम कहीं पर भी डाल रहे हैं, रिप्लाई कहीं डाल रहे हैं, तो इट शुड बी ट्रू एंड फेयर. तो अब कुछ प्रैक्टिकल और आपको दिखा देता हूं. ये मैंने दिखा दिया. अच्छा, टैक्सोनेशन की तरह और 2 वेबसाइट्स हैं. फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है ये lexlegis.ai. ये भी आपको काफी अच्छा रिप्लाईज, ड्राफ्ट्स अकॉर्डिंग टू एक्ट्स अलग अलग करके देता है. आप इसको साइन अप कर सकते हो. लेक्सलेजिस के बाद एक है विदुर, VIDUR. इसमें बेसिकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अप्रॉक्स 8 to 10,000 लॉ, टैक्स, अलग अलग बुक्स अपलोड करी है. तो जो आंसर्स ये देता है वो बुक्स का रेफरेंस के साथ आंसर देता है कि इस बुक में, इस पैरा में, इस पेज में ये आंसर दिया हुआ. तो अपने क्योंकि टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग को काफी रेफरेंसेस चाहिए होता है. तो दीज आर द 2-3 वेबसाइट्स यू कैन रेफर टू. ठीक है, एक और टूल आपको दिखाता हूं. जो ये टूल मैंने मेरे दादाजी के लिए खोजा था. उनका क्या प्रॉब्लम होता था कि ही इज 84 नाउ, लिखने में नॉट वेरी कंफर्टेबल, सिस्टम स्मूथ में नॉट कंफर्टेबल. तो वो जब रिप्लाई बनाते हैं तो बोले कि कुछ मेरे को वो स्टेनो वाला जो होता था ना पहले, वो रिकॉर्ड जो करते थे, वॉइस रिकॉर्डर जैसा, कुछ मेरे को वैसा दो कि बस मैं बोलूं और वो छाप दे. तो मैंने ये टूल खोजा जिसका नाम है ऑडियो पेन. इसमें क्या कर सकते हैं, सपोज मैं माइक डिक्टाफोन सॉर्ट ऑफ, करेक्ट. तो मैं इस पर क्लिक किया, मैं बोला हाय, माय नेम इज श्याम अग्रवाल, आई एम टेकिंग अ सेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स एट बिहार, पटना. द सेशन कंप्राइजेस ऑफ प्रोफेशनल्स लाइक एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड टैक्स प्रैक्टिशनर्स. अब देखिए सर, इसमें आउटपुट लैंग्वेज मेरे से पूछ रहा है. सपोज मैं इसमें हिंदी डाल देता हूं. इसका सबसे अच्छा चीज क्या है, ये जो मैं बोला वर्ड टू वर्ड नहीं लिखेगा,
ये मैं जो बोला उसको पहले रिकॉर्ड करेगा, इंटरप्रेट करेगा एंड अपने भाषा में रिफाइन करके लिखता है। क्या है सर? कुछ गलत है, हाल्यूसिनेट किया है, रिकॉर्ड नहीं हुआ और माइट भी इंटरनेट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ सर। मोबाइल हॉटस्पॉट से कर रहा हूं तो माइट भी एन इशू, बट अ वेरी गुड टूल कि आप इसको यूज कर सकते हो। 2 मिनट के लिए फ्री है, 2 मिनट से ऊपर अगर करना है तो पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ऑडियो पेन बोल के है, नहीं सर एक आया, ये आज का है, वो पुराने हैं, उसमें डेट दिया हुआ है, वो पुराने, ये आज का कैन बी डन। तो ऑडियो पेन है, सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए मेरे को लगा एक बहुत अच्छा टूल है जो आप, सबसे अच्छा चीज है मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाता है, ऐप स्टोर प्ले स्टोर में जाके इसको मोबाइल में भी डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। तो पॉकेट फ्रेंडली है, कभी भी डिक्टाफोन की तरह आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सर आप लोग को कुछ टूल्स बनाना सिखा देता हूं। जैसे सपोज करिए, एक एग्जांपल लेते हैं। हम लोग ने चैट जीपीटी बनाना सीख लिया। अब एक टूल जो मेरे को लगता है, जो मैं अपने ऑफिस में बहुत रेगुलरली यूज करता हूं, वो है HTML टूल्स। अब HTML टूल्स में क्या होता है सर, सपोज करिए मेरे पास कोई रेंट एग्रीमेंट बनाने आया। रेगुलरली मेरे पास रेंट एग्रीमेंट बनाने का बहुत काम आता है। तो मैं क्या करूंगा, उसमें वेरिएबल्स जो रहते हैं, लैंडलॉर्ड का नाम, टेनेंट का नाम अलग अलग होता है, बाकी चीजें कांस्टेंट रहती हैं, डेट, टेनेंट और कुछ 2-5 फैक्टर्स वेरिएबल, बाकी सारा चीज कांस्टेंट। अब मेरे ऑफिस में जब होता था तो क्या करते थे भाई, किसी स्टाफ को दिया, पुराना एक फाइल उठा के दिया, तुम भाई उसको बना ले, तुम कॉपी करके दे दे, नया एग्रीमेंट बन गया। वो गया, नोटरी वोटरी होके सब आ गया, मेरे हाथ में आया, मैं 2 पेज पलटा, तीसरा पन्ना में देख रहा हूं, जो पुराना जिसका मैं कॉपी दिया था फाइल, उसका नाम वहां वो चेंज ही नहीं किया, या कुछ और एरर रह गया, कुछ भी रह सकता है, कॉमन ह्यूमन एरर हो सकता है। तो मैं बोला कि इसका कोई इलाज निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप के रिपीटेटिव काम बहुत सारे आते हैं। तो मैं क्या किया, मैं गया एक चैट जीपीटी की तरह, ये एक वेबसाइट है क्लॉड, CLAUDE, लेफ्ट साइड में देखिए, लेफ्ट साइड में लिखा है क्लॉड। इसमें क्या किया मैं बोला कि काम करो, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट का कॉपी नहीं था, तो मैंने बोला पहले मेरे को एक ड्राफ्ट में रेंट एग्रीमेंट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसने क्या किया, मेरे को एक एग्रीमेंट बना के दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने फिर उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, ये वाला प्रॉम्प्ट, create a HTML tool which will have variable parameters like name of the landlord, tenant, duration, etc. as input. Rest others should remain the same. और मैं एक क्लिक करूं, नया एग्रीमेंट जनरेट हो जाए। तो सर उसने क्या किया, उसने एक मेरे को टूल बना के दे दिया which is रेंट एग्रीमेंट जनरेटर। अब ये आपको दिख रहा है रेंट एग्रीमेंट जनरेटर, इसमें लैंडलॉर्ड डिटेल्स इसने मांगा, टेनेंट डिटेल्स मांग रहा, प्रॉपर्टी डिटेल्स मांगा, अग्रीमेंट डिटेल्स मांगा, नीचे जनरेट एग्रीमेंट में क्लिक करिए, आपका वो जो स्टार्टिंग में जो कंडीशंस फुलफिल थे उसके हिसाब से वो आपको अग्रीमेंट जनरेट करके दे देगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे रिप्लाईज रेगुलरली बनाना है, अगर कुछ करना है तो अपने इस टाइप के टूल्स बना सकते हैं। ये और कहां यूज आता है, और आपको बताऊं, सर कितने लोग जीएसटी का काम करते हैं यहाँ पे? सभी करते हैं। रिकंसिलिएशन का काम करना पड़ता है हमें, 2A3 भी रिकंसिलिएशन। सबसे या तो कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होगा, अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहा है तो कैसे करते हैं? एक्सेल का फाइल का डेटा क्लाइंट का टैली से आता है, या वो टाइप करके देता है, 2B डाउनलोड करते हैं,
और मैच करते हैं लाइन टू लाइन आइटम, करेक्ट? मैं बोला कि मेरे को ये हेडेक नहीं करना, मैं एक ऐसा टूल बनाऊंगा जिसमें मैं दोनों डेटा अपलोड करूंगा और मेरे को रिकंसाइल करके अपने आप दे देगा। तो मैंने ये टूल बनाया जीएसटी रिकंसिलिएशन। इसमें मेरे को क्या करना है, ये लेफ्ट, ये बुक्स का दिया हुआ है, बीच में आप देखिए मैं यहाँ गया, बुक्स को सेलेक्ट किया, बुक्स को यहां सेलेक्ट किया, 2B जो डाउनलोड किया उसको सेलेक्ट किया, और यहां देखिए रिकंसाइल बोल के एक बटन है, रिकंसाइल में क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक किया ये एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई। इसको मैं खोलता हूं, देखिए सर, समरी दे दिया कि 2 ठो मैच हुआ है, 3 ठो मिसमैच हुआ है। बुक्स का डेटा नीचे शीट में दिया जो मैंने अपलोड किया, 2B का डेटा दिया जो मैंने अपलोड किया, एक शीट दिया जिसमें मैच आइटम्स है, कौन कौन सा एंट्री मैच किया, कौन कौन सा एंट्री मैच नहीं किया, नॉट फाउंड इन 2B, नॉट फाउंड इन बुक्स। अब ये 5 लाइन आइटम हो, 500 लाइन आइटम हो, 5 लाख लाइन आइटम हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको अपलोड करना है, पैरामीटर सेट किया हुआ है, आपका रिकंसिलिएशन विद इन मैटर ऑफ सेकेंड्स। अब ये क्यों बनाना पड़ा मुझे? सब लोग तो टैली में डेटा नहीं देता है, कोई टैली में देता है, कोई बिजी में देता है, कोई अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देता है, अलग अलग देता है, तो उसके लिए मेरे को ये बनाना। तो आप अपने हिसाब से, अपने काम करने के हिसाब से आप ऐसा अलग अलग टूल्स बना सकते हैं अपने ऑफिस के लिए, एंड बहुत इजी है। चैट जीपीटी को जाके बोलना है कि मेरा, अब इसका प्रॉम्प्ट मैं आपको दिखाऊं, तो इसका प्रॉम्प्ट बहुत हैवी है, इस टूल को बनाने का प्रॉम्प्ट ये है, ये इस टूल को बनाने का प्रॉम्प्ट है, इतना बड़ा प्रॉम्प्ट मैंने दिया तब जाके ये टूल बना। तो मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताना पड़ेगा, मेरे को ये ऐसे, आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, तब जाके इस तरीके का टूल बनता है। अब रेंट एग्रीमेंट वगैरह सब दिखा दिया। अब यहां कितने लोग ने एआई एजेंट के बारे में सुना? हाउ मेनी ऑफ अस हैव हर्ड अबाउट एआई एजेंट? ये एकदम नेक्स्ट लेवल चीज है। मतलब हम लोग जो चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, ये था 5 साल पहले की चीज, 4 साल पहले की चीज। अब हम लोग एरा में आ गए हैं एआई एजेंट का। एआई एजेंट मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए हम जीएसटी का अभी जो हम एग्जांपल दिया, इसमें मेरे को पहले बुक्स टैली से डाउनलोड करना पड़ा, फिर 2B में जाके डाउनलोड करना हुआ, फिर अपलोड किया, तब जाके आया। अगर मैं एजेंट बना देता हूं तो मेरे को कुछ नहीं करना होगा, वहां मैं एजेंट में क्लिक करूंगा, क्लिक भी नहीं करना होगा, मैं डिफाइन कर दूंगा कि हर 16 तारीख को आपको ये काम करना है। वो अपने आप, उसको सारा एक्सेस दिया हुआ है, जीएसटी का एक्सेस, टैली का एक्सेस सब दिया हुआ है, वो अपने आप रिकंसाइल करके आपके डेस्कटॉप में तो फाइल बना के छोड़ देगा, ये आपका रिकंसिलिएशन। एजेंट उसको बोलते हैं। उसका एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। मेरे को प्रॉब्लम थी, एक क्लाइंट से बात हुई कि भाई मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल का बहुत प्रॉब्लम है कि क्लाइंट्स लोग से वापस बार बार तगादा नहीं मारा जाता है, तो कोई एक एजेंट बना के दे सकते हैं क्या? ठीक है, बात करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें आप नोटिस करो, ये N8N बोल के एक प्लेटफॉर्म है, उस पर मैंने ये एजेंट बनाया है। ये खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं दुनिया कहां जा रही है, क्या कर रहे हैं हम लोग। ये एजेंट में मैंने क्या किया, पहले शेड्यूल ट्रिगर। शेड्यूल ट्रिगर मतलब मैंने उसको बोला कि एवरी फ्राइडे 7 PM, हर शुक्रवार शाम को 7 बजे सबसे पहले तुम जाओ मेरे टैली में। उसको मैंने कनेक्ट कर दिया अपने टैली ओडीबीसी से। मेरे टैली में जाओ, वहां पे जाके सन्ड्री डेटर्स निकालो, सन्ड्री डेटर्स निकाल लिया, उसके बाद तुम अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करो, और जो डेटर्स निकला, सपोज करिए डेटर्स में मिला श्याम अग्रवाल 10,000 रुपया पेंडिंग, तुम जाओ मेरे गूगल शीट में, एक मैंने मास्टर गूगल शीट बना के रखना है क्लाइंट्स का, जिसमें उसका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी सब दिया हुआ है। तुम वहां पे जाओ, वहां से खोजो श्याम अग्रवाल कहाँ है और उसका ईमेल आईडी निकालो। उस ईमेल आईडी निकाल के
एक जीमेल का एक्सेस दे दिया मैंने कि ये मेरा ईमेल आईडी है, जीमेल में जाओ, उसका पीडीएफ अटैच करो लेजर का और उसको भेजो। हर शुक्रवार 7 बजे वो अपने आप ये काम करेगा, मेरे को कुछ नहीं करना। इसका एक डेमो आपको दिखा रहा हूं, ये एक वीडियो रिकॉर्ड करके रखा है, ये देखिए। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो में मैंने क्लिक किया, घूम रहा है वो, अब वो आगे बढ़ेगा। आप देखिएगा वो बीच बीच में जैसे यूट्यूब में बफरिंग होता है वैसे दिखेगा, दिख रहा है? वहां गया, मेन शीट में गया, ये मेन शीट थी मेरी जहां पे एड्रेस वगैरह दिया हुआ था। फिर अब आगे वर्कफ्लो सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब मैं जाऊंगा अपना जीमेल में, जीमेल में जाऊंगा, आप ये देखो, आप ये देखो एक ईमेल आ गया, जेंटल रिमाइंडर आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करो, मैंने एक गलती करके रखा है जो आप लोग को मुझे बताना है। क्या गलती है? मेल पढ़िए, एक गलती है। क्या गलती है बताइए? करेक्ट सर, मैंने डिफाइन नहीं किया था कि खाली पॉजिटिव, वो होता नहीं है, पैसा एडवांस आके रखा हुआ है, नेगेटिव में खड़ा हुआ है एडिटर्स में, वो उसको भी भेज दिया। तो उसको मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या पैरामीटर्स है, वो अपने आप कर देगा। इस तरीके के एजेंट्स बनने लगे। अब मैं क्या जीएसटी डाउनलोड करना है, ये करना है, वो करना है, सब हो सकता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी डन। दिस इज द लेवल ऑफ एआई ऑटोमेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो प्रेजेंटेशन खत्म करते हैं सर। तो स्टार्टिंग में हम लोग ने हमको बताया गया कुछ मिथ्स, आप लोग को क्लियर करना चाहता हूं। एआई विल रिप्लेस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स प्रोफेशनल्स, एडवोकेट्स, ऐसा कुछ नहीं है। जो यूज करेगा एआई को वो आगे रहेगा, बाकी लोग पीछे रहेंगे, बस इतना सा फर्क है। दैट इज द ओनली मेन डिफरेंस। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस क्या आज एनफ है प्रैक्टिस करने के लिए? ये एक तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इज नॉट एनफ इन टुडेज सिनेरियो। हमें नया नया एवेन्यूज खोजते रहना पड़ेगा। क्या होगा? मेरे को क्या कोडिंग सीखना पड़ेगा? आई नीड टू बी अ टेक जीनियस टू अंडरस्टैंड दिस एआई टेक्नोलॉजी? नहीं सर, you don't need to be a tech expert. You just need to understand what is your requirement. आपको अगर, क्योंकि आर्टिकल भी हमारे यहाँ आता है या इंटर्न हमारे यहाँ आता है, तो उसको भी तो ट्रेनिंग हम ही लोग दे रहे हैं, उसको भी तो रॉ से सिखा के उसको प्रोफेशनल बना रहे हैं। जब उसको बना सकते हैं तो हम एआई को क्यों नहीं सिखा सकते? हमको तो खाली उससे बात करनी है। तो यू डोंट नीड टू बी अ टेक एक्सपर्ट, यू जस्ट नीड टू नो कैसे करना है। और एक लास्ट, आई लर्न एआई लेटर। तो आज कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो ठीक है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर आप सोचिए, अभी हम लोग चैट जीपीटी डिस्कस कर रहे हैं जो 4 साल पहले आया है, अब हम लोग एआई एजेंट में आ गए हैं। तो जब तक आप एआई एजेंट तक पहुंचेंगे तब तक कोई और टेक्नोलॉजी आ जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आज क्यों ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं। 2 महीना पहले मैं इसी स्टेज में सीए इंस्टीट्यूट के लिए एक सेशन लिया था, उसमें ये मैंने स्लाइड दिखाई थी, ज्ञानोदय द अवेकनिंग। आज आपको मतलब टुडे इज द टाइम यू अवेकन योर पोटेंशियल एंड टुमारो यू विल बिल्ड योर एम्पायर। अगर हम एआई को यूज करते हैं तो वी कैन गो टू दैट एक्सटेंट। इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी अच्छा, जिन लोग को एआई में इंटरेस्ट है वो इसका एक फोटो ले सकते हैं। इसमें मैंने कुछ टूल्स का नाम दिया है जो आप यूज कर सकते हो, और एक क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर सकते हो, जो कि आपको 2 एआई के बेस्ड किताब देगी जिसमें अलग अलग टूल्स के बारे में दिया हुआ है। One second.
जस्ट कंप्लीट आगे बढ़े। एक छोटा सा होमवर्क आप लोग के लिए, अगर आप लोग करना चाहो तो सबसे पहले इतना सारा टूल दिखाया, कोई एक टूल आप डाउनलोड करिए, उस टूल में जाके कोई एक काम करिए। अच्छा, तीसरा वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। रात को कितने लोग सोने के पहले वो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक रील्स सब देखते हैं? कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं देखता है। उसमें कंटेंट क्या कंज्यूम करते हैं लोग? एंटरटेनमेंट। आप लोग ने एक चीज नोटिस किया होगा, अगर एक गाने का कोई रील आ रहा है तो उसका अगला 10 रील उसी गाने के ऊपर आता है, करेक्ट? वैसे ही अगर आप कोई एआई का कंटेंट अगर देखते हो, या टैक्स का कंटेंट, या किसी भी चीज का कंटेंट देखोगे तो उसी के रील्स आएंगे। तो रात को 1 घंटा जब आप वो कर रहे हो तो 15-20 मिनट थोड़ा सा एआई कंटेंट भी देख लेंगे तो आप लोग को नई चीज सीखने मिलेगी। वो नया वीडियो देखिए, एक्सप्लोर करिए क्या होता है, कुछ अगल बगल वाले लोगों से बात करिए जो एआई पे इंटरेस्टेड है जैसे कि मैं, और लास्ट में उसको शेयर करिए क्या आपने किया। अगर इफ यू डू दिस काइंड ऑफ होमवर्क, इट्स अ स्मॉल होमवर्क, इफ यू कैन डू इट, आई एम श्योर एआई का जर्नी आपका नेक्स्ट लेवल आप अपने ले जा सकते हो, जितना जल्दी आप ये काम करोगे। आगे बढ़े। So human intelligence and artificial intelligence, it's a partnership, it's not a replacement. तो मेरा एक बहुत बेसिक मंत्र है, ये, I want you all to repeat this. I am not replaceable, I am upgradable. एक बार, I am not replaceable, I am upgradable. अगर आप ये मंत्र फॉलो करते हो तो AI आए, BI आए, CI आए, DI आए, कोई भी आए, आप लोग को, अपने लोग को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। Thank you so much for a patient hearing. I hope I could add a little value to your AI knowledge and open to questions if there is any. चैट जीपीटी पर, AI के यूज पर जो हमें इतना शानदार समझाया, हमारा सेशन आधे घंटे से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, पर हमारी रोकने की भी इच्छा नहीं थी और कोई भी ऑडियंस खुद भी उठना नहीं चाहते थे, बट समय की अपनी मर्यादा है तो आधा घंटा एक्स्ट्रा का बात भी श्याम जी ने अपने आप देख लिया कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। सो उन्होंने आपको सारी समरी लास्ट में बता दी कि आप उसका यूज कीजिए। नेक्स्ट टाइम अगेन वी वांट कि श्याम अग्रवाल जी को सुनने का फिर ऐसे कोई अच्छा मौका हमें मिले। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। Now I may request delegates who has come all the way from different parts of the country to this prestigious national tax conference at Patna, a city rich of intellectual from the past and present, and which has a historical significance. The theme of the conference was honoring the past, enriching the present, shaping the future, which actually reflects the today's knowledgeable and eminent speaker, C.A. Shyam Agarwal sir, who has come all the way from Kolkata. And even we have gained so much of knowledge with the session chairman, C.A. Bharat Sachdev sir, who has left us due to some unavoidable circumstances, who has come all the way from Thane, Maharashtra. So I am very grateful and thankful to the guest speaker and session chairman for this precious time to share their views and eminent knowledge on artificial intelligence, which has been adopted, which actually eases our repetitive task, boosting productivity and improving decision making through data analysis, freeing complexity, human complexity and difficulty. And even we have gained knowledge and information of the chat GPT and custom GPT, which has been shared by the eminent speaker, which we can upload it, the acts or the rules or any specified part for which we need any information related with the chat GPT. And we are very grateful to the CA Rajesh Mehta sir also, who has come all the way from Indore. And I am actually very thankful. I want to thank off the dais also to my father,
who is also a tax lawyer, who is also sitting here, who is also a practicing lawyer for last 45 years, and my senior Ajay Rastogi sir, who is in Patna High Court, a senior advocate, and my other seniors with whom I have practiced, the last president, AFTP president, Premlata Bansal ma'am. I have worked with her as well in Delhi High Court, Supreme Court, and even with Supreme Court Judge, former Justice S.J. Mukhopadhyay sir. So we are very thankful for everyone who has come all the way from different parts of the country. Thank you so much and have a great day. Thank you. We look forward to welcome back tomorrow for day 2 with Giri Sahuja sir at 10 a.m. which promise equally stimulating and thought-provoking session. Before thank you once again for your cooperation and enthusiasm. Wishing you a pleasant evening. Thank you. आप लोकल होस्ट सर्वर को स्टोर आप क्लाइंट में मिल गया